ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली कौन कसे 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 ए ब्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड दो जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तार चिपक गई छाती से ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो तन सस्ते न से तन तार है ढीली कौन कसे 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 ए ब्रेन की बत्तियां बुझा के बस ट्रिप लैंड दो सस्ते न से तन सस्ते न से ए लूप में ट्यून बजा के थोड़ा हिट हो Check 1 2 3 बीट पे चरण उठाओ वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओ हाथों का यो बनाओ बस ट्रिप करते ओम जिमाम जिमाम बिंग बिंग बो माइक म्यूट है यार What is up boys and girls? Guess who's back? My brothers, guess who's back? We are back in the game. Let's go. Hello hello hello. सभी लोगों को वेलकम है, सभी लोगों को वड़क्कम मेरा, सभी लोगों को नमस्कार है मेरा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, सब कुछ हो चुका है क्या? यहाँ जा चुकी है यूट्यूब की डिटेल्स, यस सर जा चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, माई नी माई मुंडेर पे तेरे बोल रहा है कागा, जोगन हो गई तेरी सखी और मन जोगी संग लागा। हेलो हेलो लव यू ब्रो, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू, लव यू लव यू लव यू। सभी को बहुत सारा प्यार, सभी को जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। आई एम सॉरी वी आर अ लिटिल लेट टू द पार्टी, बट क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा बिजी काम में फंस गया था। एज यू कैन सी, मैं झूठ थोड़ा ना बोलता हूँ तुम लोगों से। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं झूठ बोलूँगा, मैं ये कहूँगा, मैं वो कहूँगा। नहीं भाई, मैं झूठ उठ तो मैंने पहली बात तो बोलना बहुत पहले छोड़ दिया है, ठीक है? तो मैं झूठ तो बोलता नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं कि हम लोग आलू के पराठे खा रहे थे इसकी वजह से लेट हो गए। आप स्टेडियम की खेले थे जब मैं आया था भाई। फिर मैंने सोचा थोड़ा कि अगर हमारी टीम हो एक और हम लोग क्रेजी परफॉर्मेंस कर दे तो क्या पता हमें भी, यू नेवर नो, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के किसी चैंपियनशिप में जाने का मौका मिल जाए। यू नेवर नो। ओके, बट आपके तो 0 किल थे उसमें। पैर देख के थोड़ा लग ना जाए तेरे को ना। ये क्या नहीं, अब मेरे 0 किल से मेरे 0 किल से भाई। तुम्हारे फ्लीट भाई तो कैरी दे रहे थे यार बॉटम से। मैं दे रहा था यार बॉटम से कैरी। तू बेटे बहुत तेज मत बन तू अपने आप को, तुझे बता रहा हूँ मैं। ओए भाई मेरी मदद कर, डू PLMZZZ।
भाई मेरी मदद कर दो PLM ZZZ। आखात भाई कैसे मदद कर दूं भाई, पैसा तो तुम्हारे पास कमी नहीं है देखो। सुरेश भाई प्यामरे दोम्स के लिए थैंक यू सो मच। व्हाट इज द प्राइस पूल ब्रो? $1 मिलियन। 8 करोड़ रुपए का प्राइस पूल है इसका, और इसमें अभी इंडियन टीम्स अभी भी बनी हुई है, तुम समझ रहे हो? आज हम लोगों को फिर भी इंडियन टीम्स के मैचेस देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो? हाँ मिलेंगे। लेट्स गो। और आज भी हम लोग देंगे 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल पॉइंट्स। स्ट्रीम में कभी भी मिल सकते हैं वो पॉइंट्स आपको किसी भी समय, समझ रहे हो? भाई लुमिनोसिटी तो अलग ही चीज हुई है भाई, वो देखो फिर से 41-17 कल भी डोमिनेट करी थी, आज भी करेगी ये। लुमिनोसिटी अभी तक का एक भी गेम नहीं जीती, हारी है, किसी से नहीं हारी अभी तक लुमिनोसिटी। भाई बिल्कुल मेरे पर गई है। This is your first look at Money Hill as far as takeoff is concerned. If you are new to Call of Duty Mobile and for Hardpoint, अबे बाबा तू पिटने विटने वाले काम क्यों कर रहा होगा? तू मुझे इतना बता दे बस यार, तू मार तो नहीं खाना चाह रहा तू? just to be able to really sway the decision as far as who's going to get the upper hand. Happy birthday bhai, thank you, happy birthday to you. Luminosity already controlling inside the hill. Kajendra from the outside looking in, looking for the break. Yeah, looking really solid. War Machine out. That will suffocate the front doors. Kagendra need to make a decision. जो ये आलू के पराठे हो रहे हैं ना, try to hit this from the top side of the map, or will you take your खाले दे losses and थोड़ा try खा to ले just get in and find a way to get यार। scrappy? भाई shout out to Sadiq, Rizwan and Nafish. Where Reef was able to put the Sparrow into play, but Shout out to doesn't quite you find as much value as सदीक, he was रिजवान और breakdown नफीस this भाई, setup. shout out to Follow you। up off the respawn, decent. Kagendra at least a chance to go ये neutral. दोबारा मेरा पूरा 50-50 पराठा hard उठाया point, ना but तो Bam मतलब swings पेन things हुआ है। back. Purifier in hand will once again push Kagendra back, and LG ये continues to वही है get जिसको more time. कंधे में बैठा तो कान में मुतता है वाला ना। Relatively inexpensive if you are Luminosity. You're already in possession of the hardpoint ban here with the Purifiers, able to at least keep them at the doors, and then swaps right back to the SMG, being able to find himself a last few kills. Could potentially be the last. By the way, जिसको भी नहीं पता है, आज हम लोग दो चीजें करने वाले हैं। एक हम लोग ये तो देख ही रहे हम लोग कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, बीच बीच में ब्रेक्स में हम लोग पोकेमॉन कार्ड अनबॉक्स करने वाले हैं। आज मैं एक सेट खोलूंगा अपना, उसको हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे क्या हम लोग कुछ क्रेजी पुल्स निकाल पाएंगे। Let's go. Across the board for both sides. Annihilator out for Fran. Trying to find a way to बहुत use this मजा to आने block वाला off the rotation, and as he feels like he can't find anything, he tries to take it indoors. That doesn't work out whatsoever. Washi on the other side, now punishing the spawns of Kagendra, getting just outside the hill. And Double one से भी shot ज़्यादा just भाई। about everything. Eventually shut down. Kagendra with numbers, looking for their next break attempt. Tech waiting patiently. Sparrow just trying to be used to block out the front door, and yep, he does shut down Clove with one of those bolts. And then again, LG finding ways to keep themselves in the hard point. Much Big cleaner fan holds D. today so far. Absolutely. And it's Love you, kinda Vijay bhai, in love you. reference to what we saw all the way back in Seattle. This is the Luminosity gaming on hardpoint that we come to expect. You pull out an operator, we'll answer हाँ कुछ पैसों की जरूरत है। सुअर का चेहरा, 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 सुअर का चेहरा। 30 points or so in between 3 and 4 2 Money Hills. Luminosity walk away with the भाई lion's कुछ share of पैसों all की that जरूरत तो time. मुझे भी 130 to है। 49 in the second set. Just It's saying। not even just that the operator usage was so clean from LG. They've also been able to stretch a couple of players into some score streaks. In particular, these Pred missiles here, Envy and Tech. आज किस पे पैसे लगा रहे हो फ्लीट भाई? Both आज will किस be पे पैसे लगा रहे हो? ओए मैं यहाँ गैम्बलिंग करने नहीं बैठा हुआ है भाई, ये ऐसे बोल रहे जैसे नॉर्मल हो रखा है। मैं पैसे लगा रहा हूँ लोगों पे। गाइस लाइव है। आई एम विश AAGAOJALDII फायर फायर BOHOT फन हो रहा है। Missile at that. I mean, should you go up against any trophies whatsoever, you want to be able to at least use one, get rid of the trophy, the next one for some kills, but most importantly for some money. अब मेरे को भी लग रहा है कि Luminosity जीत जाएगी। Another predator missile going to be invested that time. भाई shout out to भाई, MD तुम लोग मेरा Sadiq नाम- and MD Rizwan. It opens up a ये lot भाई of अपना space at चश्मा least on उतारिए। the hard point, and let's be frank here, get दिखाइए, all the आगे time they दिखाइए। could possibly find. Yeah, very much so. And I will भैंस say, की in पूछ terms यार, ये of क्या the करके आता है भाई? leads, अरे getting some good time on scrappy hard points that you expect to be 50-50 दिखाइए, इधर is को आइए थोड़ा। exactly what you're looking for. So for Kagendra, still the deficit not भाई, तू as नशा वशा करता है क्या सही में? healthy as you would like. बाबा तू पहले तबीयत दिखा भी, तेरी आंखें पीली भी हो रही है बाबा। तेरे को सही लग रहा है? फील गुड हो रहा है बिल्कुल। भैंस की पूछ भाई, ऐसा लगता है इसे खून करके आया होगा किसी का भी अभी ये। आंखों में हमेशा खून होता है। यार मैं तो नहीं करती यार।
and that will be enough to earn them. अबे तुम क्या बीच में क्या घी डालने का काम करती हो क्या है Spawns होने on two वाला है, different लगा। sides, players on two different sides for LG. P2 has now opened भाई तू up. सही में भाई मैं तेरे को बता रहा हूँ तेरे को तू देख दिखा ले एक बार Seen through countless times on takeoff. वरना मैं तेरी मम्मी से बात करके तेरे को नशा मुक्ति केंद्र में डालता हूँ Kendra to make the move with these close spawns. Numbers now subsiding in their favor, but still not fully broken in. Have to find a way to break this here if you're Kendra. अच्छा ये भी चल रहा है ना Up with the triple. Fennec up top, just trying to go back and forth between the windows and the staircase, but Fake surprises him. Trade is in. And there's a little bit of a space here between the next hit for LG, so Kendra will be good to get another 10 to 15 seconds at least for free. ये आवाज आई तेरे On the को way though, and LG just kind of overwhelmed with the scaffolding. Claw out to support this for Vague, and that is just so darn simple. To be fair, there wasn't much at the ready for Kendra, but Vague really punishes them here, and that will be enough for them to get above 170. It's what you get for having such a steep leader's advantage going in towards the second set for Luminosity. You can make the first हो move. गया because 200 every ही होना single है उनके operator 250 that you pulled चाहिए out उनको needs to be opened back up from Kendra in kind to be able to find significant time plus some extra. 177 to 85. Into P3 we go, and wouldn't you know it, LG again have the rotation anew. Yeah, and you have to pull things out right now if you're Kendra. You cannot allow LG to get early time here, otherwise the game will be too far out of reach. Reef, another double. He's been good to kind of open the door here for his squad. War Machine out for Zed. LG just trying to hold on to the जिसने door. गैम्बल किया उसका सुअर का चेहरा है बहुत बढ़िया जिसने गैम्बल किया उसका सुअर का चेहरा बहुत बढ़िया ये सुपर टैग का सही इस्तेमाल भाई ये वन शॉट कटता है भाई बट सोचना यार भाई फिर मजाक नहीं भी ये मोबाइल सुपर में तेरे चैट को रिफंड हो रहा किसी पे सुअर एम का करके चेहरा टैग सुअर का दबाना चेहरा सुअर का चेहरा वो भी सुअर इतने का फास्ट चेहरा पेस्ड है उसमें जिसमें वो दौड़ रहे कर रहे हो well out of reach. Doesn't exactly help things out with Clove pulls Bhai, out. shout out to MD Sadiq and MD Rizwan. I mean, these are the answers that you want to be able to see from Kendra. The same thing that Luminosity has been Shout finding out to the you. answers for the operators being pulled in the first set. It's nowhere to be Please found wish for me luck Kendra. भाई Luminosity कल मेरा is threatening to MPTSC put का Kendra in the पेपर 100 है point club as the rotation भूतदार towards you is लग about रहा to be है upon us. भूत 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 उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और इशारा उंगली से बाएं और इशारा उंगली से दाहिनी और क्या है इशारा ये उंगली क्या है से ये बाएं और इशारा लव यू भाई लव यू टू ब्रो To start things off here on day one. War Machine from NV. जी यार keeping everybody उंगली at से bay. दाहिनी और इशारा उंगली से बाईनी और Way through these इशारा very narrow choke points, and somehow, some way, they've actually worked their way in. Hold on a second. भाई Bam was उनको able to 100% at least pull देंगे, out a हाँ, purifier. पहुंच जाएंगे, 100% Kendra have fully broken in. They shut down the operators at 100 ड्रामा points now. सुगर LG maybe बट भाई puts जो the कल foot को off the gas just a वेलोसिटी touch ना here, होगा है kind ना of throwing some operators फैटेलिटी in, में saying, all we need is 11 points. We'll find it by using these. मेरे को जर्मन हो गया तो Maybe a जीत little गए bit भाई like discipline वो keeps पूरी Kendra निकाल alive a देते, little while longer. वो वाला नहीं LG still जिसमें उनको finding a खाली chance to get कितने a couple of extra seconds 12 या before कुछ this पॉइंट last चाहिए थे hard खाली point और उसके ends. बाद They उनके grind up 50 to बढ़ 5 गए and थे yellow, तो मैं Washi देख trying to नहीं hit a flank early over towards the top Damn. P2. भाई मजाक नहीं ब्रो ये सुपर चैट रिफंड हो रही And that extra little bit of space Just saying, should allow LG a really good look over the top of this first hard point to give themselves their last 8 points. Fran, a double, keeps things mixy. Hard point opens. Nobody in for now, but LG closer will find a way to sneak themselves right on in. And all this is get down, find a couple in the last seconds, and it should just be a matter of... हाय इमेजिनर कैसे हो ब्रो win map 1-1. Oh yeah, absolutely. I mean, just 2 seconds required. You're forced just to try to contest. Bake pulls out the claw. Just sets a final handful of nails in the coffin. 250 to 120. A statement to be made. To say the अभी least, 2 गेम और है Luminosity बस Gaming, your number हाँ, 1 वो तो team है, globally. मतलब Majority of अगर them ये winning इनर वो world ये भी championships जीत just जाएगा last कभी। year. What we got to see देखो पिलो in लेके आया पूरा Seattle भाई। comes as बिहार कब आ रहे हो no भैया surprise here in the बस opening शॉपिंग map करने आ रहा of हूँ day number 2 here at Worlds 23. Yeah, I think that there's something to be said again. Best of 3 समझ seasons रहे हो? away, so we didn't necessarily get a chance to kind of बिहार से feel क्या out what शॉपिंग everyone's होगी preferences were going to be after about 2 months of hiatus. लिट्टी Yeah, चोखा going लेने from आऊंगा season 4 into this World और यहाँ Championships बेचूंगा because we just didn't get a chance to दुगने see में what they would have picked तिगुने for में a second hard point or a second search and destroy. So I think there's really some mental gymnastics that are happening in the veto selection for both of these 2 teams, no matter who they are, as we go through the entirety of the day, kind of trying to feel out, hey, this is what they liked from a couple of months ago, but this is what they played yesterday. And Takeoff was a map that I wasn't 100% sure if LG were going to feel confident enough to pick it, just knowing that Apocalypse was going to be off the table. Would they maybe try to find their way into an arsenal if they had the chance to? But it does look like their Takeoff Shout out to Tanish Jindal भाई Tanish Jindal shout out to you bro As far as TJ also TJ very in the strong. house We got to see them तो तेरे realistically नाल hold चली themselves कैसीन back to कोई where ना they previously were.
Again, as अबे we talked about, यार that matchup नहीं versus यार Tribe and ये an हर्षी के anomaly, to काम say the देख लो least, एक in बार यार Seattle. Shout out to Tanush Jindal मजा bhai. आएगा। अब ये जब रीड होगा तब ये मेरा दिमाग खाएगा ये। मत करा करो रे भाई ये क्या ऑन करके सुपर चैट वाला मैंने बहुत दिक्कत गलती कर दी भाई ये। team that they're actually going up against. You have to feel confident versus Kagendra and a जल्दी आए, handful of जल्दी other आए, मजा Eastern आएगा। teams. ना because, आए भाई। Quite frankly, there's only one other North American team in this top भाई 8. 120 और 250 है डबल से भी ज्यादा समझ रहे हैं right मतलब। there in the slates. Envy लुमिनोसिटी अलग ही लेवल पे खेल रही है ये वाला। लास्ट टाइम रनर अप थे इस बार लेके जाएंगे लग रहा है। Washi also dropping a 30 bomb. The only one that didn't drop 30 was लग रहा है यार देखना लग क्या रहा है दिख रहा है मतलब। across the entirety of the map. Wonderfully done. दो गेम और बचे हैं ना एक तो प्लांट वाला एक अभी स्पाइक प्लांट है, स्पाइक प्लांट और एक वो वाला वो Spawn वाला। हाँ स्पॉन खत्म होते हैं इसमें reflecting हाँ। back on some of the points we just make here is LG's a tough team to बढ़िया हुआ play हर्षी का for सुपर because चैट ही they'll नहीं पढ़ play रहा anything kind of like you were alluding towards there क्यों at the moment. It पता just नहीं comes नहीं down पढ़ रहा है to तेरे तक आवाज ही नहीं आई। how do you सही हुआ figure out बढ़िया हुआ यार। ऐसे गंदे गंदे सुपर चैट मत पढ़ना है आई यार। लव यू best opportunity to बिल्कुल square मत up पढ़ना against them. गलती से भी And I मत will पढ़ना say, ठीक like, है again, just to आई kind of लव यू button go थैंक यू super एआई deep diving in towards the एआई map को सभी लोग selection. नमस्कार I करेंगे do like that Kagendra looked at this and said, we थैंक don't यू wanna एआई play ये Luminosity's 40 रुपए का गलत इस्तेमाल कर रहे हो ना तुम लोग। So they have to get rid of it. And when you make a choice like that, where you're vetoing out not your नहीं worst, यार but another नहीं team's यार best, you find yourself in this position सुअ of सुअ like, सुअ boy, सुअ I hope सुअ they सुअ don't pick X, सुअ Y, or सुअ Z. उंगली से Take ऊपर off. की I ओर don't think इशारा it's the most उंगली से comfortable नीचे match की ओर इशारा उंगली से ऊपर की ओर इशारा उंगली से नीचे की ओर इशारा उंगली से ऊपर की ओर इशारा उंगली से नीचे की ओर इशारा उंगली से ऊपर की ओर इशारा उंगली से नीचे की ओर इशारा उंगली से ऊपर की ओर इशारा उंगली से बाएं ओर इशारा उंगली से बाएं ओर इशारा उंगली से दाहिनी ओर इशारा उंगली से दाहिनी ओर इशारा उंगली से बाएं ओर इशारा उंगली से दाहिनी ओर इशारा उंगली से बाएं ओर इशारा उंगली से दाहिनी ओर इशारा। इतना मारूंगा ना तुम लोगों की सेकंड में इतना इतना मारूंगा ना मैं बता भी नहीं सकता कितना भाई। जब ये वाला मैच खत्म होगा ना फिर हम पोकेमोन कार्ड अनबॉक्स करेंगे। वैसे अपने पास 3 वन पीस के ही बचे ये एंड में करेंगे ठीक है ये रात को करेंगे एकदम जब थोड़े से लोग देख रहे होते हैं तब उनको दिखाएंगे इसके अंदर क्या निकला क्योंकि मोस्ट ऑफली इनके अंदर हिट्स लास्ट के अंदर हमेशा हिट्स होता है। अगर तुम्हें कुछ क्रेजी नहीं मिला और हमें अभी तक का पूरे बॉक्स में कुछ भी नेक्स्ट लेवल क्रेजी नहीं मिला बस वो एक पैक मैंने बचा के रखा हुआ कि ऐसा ना हो उसके अंदर हो नहीं इसके अंदर होंगे ऐसा ना हो जाए बस। That was the selection, I believe, of Kagendra, because Tunisia would be map 5, and that's like Luminosity's playground. So this is like you Papa, mentioned, Papa, if they GTR were to कब find a लोगे? way to वाह। get to game 5, which is what it feels like would have to happen if Kagendra were to have a chance here. भाई तुम This मतलब is समझ भाई रहे हो पर ना बोलो I don't see the मुर्शिदाबाद reverse मैच sweeping सादिक LG, को so, शाउट You आउट। know what? I'm not even going to just flirt with it. This is a must-win map for You me. have to, absolutely. Yesterday, they went 1-1 as far as Express is concerned. अंशु वर्स की वीडियो क्रेजी थी। I could feel what the subscriber must be feeling around you. Plus the ending took my heart. Do more of this भैया। थैंक यू सो मच जुहेब भाई लव यू यार थैंक यू सो मच मेरे दोस्त लव यू यार। Well, there was भाई an बहुत isolated जरूरी moment बात right there. खाने Lots of थी दान fireworks से over सुनना towards B मेढक up का to get चेहरा L leads मेढक us का down to a चेहरा 1v1. मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा सुअर का चेहरा सुअर का चेहरा सुअर का चेहरा। बाय गॉड कह रहा हूँ तू इमेजिनर मिल जा मुझे तू कहीं तू पिटेगा बेटे अब तेरे को बता दो बहुत जरूरी बात थी ना तेरी रुक जा towards ticket. And I beg your pardon. I said इसका इतना AR. गलत He's got इस्तेमाल shotgun कर रहे हैं ना ये AR in लोग। his hand. So this is all about can he just continue to finesse between these staircases. This has to be a B plan. It just has to be. It's like the duality Call between RG. two weapons right now. Exactly. Sniper versus a KRM. That's why he's gonna go and Call? try to keep things as close range as possible. Washi has so इसमें much बोल कुछ AS. काम धंधा नहीं है तेरे It's को worked out in his favor. Gotta be right behind him. देख रहा था तेरे को कुछ काम धंधा नहीं है क्या रे हाँ बैठ के स्ट्रीम देख मजे कर नहीं कॉल करनी ओह व्हाट क्या शॉट मारा उसने। भाई लिमिनोसिटी में तेरे को बता रहा हूँ अलग ही लेवल पे है भाई ये बंदे गलत खेल रहे हैं बहुत 2 था इसने ऑप्शन निकाल What ली। range you're at, sir? A potato Shit, gun bro. probably is भाई gonna hurt. भाई ये लिमिनोसिटी वाले बंदे भैया इस today पूरे is his birthday. Can I get some wishes दिल fire? हैप्पी बर्थडे टू यू टीजे Yeah, there you go. Like a जिंदाल जी हैप्पी बर्थडे ब्रो over towards the offense again. Trying to maneuver their way over towards A. कौन So जीतेगा much space that has to be cleared, and you can see how Luminosity are playing this defensively. तू साले तू और तेरा ड्रेमन ट्राइब जीतेगी ट्राइब कल चल रहा इनका कौन Luminosity. अरे Day. Day 1 से सब कर रहे हैं। अरे भाई क्या खींचा भाई
gave Zen a conversation. लेकिन फिर भी लुमिनोसिटी अभी भी मैन एडवांटेज में तो है, देख 4v3 है, 4v3 निकाल सकते हैं। ये क्या स्नाइपर है यार ये स्किन ले। That's enough here for the numbers. ओ भाई ये तगड़ी लग रही है यार, Dominate every stretch of this map positioning wise. क्या गेम है भाई, इसमें क्या है ये? मतलब मतलब लेजेंड भाई, मेरे को देख के पता लगा था कि मैं इसमें कितना पैसा फूक देता इस गेम में। लेजेंड भाई सब अच्छा लग रहा है यार, बस वो मुक्के वाला अच्छा नहीं लगा मेरे को, गोल्डन वाले अच्छे लग रहे थे मुक्के, और वो क्रिस्टल वाले मुक्के वो दो ले भाई जीत गए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये डोमिनेशन होने वाला है, सिंस उन्होंने 250 120 से वो वाला जीत लिया जो कैप्चर वाला था, और अब ये भी जीत रहे हैं, ये स्पाइक प्लांट भी, ये वाले मुक्के भी अच्छे हैं। लेकिन इसमें भी वो था ना, एक गोल्ड था, एक डायमंड था, और एक वो था क्रिस्टल टाइप रेड कलर का, हाँ वो बहुत कूल था। अरे बाबा ये तो गुस्से में आ गए भाई, क्लीन स्वीप कर दिया 4v2 आते ही क्लीन स्वीप। अच्छा उन लोगों ने इस बार बी पे होल्ड कर लिया था, बी पे बहुत लोग बैठे हुए थे देख। भैया पोकेमॉन कब अनबॉक्स करोगे? जब ये गेम खत्म होगा ये वाला, तब करेंगे अनबॉक्स पोकेमॉन कार्ड। Tech trying to see what he can find over towards monitors, of which he doesn't see too much, but does open the door for Washi. तो देख यार इस बंदे की Tries to spam and गलत बंदा है बहुत। will now अरे भाई absolutely wreck उसने things देखा ना over तूने, उसने towards the स्नाइप monitors. मारी Get the उसको last two स्नाइप kills and Kukendra gets on the board. A little bit of a pace differential this time. इसमें It ये goes सही over है, towards स्नाइप speed to your बंद point. They हाँ, also hit ये the चीज़ सही middle है। alley ये as हार्ड है well. यार, And through मारना that तो very long होना भी haul, चाहिए there मेरे was साथ। nobody from Luminosity realistically trying to stop them. भाई जय Breaking श्री shots राम, coming जय through श्री from कृष्णा, Kukendra राधे finally राधे, get राधे themselves राधे on the दोस्त, board. राधे राधे। Keep up this pace, y'all, because it is exactly what you need. This time they're going to be taking their virtues over towards a 5-player strong. Now Washi doesn't see this on the crossover to the train tracks. He's going to be late to get here to support. It's all down to ले what भाई, Bane can find and फिर खींच find दिया himself. लुमिनोसिटी को। He's not able to do too much besides a पहला little किल तो bit of मिल chip गया damage, इनको। which Kukendra will shrug off, and now भाई कमबैक हो रहा है क्या? a numbers advantage 5v4. The question here is they're not going to know what's behind भाई ये them with नहीं all 5 members perfect है। stacking over towards गन्ने ने बचा दिया भाई ले। Drew off the top of the bomb site. Doesn't connect for anything, and now Ban may be thinking, wait, are they actually here? Because that nade doesn't hit anything at all. ओके अटैकर हैं। भाई वो डंडे ने बचा लिया उस बंदे Player को, number 3 for सर पे नेट गिरा दिया था Kukendra. उसके। Turn around because Plan the कर दिया flank हमने। is still open. You have numbers. Bomb being planted at A though, forcing Luminosity to come to them. Washi is hitting that flank. क्या ये hold कर Scope in पाएंगे? hand. LG starting to take a couple of small steps forward. Washi gets one on the backside. Again, it's still being honestly holed Love by you feeling to Kukendra. BHAI from to see Assam. if he can find ओ good लव यू contact. टू ब्रो, मेरा बहुत मन है आसाम आने का। मेरा यार नॉर्थ ईस्ट में घूमने का बहुत ज्यादा मन है यार, बहुत ज्यादा। Play through lockers, not gonna बहुत work out खूबसूरत either. भैया मेंबर्स ओनली स्ट्रीम कब करो जी 1v3 दिल तो पीला मुश्किल दिल है हरा यार। दिल नीला दिल बैंगनी दिल रिबन के साथ उसका दिल। HP का बना। अरे Nowhere to go, no way to get down to the bomb, and दिया two भाई। very clean rounds. Kukendra, love it. भाई भाई जय तो श्री comeback हो कृष्ण गया। राधे राधे I mean, दिल। the way that Luminosity are committed, at least for that defense, getting first blood the way that they did, they're forced to almost play in those longer lines of sight, but the coverage is there, especially from lockers, where the bomb is going to be planted from. It's on that side, so you can't necessarily stop it from happening. Great 2-round response coming through from Kukendra, now taking their virtues back. अरे वाह, क्या किस्मत चल रही है भाई ये इनकी। इतना परफेक्ट कैसे डाल ले? वही, और वो थोड़े से कुछ ना कुछ हो जा रहा है, अभी दीवार से टकरा गया उन्हें। अरे भाई आ गया, हाँ देख 4v1 इस बार कर दिया इनने। इस बार लुमिनोसिटी आ गया वापस। ओ वन टैप। अंशु वर्स की वीडियो बहुत औसम थी चीचा वामू गैंग टी शर्ट क्रेजी है हमारी कब मिलेगी? भाई मैं ट्राई कर रहा हूँ, इमेजिनर भाई बताओ तुम्हें अच्छी लगी ना? अगर तुम्हें अच्छी लगी तो वो वामू गैंग वाली टी शर्ट मैं प्रिंट करवाता हूँ बेचने के लिए। बताना अगर तुम लोग खरीदना चाहोगे तो मैं ट्राई करूंगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दूं, बट मेरे को पता होना चाहिए कि कम से कम 1000 खरीद रहे हैं ऐसे करके ना। जैसे 1000 लोग खरीद रहे हैं तो मैं कंपनी को जाके बोल सकता हूँ कि 1000 बना दो मेरे, ऐसे ना। This is a crucial round. I know it's early, but Love this is you, a crucial Flim, round भैया for मामा Kukendra. शांत है। Their opening playbook didn't work out so well. Their adaptations. भैया मेंबर जल्दी स्ट्रीम कब करोगे ब्रो? आई ट्राई माय बेस्ट जल्दी से जल्दी करने की। कल को पहले हम लोग ये कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल गेट वेल देखेंगे, सून भैया उसके बाद वी
want more epic LILYVILLE streams and epic fleet SMP videos soon. Lammu दिल thumbs up का चिन्ह मुकुट grin. लव यू टीजे भाई. मैं हो तो रहा हूँ धीरे धीरे सही. होपफुली जल्दी ठीक हो जाऊँ, फिर तुम्हें और क्रेजी कंटेंट दूंगा. बाय द वे कल को लिलीविल की एक वीडियो आएगी, एंड जिसने भी आज की यार वो नहीं देखी और शेयर नहीं करी ना अपने दोस्तों के साथ. भाई मजाक से हटके मैं मानता हूँ कि ये जो 2400 लोग देख रहे हैं, ये मेरे दिल से लव यू वाले हैं. और लाइक वाला बटन दबा दो जिसने भी नहीं करा है, ठीक है. 10,000 लाइक का गोल लगाने अभी, तो 10,000 लाइक करवा दो. और जो ये लोग देख रहे हैं मैं मानता हूँ दिल से बंदे मेरे. तो भाई तुम लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो आज वाली वीडियो कर देना. सुपर चैट शाउट आउट सुजल अंशुवर्स वाली वीडियो भाई 1v1. ओए नहीं यार, पूरे टाइम उसने एंगल होल्ड करा था, जैसे हटा वैसे आ के गया. बारे में बताया. अब की ऑडियंस ने जाके इस वीडियो पे इतना प्यार दे दिया जितना मैं सोच नहीं सकता. हरे हैट्स ऑफ ब्रो, थैंक यू सो मच दिल, यू मेड माय डे. थैंक यू, लव यू आर्ट ट्रिक तेजस भाई, लव यू यार. चुंबन का चिन्ह, 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 चुंबन का चिन्ह. और ज्यादा जान ही रही तो इसी से काम चला लो. लामू एंड सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में ले लो, उससे ज्यादा तुम ही बोल लेता. सर को बताता हूँ मैं, तू रुक जा बेटे. वाईजी गेमिंग रुक जा. ओए ले बेटे, करेगा तेरे बस ने स्नाइप मार दिया उसके मुंह पे और करेगा नाइफ. भाई इनको कोई याद दिलाओ, ये कंपटीशन खेल रहे प्रॉपर. हलवे में मत करो इसको. भाई उनमें जी भाई 3-4 हो गया. उस बंदे ने कितना स्टूपिड खेला. उसने एक एचपी कर दिया था ना, मर जाता वो मुक्के मारने जा रहा, उसने स्नाइप कर दिया भयंकर उसको नोज को. भाई कोई इनको याद दिलाओ, 8 करोड़ का गेम हो रहा है ये. वो देख गेम पर लट गया भाई, 3-4 हो गया उधर. अब अगर ये वाला लोग ये लोग जीत जाते तो स्पॉन वाला होगा, अगर नहीं जीते तो स्पॉन वाला नहीं होगा. This time, Kagendra's defense a little bit more heavy-handed over towards B, not just on the bottom side, but there's a couple of players that can put this through staircase. अगर ये ADS नहीं करता तो हो जाता है ये. बहुत क्लोज में ADS हो गया ना. B6 over the backside, a terminal doesn't connect and can't get भाई away. याला Quick राउंड round for LG gets us back to 4 piece. मेरे ख्याल से फिर उनका ना मे बी वो था ना कैप्चर वाला, वो कैप्चर वाले में मे बी उनका हाथ उतना सेट ना हो उस मैप में. Info and they're able to isolate a handful of players for Kagendra, at least looking for trades. Pretty damn clean, if you ask me. Now the offense is going to take it as a flip. This love you also made my day. Thank you. Through mid, realistically going to have to be a retake if they can't stop this A-bomb from being planted. Yep. Can they stay away from Washi's scope while trying to maneuver across the middle of the map? That would be the big question. भाई क्राउन ज़ीनित को लेंगे भाई, सबसे महंगी चीज जो है मेरे पास. B6 hoping he can मेरा find बहुत टाइम से मन था, बट मेरे को मौका lingering नहीं over मिल रहा. towards B, but little do they know there's nothing home. डेक नहीं है, मतलब मेरे पास खुले हुए पड़े उसके, क्योंकि उसके ना उसके बूस्टर बॉक्स नहीं आए थे. जैसे बूस्टर बॉक्स नहीं आता उसके अंदर 16 32 होते हैं. भैया मेरे लाइव का वो नहीं पहला आता. सुपर चैट शाउट आउट सुजल. लव यू थैंक यू सो मच सुजल भाई. Going back and forth between both sides, and LG's post point is dealing with यार all दरवाजे पे the धड़म हो shit. गया. It's dealing with it cleanly. B6 again empty from some really easy shots. And that'll be enough for LG to just very casually get their 5th round of the board. I mean, that was the easiest post plan I think I've ever seen over there. On Express. You had everything being watched, surely, but I mean, the flank was dealt with. Players trying to rush through the front. Sure, why not? The train also being locked down. Okay. Just where Kagendra started off this half wonderfully. Luminosity answered back with 2 strong. Now just 2 rounds away from taking a 2-0 lead. Delayed hit for LG over towards the A वो site. सर्वर लिंक नहीं मिला, कल से वेट कर रहा हूँ. नहीं दिया क्या, मैं करवाता हूँ ब्रो सुदन वरेज, मैं बोलता हूँ. Setup for Crossfire. And LG are staying away from it, playing through train, so there is a Bro, chance for Hershey. Clove to do some damage. He does get flashed, so he's got to back off. भैया रॉन 9 आई गद्दार, नेचर से अच्छा सबक सिखाना. विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस. And it takes maybe a little bit too long to follow up on the kills. Still, it comes through for Kagendra. It's laborious, but it works out. राउंड जीत गई 5-5 हो As गया. now just Tech and Washi once again find themselves in 2v multiple. पर यार हमने 1v4 देखा है, मैं तो इतना ही बोलूँगा. और LG से ही देखा है, LG वालों ने मारा है. I feel like that you do have to have this push if you are watching. The biggest issue, of course, is that he has a sniper and a pistol. As cracked as he is, can't get the lockdown. It's up to Tech now for a 1v multiple situation. And
be a 1v4. Bomb needs to be collected, but he does have just under 60 seconds to play. So lots of time in the clock to finesse this. Doesn't have to sprint forward and make too many sound cues if he doesn't want to. No utility, though, to play with. His nade's gone. His trophy's gone. And here comes the first dangerous check. And that will be the one that gets him. Really good stuff right there. कर रहे भाई ये केजी कर रही है भाई कमबैक लग रहा है फील आ रहा है मेरे को भी Takes a little bit longer than you would like. But at least this time they're able to follow up and get us to a tied 5-5 game. Hesitation in search and destroy specifically for Express going to get you caught out more than anything with the longer lines of sight. Though I do love that adaptation for Kagendra, having at least a player inside of A. लॉल मैं सोच रहा था लकी सब्सक्राइबर मैं बनूंगा tears of joy 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 are going to retake by way of taking the long flank. The only person watching this is Tech. He's going to be flat out overwhelmed. Can he get रोनी गद्दार है उसे अच्छा सबक सिखाना अरे कल को वीडियो आ रही देखना तुम all from the back. Nades also landing as Washington कल दिन में आएगी 1 बजे वीडियो लिलीविल की ओ भाई क्या नेड मारा है And how about this? ले भाई चढ़ भी गए We घुस don't भी need to गए be all cute and fancy with our finesse. Completely hit you and भाई hit him with flawless an लगे uppercut. एक भी मरा भाई उनका एक भी नहीं मरा उनका 6-5 tally with a quick defuse. Kagendra a chance to take map एक और 2. राउंड अब इनको One एक on राउंड the way, चाहिए उनको being 2 able to राउंड do it on चाहिए the मुश्किल लग defense, रहा है and honestly लुमिनोसिटी का speaking, नहीं that है is how you want to try to retake over by that A bomb site from Kagendra's perspective, being able to utilize your numbers overwhelming rather than just trying to send your and snipers successfully 15 different months completed 3 individuals more for to 2 just years be let's go isolated in the odd situations. Luminosity trying to 3 switch more the pace for again 2 over towards years B from Kagendra here. Reef over the top of the heady. No early contact from LG. भाई लेकिन They're on the other side of the staircase. Reef भाई लेकिन 2 साल में तो 24 बंद होते ना Down to a 3v3. Help is on the way, but it's late. And in that process, यार LG सुदन वरद जी क्या clean कर all रहे हो the तुम kills जिससे up, तो नहीं कर रहे हो and it leaves Fran वो तो 18 होगा ना 1.5 साल होगा वो in a 1v3. हाँ तुम 1.5 बोलना चाह रहे हो Bomb तुमने will 2 get बोल दिया collected by Tech. Fran trying to finesse as much as he possibly can. लम्बो भैया love you too अब्दुल्ला भाई love you Cleanly. Okay, hold on a second. हैप्पी एनिवर्सरी Clock अरे gets अरे reduced वाह to 44 seconds with the plant. भाई Fran's ये still कौन सी holding the यूनिवर्सिटी angle. अरे भाई मैं वो यार फ्रेंड एनिवर्सरी फ्रेंड से and successfully 15 months completed 3 more for 2 years नहीं यार अरे On the तुम Fennec, यार there's the check from LG. तुम यार No worries. They're doing overtime. First round of भैया मैं overtime. अगे शाउट आउट दे दो दिल Fantastic भाभी push coming अच्छी here है from LG. They haven't really showcased that देख beat भाभी for quite अच्छी है some बोले time, लोग so हाँ? definitely भाई? a respectable call coming through तुझे from तो them. लड़की Just बना trying to दिया keep the लोगों ने pace honest for KG. Gonna be switching their sides here. भाई जी जी Back over 6-6 towards हो the गया जो भी जीत offense, गया वो जीत गया didn't exactly go swimmingly. क्या लगता है बताओ Latter कौन जीतेगा half बताओ of अब the यार लग रहा है squad लुमिनोसिटी over भी the गाल top, दो they want this B side. Once again, ओए Kagendra defense. ओए ADS भाई ADS That क्यों works out nicely. LG Wrong were day, a bit but caught off guard. Vague. अबे XG का डे वन है तू Minimizes the damage by finding a उनका day follow-up one है double. KG So का we'll go into a 3v3. तू साले सुअर का चेहरा 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 सोमरी लामी भगवान कसम सुजल तू मिल मेरे को कभी भाई तू तेरे को बताता हूँ और तू और तेरा सुअर का चेहरा दोनों को बताता हूँ मैं Even if they try to push through, Tech is currently watching 3v3 for it. प्लांट करना है बट इनको KG को ओए देख लिया अरे भाई 1 HP यार वो हील हो जाएगा 1 HP हाँ हील हो जाएगा अब तो पीछे को भाग गया बट उसको पता लग गया ना उसे फट गई ना थोड़ी सी ये लोग यही आ रहे थे वो तो बॉम्ब लेके आ रहे थे मिड पे है ना नहीं बी जा रहे शायद हाँ बी जा रहे पर वो देख बी में पहले से 2 बंदे बैठे दो बंदे और एक बंदा पीछे से आ रहा है वो एक्चुअली 5 मेंबरशिप गिफ्ट भी किया था सम टाइम अगो अबे नहीं भाई उन्होंने लपेट दिया Vague trades, we got the 2v2. Backside monitors, Vague in trouble, but Tech is Oh, found a what? kill. Vegas is trying to delay क्या some हो time. रहा है? Tech tries to get भाई, here, and 3v2 Reef is था। getting finessed with. He निकाल still दिया। can't find the kill. Off the reload, the slide comes through, but Tech नहीं is यार अब कहाँ यार Tech- ओए पीछे से मार दिया पीछे से जी, पीछे जी। ट्रेड ले लिया भाई बोल रहा हूं यूनिवर्सिटी फ्रॉम डे 1 बॉयज लेट्स Go! गो तुम I लोगों mean, को that is from just the day big special, one. isn't it? You give him one piece of cover, ये a जी। fixture on a map, and he is just sliding around it, just being an absolute. भाई ये मुझे इसका एप्स day one। मिलना है कभी Overall, भिवानी that तो LG शाम tries to भी set और themselves क्राइम up दिल for it. टूटना टारगेट 8 हो गया कल 7 था ना हैं? कल 7 था अभी बढ़ा है I think 6-6 होता होगा तो हो जाता मैं ओटी जैसा कुछ था Four-man strong over towards A. Watching over the top of this is Reese. 6-6 होता होगा तो वो कर देता होगा एकदम At the moment, that is Me6 playing towards B. Smoke will embellish the front side of the site.
Quick plant possibly on the way. B6 trying to get some wall bang spam. It will not connect, but it actually shrugs LG back into touch. Here comes an early retake, but LG have kind of faked this. They've backed up. They've essentially allowed Contender to come right into the web. They've spawned, and the kills are coming through. अरे ले भाई खींची भाई भाई 8 भी कर गए भाई वो कोई नहीं हो रहा तीसरा गेम कोई नहीं जा रहा तीसरा गेम भाई Easy kills, LG up 2-0. That was dirty. I'm not gonna lie, like that's some nerdy expression coming out from a बस ऐसे ही लोगों को देख के घिन आती है Luminosity. It doesn't matter what the map is. जो साले हवा के साथ ऐसे उड़ते रहते ना जैसे Like as you were talking about, to get onto planters, to get onto the मैं वामू वामू चिल्लाऊंगा कुत्ता फाड़ के अबे कुत्ता नहीं होता कुर्ता होता पागल तो and then they just bro please shout out to you OTB Gaming shout out bro thank you so much and most importantly lockers in top server just waiting for the smoke to completely dissipate and when it did is the moment that they pounced भैया भाभी आज ही है शादी कब कर रहे हो दिल ये पागल हो गया Listen to what this is because Kagendra, like you mentioned, they were कल भाई ये सब मत करो यार all the regulation defense and then लौंडा है वो retake. in the end of the day है ना भाई That didn't work out as well. The other times they did it by full flooding either from the एक front बार or पूछ रहा हूँ भाई तू बुरा क्यों मान रहा है LG says, let's show them that we're taking A and then never mind. Get out of there, hold some good power positions and it essentially feels like Kagendra's the team playing offense into a 5-man LG defense at the end. Tech भैया जेई की तैयारी कर रहा हूँ 2025 होगा सुजल होगा मेरे दोस्त होगा मेहनत करते रहो पढ़ाई करते रहो बस होगा तुम्हें क्या लगता है तुम्हें ऐसे लोग रोकेंगे नहीं Express isn't exactly a map where you will see consistency as far as double snipers are concerned, but Tech with the growl Bro, is just PLS an shout absolute out. force to be reckoned with. You can see exactly why Luminosity has put some stocks into the Tech market, and that is exactly why LG were finding themselves in a 2-0 lead. माँ वामू वामू जलाओगे कुत्ता we said फाका that it was going to be a must-win for map number 2. मत चिल्लाओ यार कुत्ता It's not फाड़ के looking too भाई good that they have to reverse sweep LG now, world's number 1. No, definitely not. भैया जी के लिए तैयारी कर As रहा much as the map pool is 2025 not unfamiliar to Kagendra's history. Sure. It is a little unfamiliar to them in the tournament this weekend. That's right. They haven't played any crossroads सही है, control, I which is what's coming up next. अब आएगी They super only chat तो played दिखेगा single Hacienda Hardpoint, which was one of their most played through You stage missed my 4, last but super it didn't chat. really ऐसा क्या give करा us bro? much confidence. I think they were 3 and 4 overall throughout वो their actually stage 4 5 and membership gift भी CDFI, किए so हैं not a some convincing time map ago by any stretch of the imagination. And even though we kept saying that Understood. Kagendra needs to get to map 5, even that doesn't look great because it's Tunisia. So yeah, trying to reverse sweep on 3 maps पर You 18 missed और my 5 भी last 23 person. होता है don't have a मतलब lot of success on. मैं तो बस It इतना doesn't बोला really कि bode a 18 lot और of 5 भी confidence, I think, 23 in the होता है देखो conversation, और 2 especially साल में following 24 होते हैं These next 3 maps तो तुम्हें should एक we और end up गिफ्ट seeing करनी 4 पड़ेगी and किसी को 5 membership भाई for मुझे Kagendra's एप्स मिलना है POV, कभी it feels भिवानी like तो Old शाम भी आओ Reliable क्राइंग has दिल now तुम come अपना कुछ क्राइंग भी क्या हो, करें? oldest तो मैं ही so much रहूंगी time यार। on. कितने हो But you गए go back तुम्हें to the conversation again for जी Luminosity. 4 Every महीने single check. map pick, more or 12 less, give or 12 take a महीने हो few गए। within each mode, feels 3 right on years, for them. 6 There's not a months, 13 combination days. of a map or mode that they have not played, have not practiced, and at one point or another looked phenomenal on. Sure, and I think that's the bigger point. 3 years, Let's 6 just go months ahead और and throw the assumption because 13 they're 2-0 days. up, तो not मतलब because of तुमने anything else. ली Not थी because of anything else, मेंबरशिप because, yeah, 2020 में Okay. But there's really 6 महीने पे maybe one map on और each 3 mode that तारीख I'm को comfortable with. Sure. At worst. Good. Yes, And to get rid I of it, guess. you could get rid of it. Yep, Good. absolutely. Or you Nice could match. evaluate, is our worst map also one of their bad Good. maps? So we just take away their best one and then just see what happens. They can kind of flip a coin because Yeah. they're not unfamiliar to doing that either. So it's going to be tough, I think, just to set yourself up for success against this LG team because of how fluid they are Yo, across yo. every map mode combo. बच्चे कितना खुश है वो। It's a terrifying thing, man. And this is why, again, we Luminosity जीत constantly गई ना? just paint this picture. We started off yesterday bright and early, and we continuously talk about it. They have a target on their back for a reason. You come for the Kings. you get Pokemon the time. Kings. That is this Luminosity gaming roster. Yeah, unless Kings are the We open a in which case Pokemon it is cards bad. यार मेरे को ऐसे लग रहा है मैच होने वाला है बट हैं? Had to throw it out. टेंशन नहीं है ना अभी तक Through अपनी enough, सीट they से were here all day बट yesterday. मैं to कार्ड्स win a ले map, आता and you just have to call them out हूँ like देखना that on होगा Saturday. Sorry, हैं? हाँ हो रहा I है। forgot they did. Okay, all right. आज अलग फॉर्मेट है। कॉम्प्लीमेंट्री होगा ही होगा थर्ड कल नहीं हो रहा था ना बट? हाँ कल नहीं होगा JK in Spanish. अच्छा ये स्टेज 2 होगा ये। लव यू प्रो हाँ It's been और कल में भी ना ये for LG टाइम all the टाइम disconnect क्रंच हो at रहा you. होगा जैसे पहले बेस्ट हाँ ये देख स्पॉन वाला हाँ होगा जैसे बेस्ट ऑफ 3 था बेस्ट On ऑफ the 5 होगा defensive फिर। side, अच्छा, opening ऐसा हो focus गया? for Kagendra ऐसा हो will be सकता happening है। over तो towards और A. कौन से Couple move of nice join kills होंगे? here early, actually. एक और They're move gonna get a little bit of होगा, control over through fire and stop the clock with the first tick of progress locked at A. Okay, don't listen to us. We don't know what we're talking about. Kagendra looking smooth off this open बेस्ट ऑफ 5 offense. के चैट This में भी is बोल रहे हैं। a map mode combination
position that is taken by Slays, but it's all about the right kills at the अच्छा, right best time. of 5 है, लोग Really भी good बोल रहे best setups of as 5 far as है. crossroads are concerned. Will flip life lead back into your favor continuously. Over by the A control zone, at least you're able to get that first segment, but the retake has already come through. अगर ये लुमिनोसिटी जीत गई, जीत ही गई फिर तो. बट बराबरी का मैच चल रहा है, देख 20-20. Task completed Brom Lom U. एंड में And it निकाल really doesn't दिया give out much of a cost. Because on the other side, Band is still in a defensive position to watch over the top at A, which, for what it's worth, I thought Task that completed Only Brom baby Lom like you. Cardo. अरे thank you so much Udanvar, I love So you. depletion comes through because that tick was not fully secured. Love you pro, love Now you all of a too sudden, pra. she's on the opposite foot. Kagendra down 3 lives. Oli clock baby continues to like tick कर दो. away, and the focus has been Oli split baby on like back करके here 10,000 for like कर दो. Free life lead, not terrible. But now you're getting deeper and deeper into this round. मैं न्यू बसाड़ा शहीद स्थल आऊंगा, शहीद स्थल आऊंगा तो मिलेंगे. मुझे 2 साल 1 महीना हो गया है भाई. आपको पता है मैं कृष्णा जी की ड्राइंग बना रहा हूँ, वो भी हाइपर रियलिस्टिक लाइन की तरह. अरे डैम ब्रो, मैं पहली बार समय भाई ने जब आपको रिव्यू दी तब से देख रहा हूँ आपको. कितने सब्सक्राइबर थे तब आपके. लव यू ब्रो. मेरे को याद नहीं है वैसे. भैया पहली बार समय भाई ने जब आपको रेट की थी तब से देख रहा हूँ आपको. कितने सब्सक्राइबर तब आपके. लव यू बैंगनी दिल, बैंगनी दिल. लव यू टू. मे बी हम तुम्हें लाइव मिलेंगे भाई. आपको पता है मैं कृष्ण जी की ड्राइंग बना रहा हूँ, वो भी हाइपर रियलिस्टिक लाइन की तरह. दिल डेविल भाई थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट. लव यू. मी न्यू बैसडा शहीद स्थल आओगे तो मिलेंगे. यस मुझे 2 साल 1 महीना हो गया. बात तो वही है ना, 3 चाहिए. albeit from a great opening break off by Kagendra. But that's the one thing that we realistically don't really see on Crossroads. गुड नाइट भैया, सो रहा हूँ. सुबह 4 को उठूंगा. लामू गुड नाइट. Now LG off of their offensive attempt will have 2 operators right off the get-go if they want it. Equalizers were out for Love from USA. So Reef Love does you too, his bro. job and then some getting a double. भाई कभी जम्मू आने का सोचो. ओके डन. तभी ठीक हो, लेकिन यार वहाँ बहुत ठंड होती है. Only getting 1 kill with it though, so again, kind of mitigating the efficiency of these early operators. Nice moment from Clove, able to उसने उसको तो मार दिया लेकिन. Defense still stays in control of A, but off the respawn, LG takes their eyes over towards the B zone. भैया 911 करेरा एस दिलम डॉम लामू दिल. कौन है कल्प भैया? एक 911 करेरा एस दिला दो. मैं 2.5 करोड़ की गाड़ी, 3 करोड़ की गाड़ी तुम्हें ऐसी दिलाता हूँ मैं. Band oversetting there with the purifiers gonna finally get cut down. डन डन तेजस मैं देखता हूँ ब्रो. अगर आऊँगा कभी तो पक्का. ये वाले कह रहा था मैं देख रहा. ये गोल्ड वाले ना बहुत कूल लगते हैं. भाई आप कभी भी बानी तो शाम में आओ ना. PLS मुझे मिलना है. क्राइम कैट फेस में भी कभी मिलो. बहुत टफ हो रहा है भाई कभी जम्मू आना का सोचा है. 13-16. मेरे हिसाब से तो लीड पता है कब ज्यादा मायने. ओह शॉट भाई. 4 की लीड आ गई इन पे. अच्छा ओके. ये एनाइलेटर जो है ना, ये देखना है खुद से एम कर रहा है थोड़ा सा. देखा तूने लॉक हो रहा था उसके ऊपर ऐसे. ये देख देख आवाज भी कर रही है. वो देख खुद ही मार दिया उसको. यार तुम्हें राइट क्लिक पकड़ के रखना है उसमें बस एक तरह से. देखना 7, लेकिन फिर भी देख लुमिनोसिटी की देख 6-10 6-9. ब्रो कभी लुधियाना पंजाब में भी मीटअप आप रखो मुझे प्लीज. 3-9 हो गया ना. आप ये क्या आएगा? This defensive setup. Do you remember? You said long time ago that someone will say that. Fleet bro, मैं आपको 90k से सब्सक्राइबर हूँ. मैंने बोला था एक बार भाई एक ना एक आएगा और बोलेगा फ्लिंट ब्रो मैं 90k से सब्सक्राइबर हूँ. ब्रो कभी लुधियाना पंजाब में भी मीटअप रख दो प्लीज. डन है ब्रो. मीटअप तो नहीं रखूंगा बट मैं आऊंगा तो हल्का सा अनाउंस कर दूंगा. अगर मिलेंगे लोग तो मिलेंगे.
their previous offense attempt doesn't help about things out. When Reef takes himself out of commission to start things off, it's a flawless opening for LG. Absolutely perfect start here from LG, and now they've got themselves essentially ये तो right at पेलने the लग front गया यार। गुस्सा आ गया गेम का ये राउंड आ रहे थे ओरे ओरे with the पापा RW. पापा GTR Delta Swaps it over to a crowd. He's going to have an opportunity just to sit here and hold the angle, and Kendra need to find some exit. गुस्सा आ गया भाई। एक नेट से 2 बंदे मार रहे ऐसी हो। कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? 27 plays 18. ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? Finally, Yes. some breathing room off the spawn here for Kendra, but a lot of work to be done. And also the focus will start to head over towards the A site, but LG off their respawn, right back in the mix. The defense once again establishes control. Hey, you just feel like that this round's already lost. Yeah. I mean, it's 10 Lambo life. bro, I'm waiting for you every You time have to चाहे come out कभी of the आओ spawn हरे। and just Done, be done, done, done. flawless for 2 gunfights in a row, which is so much भैया easier मुझे said एक than फोन done. दिला दो और भैया एक मुझे सुपर एक बाइक ले फोन लो। दिला दो One और player एक of सुपर envy बाइक that's ले लो। pushing all the way हाँ, up to करते finish क्यों नहीं out this भाई? push that is currently manifesting over at A. Yeah, and LG's retake over at A is perfect. बट मैं ट्राई करूंगा सैमसंग या किसी से बात करने की to give away some phones to my subscribers. Can't have it happen. No. Ban sniper rifle in hand. This is kind of getting finessed over through the snow alley, and okay. भाई लुमिनोसिटी ने 10 डाउन होके जीती है। स्टार्टिंग में देखा तूने कैसे हगा रहे थे उनको? On B, at least for a time. Cats are cursing it all over the बस place. अब जहाँ से 4 हो गए अब मुश्किल है। 17 plays fourth. This round will come to a very anticlimactic finish. But LG एक बार के feel really 6 भी comfortable, स्पॉन and I होते think ना now is the proper तो भी समझ में time आता है to लेकिन देख कर tally रहे up भाई what is available going into the next round. Carrera Time es भी खत्म नहीं हो तो गया। एक एनआई से मोही दिला दो tears of joy Lambo। That could lead them towards winning an कर रहा है offensive ऐसा नहीं round तो एक today. निज़्मो ही दिला दो। हाँ हाँ One would argue. कर रहा है yes, ऐसा नहीं तो क्या absolutely. दिला दो Predator निज़्मो। missile to be able to हाँ open things बहुत up, to be बढ़िया। able to get you एक so much बुगाटी space to सुपर get inside स्पोर्ट भी deep दिला portions देता of हूँ। these buildings to pull out some of these हैं? operators. I mean, if you paint the picture beautifully, it might just come out and be an भाई एक offensive गेम round जीतना for है बस LG. Could लुमिनोसिटी be ने। 3-0 to start the day. केजी Only को 2 time जीतने will पड़ेंगे, tell. केजी को 2। Opening break off is everything when it comes down to control. Purifier to start things off the ban. Oh, but Hold up. very early call for that. Yeah. The solo Sparrows will take down both Vague and Band, with also tallying Washi. So, okay, flawless start here for Kakendra's defense. LG holds onto their garage, at least for a small time. Pred Missile getting called in. It will at least land onto 1. But all that does is just neutralize the life lead. It doesn't really get them too much space. LG on B for now looks like the first tick of progress will बराबरी be का मैच चल comfortably रहा है। इसको locked. annihilator मिल गया And देख। making sure ये no one देखिए plays over कुछ कुछ नहीं मार inside रहा that है। cliff. And with Washi supporting with the Annihilator, that may be enough to continue to put some pressure here at B. Still looking at it though. I mean, Washi with this Annihilator has 3 shots left. ओ इसमें शॉट्स होते हैं बट 5 या 6 गोलियां ही होती But हैं। Luminosity still very much so in the driver's seat. Kendra still have operators left to be played. It's up to Luminosity if this goes to a round 5 defense to try to get as many of these out. बट ये let गेम alone try काफी to close it मजेदार out. है यार Yeah, I think देखने that's the में big खेलने thing का for मन कर Kendra रहा है। is if you could feel like you've got a ये देख solid पकड़ रहा है, ये foothold, देख पकड़ rहा है, ये spend देख। too much. You're going to need something for Yeah, round 5. yeah, And yeah, yeah. Washi just goes to a little bit of a prone shot and shuts down Fran's Annihilator, only allowing him to get a single kill. Meanwhile, LG, not just the kills impressive, but the focus over towards B continues to be an issue. Reed getting a double, gives Kagendra a chance to do some जीत रही है fun KG वाला trapping, शायद। just in the nick of time before that third 14 kick gets 16 क्लोज है। captured. Kagendra will reclaim it. 13 15 15 plays 13. अरे बाप। Band after that भाई quick सबको fire off the get-go, CHIG he दिला earned it रहे back हो एक super मुझे fast. iPad दिला दो बेस That'll be सस्ता enough for हाई him है to आपके lock लिए तो down मोया things over स्टैचू। towards fire. LG taking their focus अच्छा। on respawn with 28 seconds on मेरे लिए the तो zone. सस्ता ही है। अच्छा पापा पापा GTR डेलवाडो। अबे साले कौन है? अर्श पठानिया मैं बता दूं पापा पापा GTR दिला दो। भाई लिटरली मैं अकेला यूट्यूबर हूँ जिसके सब्सक्राइबर उससे पापा पापा करके बात करते हैं। भाई मुझे नहीं पता, मेरे को नहीं लगता कोई भी किसी के भी सब्सक्राइबर उससे पापा पापा करके बात करते हैं। होगा तो मैं नहीं जानता भाई। लेजिट भाई पापा पापा GTR दिला दो। And that stack allows them to get that third tick of progress. 3-1 the count on the आउट map. भी गए वो चल रहे हैं ओरे भाई। It was the भाई worst case scenario बोल रहा that हूँ we already LG from drew day up. one भाई LG एनिजॉय भैया आईफोन डेलर दो सेटिंग से बात करने के लिए। ये देख आराम कर को देख कह रहा है क्या कह रहा है नहीं भैया आईफोन दिला दो सेटिंग से बात करने के लिए। ये इसका नहीं सुधरोगे नहीं सुधरोगे तुम नहीं सुधरोगे तुम सालों।
AI से क्या क्या बातें करवा रहे भाई। ठीक है, बुगाटी चिरॉन सुपर स्पोर्ट 300 डन। 1600 BHP। एक रिक्वेस्ट है, आप एक बार मैंने आपके डीसी पे ठीक है, एक बुगाटी कायरन सुपर स्पोर्ट 300 जोड़ डन दिल। मैं चेक कर लूंगा। जीजी ब्रो, लुमिनासिटी वर्सेस केजी में तो जीत गई लुमिनासिटी। जीतना ही था यार, बहुत खतरनाक डोमिनेट करके चल रही certainly है। hope so after dropping a handful of maps yesterday and best of 3 throughout the entirety of Swiss going to OT versus LG is Crazy nothing भाई। to आ scoff जाओ। at. चलो कार्ड भाई एक रिक्वेस्ट है, क्या आप एक बार मैंने आपके डीसी पे आर्टवर्क शो मेरा केस नाम में मेरी लेके ड्राइंग बोल है रहे वो हो। दिखा दो ऑडियंस को PLS। Luminosity team, just the #1 global team in Call of Duty Mobile. Their decision चलो। making, their slaying, their understanding of where the operators kind of lie in wait भाई कोई for the crazy enemy card team and निकलेगा for तो मेरा होगा ना। themselves to be able अबे to चलना है यहाँ impact से the ओए। response, albeit in very एक तो insignificant बैठा रखा है break बगल in में भी that final बदतमीजी round. के। Maybe getting a little over eager with the resources they had. भाई at गायब हो their जाएगा, disposal. गायब हो जाएगा फिर Still, मैं देखो अपने पास 3 ये पड़े हैं वन Opposite, पीस के नए they were वाले। still able to get the job done. And I think the final point पर here ये हम लोग for ओए ओए LG ओए ओए। is these guys on Crossroads are so good at playing around the objective, where I feel like in the past teams that have preferred अब seeing देखो अपने पास है Crossroads बहुत like कुछ, it ठीक है। because it's बहुत सारे turned जापानीज into a सेट है, इस वाले में तो 30-30 4000 TDM ऑब्सीडियन off फ्लेम में the मिलता है, top. समझ So लो। to see LG मतलब इसका really नाम ही capitalize ऑब्सीडियन on फ्लेम है, offensive round बट ये by sneaking 4000 away ऐसे the भी A मिलता है, zone, इसका get the बहुत extra 60, and all of a sudden there's a bit of But panic मेरा and मन नहीं है chaos इसको for बोलने Kendra. का। Like, wait a second, they got that, and then oh, wait a second, they're already on B. That's just real tough to see. I think if you're facing up against LG, because their तो हम लोग Crossroads is इसमें going से to be a निकालने वाले staple हैं। if they were to find a way to win a championship. I mean, impressive performance across the तो board. इसमें LG मेरे moving सारे के forward सारे on bracket, ओपन पैक्स है, which ठीक means है। time for us to send it on इसमें over मेरे to सारे के सारे the ओपन main पैक्स है, stage to लाइक see how they're feeling after that performance. क्राउन जीनित है, नीचे माइनक्राफ्ट PvP की मेरा थोड़ी सी फेवरेट पार्ट ट्रिक्स है, बता दो कभी सिल्वर टेम्पेस्ट, मेरा फेवरेट वाला। तो हम लोग ये वाले खोलेंगे, ठीक है। चलो रेडी ब्रो, पता क्राउन जीनित या फिर सिल्वर टेम्पेस्ट क्या फुल रेट खोलें? किस में अच्छा है? फुल रेट क्राउन जीनित में। क्राउन जीनित पे। साले 3 गुना पैसे हैं उसके। So we figured out how they play. They pretty much be a करो यार क्राउन जीनित प्लीज भाई। भाई भैया लेजेंड ये ये लोग और रोनी सुअर का चेहरा, 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 वरना सुअर का चेहरा, सुअर का चेहरा, सुअर का चेहरा। पापा पापा आपकी पीसी दे दो गेम खेलने के लिए। तो कह रहा पापा पापा आपका पीसी दे दो गेम खेलने के लिए। अबे सालो यार, तुम्हें मैं बता रहा हूँ यार। भैया अकेला आपकी तो यूट्यूबर है। सेटिंग्स NHI हाई मोय मोय। It's just another भैया आपकी तो सेटिंग ही नहीं है, मोए I'm मोए। holding his side. तुम सालो We're watching over at SMGs. He's sniping with me. मोए मोए। I'm sniping with him, you know, चलो vice versa. ठीक है, We're क्राउन watching जीनित ना, videos. लेकिन मेरा फेवरेट सिल्वर टेम्पेस्ट है, और ये थोड़ा जेब को भी सही पड़ेगा खोलना, तो हम ये भी खोल सकते हैं, तेरी मर्जी है देव, तू जो बोलेगा। मैं यार सिल्वर टीम आपका फेवरेट है? हाँ क्राउन जीनित है फिर। Oh yeah, yeah. Look at my family, man. Yeah, they're coming here to support me. You know, I बहुत ही really, कुत्ता you आदमी है know. भाई। चलो आ जाओ, अगले मैचेस शुरू हो उससे पहले हम लोग क्राउन जीनित खोलते हैं, ठीक है। एक तेरा, ये वाला पैक मेरा। एक मेरा। अच्छा ये ऊपर वाला तुम्हारा ही है? हाँ ठीक है, ये अर्शी का, ये तेरा, और ये मेरा, ठीक है। सबके एक एक खोलते हैं। एक सिल्वर टेम्पेस्ट दे रहा हूँ और क्राउन एक जीनित मेरा। क्राउन जीनित। अरे एक एक दोनों दे रहा हूँ, अच्छा अच्छा फिर ठीक। ठीक है। इसके अंदर बहुत है, पता है तुम्हें, मजाक से हट के इसके अंदर लाइक बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है इसके अंदर। पैक ही पैक है। क्राउन जीनित के भी बहुत है, ये भी क्राउन जीनित है पूरा। ये कहाँ पर रखते हो तुम? अपने भाई घर एक पर? रिक्वेस्ट है, मैंने सालों अपने बहुत डीसी में मालूम आर्टवर्क है। स्प्रेडशीट में लाइन वाली ड्राइंग सेंड KRR के है, चाहे क्या आप लाइव पे उसको दिखाएं, इसकी टी हो PLS नहीं अगर नहीं हो तेजस, सके अभी तो। कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं, जब देखूंगा मैं देख लूंगा ब्रो, अभी कुछ नहीं देख रहा हूँ, अभी मैं कार्ड अनबॉक्स कर रहा हूँ। भाई ऐप मेरी सेटिंग से बोलो ना कि मेरे से बात करे, मैं ऐप को इंस्टाग्राम पे ID भेज दूंगा। भाई तुम लोगों को शर्म है कोई? तुम लोग ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो लड़की को। Vamu, my sister, love ठीक है। you a lot. Can you please wish her best of luck for her exam? Her name is Swati. Oof Masi ji. मानसी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और ये देव गाली बक रहा था ये। किसको? 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 जिसको बक रहा सुनी तो होगा। मैंने भी थी, हैं? दे रहा था ये किसी को। भाई PLS एक बार दर्शील बोल दो। हेलो दर्शील, कैसे हो ब्रो? लव यू। चलो ठीक है,
दोनों एक एक निकाल दिए। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो बॉक्स है ना पूरा, अगर इसकी कॉस्टिंग लगाएंगे ना, कितनी है? 13 36 होगा 50,000 के आसपास का होगा ये डब्बा खाली। ये गत्ते देख रहे हो ना तुम, ये खुले हुए डब्बे से बाहर गत्ते 50,000 के? 50,000 के आसपास पक्का? होगा। ये नहीं मैं पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को खरीदना होगा मतलब बेचना होगा, कहाँ बेच सकता हूँ मैं? मतलब इनकी मतलब रीसेल वैल्यू क्या है? रीसेल वैल्यू ऐसा, मतलब ऐसी मुझे ऐसी बेचना है पैक में। मेरे पास भी पड़े हैं ना ऐसी बहुत सारे पड़े हैं, टेम्पेस्ट और क्राउन जेनिथ वाले, तो मुझे बेचने हैं। तेरे कहाँ पास कहाँ बिकेंगे? से है? नहीं है मेरे पे। तेरे पे है अरे यार कैसी बात कर रहे हो यार, मेरे को ये तो तो बताओ। मेरे को भेज दे। ओम की भैया नहीं, लम्बू आपको दिल नहीं। हरे। मेरे को नहीं। नहीं यार, फिर घर यार आपको फ्री में नहीं दे दूं मैं यार, बेचने हाँ, कैसी बात कर रहा है ये यार? भाई है मेरा बता दो यार। नहीं, कहाँ बेच सकता हूँ मैं ऐसी? इसको? हाँ मतलब भारी कितना है? भारी बहुत है यार। हाँ इतना ही मेरा भी भारी है। सेम इतना ही है तेरा? अरे बात तू तो इन्वेस्टर निकला यार मेरी तरफ। ये तो बताओ कहाँ रीसेल होंगे ये यार तू चाहे तो मतलब इंस्टा पे डाल सकता है कि मैं बेच रहा हूँ, ले लो। इंस्टेंट बिक जाएंगे? इंस्टेंट नहीं बिकेंगे यार, क्योंकि अब महंगे हो गए ना। नहीं ना, अगर मैं डिस्काउंट लगाऊं जैसे 50 का 50%। 50 का? 50,000 का है ना ये, आप बताओ। हाँ तो अगर मैं 25,000 तो 25,000 भाई कोई भी ले लेगा, जो भी कार्ड कलेक्ट करता हो तो ऐसे पकड़ लेगा, मेरे को ही दे दे। मैं तो यही बोल रहा हूँ। ठीक है नहीं आप करो। हो गया भाई मेरा। पीछे रखते हो ना इसको। तू साले होए मेरे घर के, अभी बता पापा दो पापा लैम्बोर्गिनी एसेंस SCV12 दिमलामडू ग्रिन। हाँ पापा लैम्बोर्गिनी एसेंजा दिला दो। हाँ तुम सालों को ना, तुम जितने बिगड़ रहे हो तुम्हारे असली पापा को बोल के आते हो हो। जाएगा, थैंक मी लेटर। बस अबे ऐसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन हाँ ये सही है। ये परफेक्ट एंगल, तो इसको हम लोग साइड रखते हैं। भाई लेजिट में मजाक नहीं हो रहा, 2 से 3 किलो का डब्बा है वो, छोटा सा। चलो ये मेरे थे राइट। हाँ। एक सिल्वर टेम्पेस्ट, एक क्राउन जिनिथ, ये तेरे वाले हैं। पहले हर्षी के खोलते हैं, ठीक ये है? दी चलो वाले, हाँ। हर्षी कौन सा खोलूं बताओ, सिल्वर टेम्पेस्ट या फिर क्राउन जिनिथ, कौन सा? भैया रशियन से बात करो। क्राउन सीने। है भैया रशियन में बात करो बोल रहा होगा ना? क्या लिखा है उसने भैया? रशियन में बात करो लिखा है, से बात करो लिखा है? अबे तू पहले हिंदी सुधार ले भाई अपनी। वो था रशियन में बात करो, सुकाबिलियात। चलो आ जाओ, पहले क्राउन जिनिथ खोलना है, हर्षी बोल रही है। चलो रेडी, चलो आओ देखते हैं हर्षी के उसमें क्या निकलेगा। और रियोलू है देख, सबसे पहले रियोलू आ गया। निकल लिया। चलो रेडी। मुझे तो डिले में दिख रहा सबसे है। पहले तो ये कोड, ये किसी कोई खेलता है तो उसको दिख ही नहीं रहा है, छोड़ो। ठीक है, 2 फ्रॉम द बैक टू द फ्रंट, लास्ट में आ जाएगा अपना क्रेजी कार्ड। और ये लो डिच्ची घोरी से। यार कितना गंदा दिख रहा है यार इसमें, कुछ दिख भी रहा है इसमें? कल तब भी अच्छा लग रहा था ना? अच्छा लग रहा था। भयंकर बड़ा ही टट्टी कैमरा है ये तो यार। ये देख छिच्छी, कुछ दिख ही नहीं रहा। लाइट चमक रही है इस पे। पास से पकड़ोगे इसको? अब तब भी दिख रहा है थोड़ा ना? बहुत दिख रहा है। हाँ। हाँ, चलो noticeable है। रेडी। सबसे पहले क्रॉक आया है, ठीक है? क्रॉक नेक्स्ट अल्ट्रा बॉल, फिर है रियोलू, स्टारली, साइथर। ओए भाई क्या कुछ दिखा क्या अरे आपको? भाई गलती से फिसल गया भाई। कुछ दिखा क्या? है साइथर, पोके वो। अरे भाई ओ, फिर फिसल दिखा गया कुछ भाई। दिखा, ब्लू कलर का, उसका भाई ग्रीनिश कुछ कलर तगड़ा है भाई। कुछ है फुल आर्ट है भाई ये। लूना डॉन हो जैसे यूके ओली और मैं अजडेट पर भाई। गई थी। आदत गलत हो गई मेरी। वो बैक से 4 लेते हैं, ठीक है? 4 फ्रॉम द बैक होता है, 2 तो उसमें होता है ना, वो जो पुराना वर्जन पापा होता है। पेंसिल डेम भाई इसका प्राइस देखें? देखो। भाई इसका प्राइस देखते हैं एक बार eBay पे, कितने का बिकेगा ये। ये है तुम्हारा GG11। तो ये तो जी। मेरा हुआ ना? अरे नहीं अपना ही ब्रो समझो, कभी माइनक्राफ्ट है के ना? PvP हाँ। ट्रिक्स बता दू PL बस जवामू। समझो भाई। $5 $5 के है है। भाई। ओए होए भाई। बाहर रुको एक बार, सोल्ड में देखते हैं, सोल्ड में कितने का बिका है। रुक जाओ, अगर हमें कहीं पे वो दिख गया ना इसका, समझ रहे हो तुम? अच्छा क्या कहते हैं उसे? Graded। ग्रेडेड $40 का ग्रेडेड भाई। व्हाट? $40
$40 का क्रेडिट है ये। बहुत अमीर फील हो रहा है यार मुझे यार। भाई $40 का क्रेडिट कार्ड है ये। ओ भाई 3200 का कार्ड है ये, 3000 रुपए का कार्ड है ये। ओ वाह वाह भाई अपने अगले 3 कार्ड फ्री, 3 वो फ्री हो गए, 2 मतलब अपने दो पैक फ्री हो गए तेरे और मेरे। अरे भाई भाई थैंक यू यार हर्षी। थैंक यू, मतलब ये तो मेरा हुआ ना। ओ भाई हर्षी तो बहुत लकी है यार। हाँ भाई कल भी निकले थे ना वन पीस में। हाँ वन पीस में भी हर्षी के क्रेजी Yes, कार्ड निकले भाई। थे। भाई इसको प्यार से डाल दो भाई, मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मैं इसको उल्टे हाथ से डाल रहा हूँ। कोरियर कर देना ठीक है। हाँ हो जाएगा, टाइम हाँ। लग जाएगा बस थोड़ा। नहीं नहीं हो साल जाएगा, भी लग कोरियर सकते हो हैं। जाएगा। भाई ये लग रहा है भाई कार्ड ये। इसकी पन्नी उतारो भाई, ये देखो एक बार। ओ लग रहा है भाई। ओ भाई क्या साइन कर रहा है ना ये? बहुत तगड़ा भाई, बहुत तगड़ा। लूना टोन है ऊपर से देख। भाई भाई साहब मजा आ गया यार। भाई बहुत क्रेजी कार्ड भाई, बहुत क्रेजी कार्ड। हर्षी किस्मत है यार भाई। हर्षी की तो खैर क्या ही है, मेरी है। ये कौन सा कार्ड है? ये भी अच्छा है क्यों साइड क्यों कार्ड। क्यों, मैंने डिसाइड जरूर किया सर। था कि ये वाला मेरा होगा। है जी। हाँ हाँ तो तुम्हारा ही है, बस रखा मेरे पास है। दे देना है ना। क्या करोगी यार तुम भी यार, कहाँ भटकती भी रहोगी इधर उधर। नहीं नहीं मैं भटकूंगी नहीं, पहले बस इसको दे तुम देना। ग्रेडिंग करवाओगी, फिर इसको तुम बेचोगी, कहाँ इतनी मेहनत करोगी, छोड़ो ना। सॉरी ना भाई लामू बट मुझे जाना अपने पड़ेगा कार्ड्स कहाँ पे BCOZ रखते हो परसों सारे? 2 एग्जाम्स है BYI आप सो रहा हूँ Asking बेस for a क्योंकि कल friend. तैयारी करनी है सो श्रीमन एने चाय क्या रहा जाने का स्ट्रीम से। ओके ब्रो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो। बाय बाय, लव यू तेजस भाई। प्रकाश भैया तबीयत कैसी है लम्बू, पता नहीं किससे पूछ रहा है, जिससे भी पूछ रहा होगा मुझे क्या पता। बहुत दूसरा खोलें क्या? खोलो। क्राउन जीनिथ। नहीं नहीं अब तो तुम्हारा बचा है ना वो वाला टेम्पेस्ट। अब तुम्हारा सिल्वर टेम्पेस्ट है, बट ये असली टेस्ट होगा। क्राउन जिनिथ तब भी ना थोड़ा वो है, हाई पुल रेट है। पुल्स अच्छे प्रकाश उसमें, भैया तबीयत पुल रेट कैसी हाई है है। लामू दिल। बट लेट्स सिल्वर सी टेम्पेस्ट खोल दो। हर्षी का सिल्वर टेम्पेस्ट कैसा है, ठीक है। अगर ये भी क्रेजी निकल गया तो समझ जाना फिर हर्षी का जादू है कुछ। ठीक है पहले तो इसको साइड रख देते हैं, फिर बैक से 4। कुछ तो दिखा ना कुछ अरे दिखा। भाई क्या चल रहा है? भाई मुझे एक हल्का सा कवर दिख गया उसका, हल्का सा कुछ क्रेजी है भाई। क्या चल रहा है? व्हाट द हेक यार। डार्क एनर्जी, लोपनी, क्वाड स्टोन, रिजेनरेटिव एनर्जी, रैल्स, ठीक है, क्रोगंक, ठीक है, सोलियोसिस, जुबैट है, एल्गाइम, और फाइनल कार्ड है देख ये भाई। क्या है? अबे क्या है? ओ भाई ये गोल्डन कार्ड है भाई। क्या मिला? भाई ये गोल्डन कार्ड है भाई। डोरेमोन भाई। क्या मिला क्या मिला? रुक जा ब्रो, व्हाट द फक। ओ ये तो ये कार्ड पहले भी निकला है वीडियो में एक बार। ओ भाई भाई क्या क्रेजी लग रहा है वो। ना ना छोड़ो सब छोड़ो। ये सही है। ये कार्ड टीजी कार्ड है। टीजी क्या होता है, ट्रेनर गैलरी होती है। तो ट्रेनर गैलरी हमेशा जो रेयरेस्ट कार्ड होता है उसके एक ऊपर आती है, और मैंने हल्का सा ये कर दिया है मैंने, तो इसके नीचे एक और रेयर कार्ड है। ओ भाई व्हाट द हेक। डुरालुडॉन वी मैक्स और उसके साथ लेजेंडरी कार्ड है। लेजेंडरी कार्ड। वाओ भाई क्या निकाल दिया भाई, ये कैसे? अरे भाई क्या बोल रही थी? भाई वाओ यार ये कितना सुंदर है। अरे भाई ये क्या लगा है हर्षी का। भाई ओ भाई
भाई मेरे वाले भी हर्षी के ही है, मैं तो झूठ बोल रहा था, मेरे कुछ नहीं है भाई। है ना सब तेरे। ये भी मेरा कुछ, अबे ना ना तेरे तेरे है ठीक है भाई। यार अर्जुन आप अबे तेरे तेरे है भाई, तू मत डाल बीच में। इसका ना, प्राइस ना। देखो ना, इसका प्राइस देखते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं ओह। डुरालिडॉन भी कितने का हो गया। पहले तो सस्ता था ये, पहले जिस समय मैंने लिया था उस टाइम पे बहुत सस्ता था, उस टाइम पे भी मिला था। अब देखते हैं प्राइस बढ़े या गिरे। और भाई वो सेकंड वाला क्योंकि लग जहां रहा तक है। मुझे याद है कि आ, ये रीप्रिंट नहीं हुआ था, ठीक है, ये रीप्रिंट नहीं हुआ था। सो लेट्स सी, ये सोल्ड ऑन है, इसका सोल्ड लिस्टिंग। अरे भाई साहब दिख जाए बस, ये रहा। ठीक है, नॉर्मल तो उतने का ही जितने का जाता था ये, बट हमें देखना है ग्रेडेड। 75। ना ना, वो तो म्यू है। अच्छा म्यू, हाँ डुरालुडॉन, डुरालुडॉन, डुरालुडॉन किसी ने वो ग्रेड नहीं करा रखा है। ग्रेडेड डुरालुडॉन मिल नहीं रहा है। मैं बताती हूँ, ये $58 का है। ग्रेडेड डुरालुडॉन मिल नहीं रहा है अभी हाल ही में। वैसे तो ये $5 में बिका है सबसे महंगा, हैं? बट ग्रेडेड नहीं दिख रहा ना। ग्रेडेड वो बदल देते ना इनके रेट। ओके हेलो प्रकाश ठीक है, BHAIY लेकिन ये कैसे 9 हो? है ना, ठीक है, मतलब $10 के आसपास का ही है डुरालुडॉन तो। इसको देखो ना। लेकिन रेशरैम भी इतना क्रेजी कार्ड नहीं है, मेरा पड़ा है ऑलरेडी। देखते हैं एक बार, 172/195। हाँ $5 का बिका है, देख महंगा वाला। अरे भाई ले, $30 भाई, 30 और 10 40, फिर से $40 भाई। दोनों पैक में हर्षी ने $3200 का कार्ड निकाला है भाई, दोनों पैक में। बात तो Shit, है bro. भाई ये मस्त लग रहा है, बट ये बात तो है भाई, मानना तो पड़ेगा भाई। competitive part of this entire competition. देयर इज नो वे। Everybody's दोनों में निकल here गए यार। also. भाई दोनों में भी छोड़, दो एक में दो निकल गए। And look, just to kind of wrap the point here about standpoint, I What was is really this, impressed yeah. across the board with all 5 players. भाई I thought that for a moment we were going to get a lot of kind of like the Guagua show. He was kind of a guy that we really looked at, I think, through CDFI. But everyone really came to play yesterday. And I think more impressively, there were a couple of इसका मतलब moments, समझ especially रहे हैं with ना? the respawns, where they had to ice up. A तू lot of नहीं really समझ tight रहा है। hardpoint maps समझ रहा that they हूँ, were ये able to SDK eke है out over their opponents. So I think नहीं तो इसका मतलब नहीं समझ रहा है कि अब हमारा पुल रेट कम होगा। अबे हाँ यार ये भी तो होता A है। bit of a glimpse here at everyone while they are hanging out here, getting themselves ready for match किस्मत number किस्मत की 2. बात होती है यार। But like the rest of our teams, बुरा we मत did get मानो an यार तुम opportunity to दोनों। catch भाई up with यार, ये Standpoint कार्ड before this कितना entire खूबसूरत है weekend यार। even started, to see their feelings and their chances भाई at तीन becoming the next कार्ड top है spot. इसी के नाम। That's डैम right, and I'm really ओ इनका दोबारा मैच हो रहा है, ये वही है ना? 什么畏惧是嗯可能我 नहीं 们 कल हुआ था 这 ये 样 我 क्या? 们增加 नहीं 了， हुआ 我 था। 们本身增加了对爆破模式的就是多样化，然后通过 Garena 就是战队的，我们学习了，就是我们加强了对热点的了解吧。我们队伍的战术与北美战术不一样的话，就会是我们更会偏运营一些，通过一些信息的补偿，会进行一些转点，更快一些。 ए, अपने कार्ड रखे।团队是比较需要去注意的吧，因为我们团队纸面实力看着很弱，其实很强。感谢一直支持我们的粉丝吧，因为毕竟我们从 S5到 S6赛季，其实成绩的话一直都是名在第3，没有说更好的进步吧，所以希望这次不负你们的期待，拿下更好的一个世季赛的名额吧。 बाबा ये है मेरा असली हॉल, जो लिटरली मजाक से हटके लाख रुपए से ज्यादा का Saw right डब्बा there है। from Guagua, he specifically said he feels अच्छे like उसमें सारे वो everybody हैं। is सारे sleeping graded भाई on them मुझे right एक now. डाउट They है, have आपका been नेम learning. प्रकाश I was बिष्ट sleeping है on या it. अंशु Again, बिष्ट? I have no problem putting ये myself कहाँ out से there निकाला and saying है I was absolutely ये wrong. कहाँ चले से निकाला वो ये मुझे इम्पोर्टेंट पता नहीं है, नहीं कहाँ चला। रखोगे वो The इम्पोर्टेंट knee-jerk है। reaction देख to रहा हूँ। looking at how they played देखते through रहना कहाँ CDFI, रखते हैं। looking at their records through Masters and CDFI alike, and then seeing them completely reverse that
here on the main stage भैया against वामू वामू international चिल्लाऊंगा competition, कुत्ता some of which फड़ they've के never के even seen before. So it's really impressive, I think, that they figured out their own identity and they were able to stay on brand with that throughout the entirety of yesterday to come out as a 3-1 overall qualifier. Yeah, definitely a really good proving ground for them yesterday because we saw some strong performances across the board. Teams getting knocked out earlier than I think was anticipated for some of them. So this is massive for Standpoint. But on the flip side, let's talk about Godlike a little bit here, Gil. Yeah, absolutely. Godlike, I feel like they did a great job on their own search and destroy matches. They played it really clean when it came down to control. चलो भाई अब आएंगे ना मजे. See these beautiful scenes from them. You saw yourself, look at those diamonds on his hands. I definitely feel like this team has a lot to prove still. भाई घर का काम कहाँ तक पहुँचा एज? भाई मेरे पास लेजिट इतने सारे कार्ड्स हैं ना ये जो मैं एक्चुअल में किसी को भी दे सकता हूँ. इसमें रेयर भी है और इसमें नॉर्मल कार्ड्स भी हैं, एनर्जी कार्ड्स भी हैं जो किसी को चाहिए होगा बता दूँ. मुझे दे दो. मतलब ये वो नहीं है, बहुत रेयर कार्ड्स नहीं है बट ये ओरिजिनल पोकेमोन के कार्ड्स है, समझ रहे हो ना? जैसे इतने सारे खुलते रहते हैं तो उनमें से ये है. We didn't know because they weren't at CDFI. They were the wild card. They were the question mark in the Eastern region. भाई Godlike का मैच हो रहा है. Let's go. Godlike India guys, India चला दो चैट में जल्दी से. चलो भाई. They pick up 2 brand new guys and they looked great yesterday. So that I think was an elevating point talking about Godlike from last year versus what we're getting here at least from day number 1. Looked really clean. Their flawless record through Indian stage 4 was also matched with a couple of great results yesterday. Well, we got an opportunity to catch up with the Godlike squad as well and talk to जो them a टॉप little bit 16 about टीम्स है what उसमें से कोई ले changes जाएगा. have been made to the team, the benefits of those roster changes, and how they're feeling going up against the top teams in the world. This is my first World Cup. I just turned 18. I feel like there's a lot of pressure coming from the last World Cup because we did not perform that well. This year, we have practiced a lot. We have studied the West. We have a different mindset coming into this World Cup. It's definitely a tough job because out of all the teams from India, you are selected for the World Championship. So I think I have a pretty big responsibility on my back because last year we were not able to make us proud, make India proud, brother. Hard to prove Do it. ourselves, you know, that we You are can do better. this, Godlike. Abhi is the strongest in the team because his sniping skills are quite insane. I like to cheer up my team a lot because I'm the youngest here. You I should, like to brother. keep them together so that we can all have fun. We enjoy, we have fun, we talk to each other, we laugh. When we are down, those things help us to get back up and win it. Last year, when West was doing good and East teams were, I think, surprised from their performance. But I really feel that East teams are very smart. They've learned from the mistakes. This year, I think the foreign team will beat North America because it's not the same as before. The skills are on par with North America. This is the year it will be for the foreign teams. I really want to win the Call of Duty World Championship. That's gonna feel amazing because that's my dream. I wanna give a shout out to my family, friends, and all the supporters from India. Thank you guys for supporting. Thank you for the shout out, brother. We supporting you. I mean, like you said, after the first match, it definitely seems India, all of these teams don't India. bring it to them. They think it can be चलो भाई, anyone outside let's hope of NA, Godlike and I wins. love Come hearing on guys, the सब Godlike लोग in that regard. सब लोग एक साथ अपनी की दो मुझे, मतलब सब उनको दो, अपनी एनर्जी लगाओ सारी. ऐसा स्पिरिट बॉम्ब बना के फेंकेंगे, मजा आ जाएगा. Just saw the Anshuver's video. I have been watching you since 2020. I'm so proud of how far you have come. Limtum Vamu gang forever. Thank you so much, Manaswini. Love you, brother. Love you, guys. Like I wanted to touch on earlier. Vamu, come to Odisha. By the way, my name is Anshu. Damn. I was looking at the stats and yesterday. मैं घर का काम करता कोचा बहुत जल्दी ब्लॉग आ रहा है ब्रो. ब्लॉग डाल लो उसमें देखना. बहुत बढ़िया हो रहा है. If I'm not mistaken, that was takeoff. Godlike it was takeoff, while on the side of SPG was on the map. Love from America. Hashtag Uday Singh. Hashtag Harnoor Preet. And I feel like that's going to be important as we begin to see America the overall जाऊंगा. series and map win. Just saw the Anshuver's video. I have been watching you since 2020. I am so proud of how far you come, Limtum. Vamu gang forever. Other Chinese teams. Vamu gang. They beat up on everybody else. So
that is maybe a point of test here when it comes down to can China just continue to be better than the other regions in the मतलब यार eastern थोड़ा सा side, or will there be वो opportunities तो for है godlike? अब देखिए यार सीधी सी बात है That फॉरनर 4-0 टीम search and टफ तो destroy है is super scary because we've already said हम China's लोग been बस always होप फॉर द focused बेस्ट on कर the search सकते and हैं destroy, but in particular their Godlike hard is point has Godlike. improved Supporting a from massive day one. amount. The only real Godlike. downside here is their control. They have been pretty empty from it, not just on the एक weekend, प्लेयर का but नाम बता दे but गॉडलाइक even में throughout their Learn. Masters and हाँ? CDFI, that was by Learn. far their worst game कौन? mode. So that's why Learn, kind of learn. vulnerabilities Learn. here where godlike can take advantage. You know, will that be an देखा opportunity for them एक to का really नाम step in? We should be getting those vetoes that picks and bans through here in just a moment, which will then अब बताओ, inform all of this उसके information अलावा you guys have been जो मैंने giving बताया। us. अब मैं अच्छा मेरे को भी वही Love पता from था America Bill #Ajay #Hanutri Hostia at the start, it doesn't really favor either team, but तू I और do मैं have a lot of एक focus on ही the थाली के Suns getting चट्टे होते through because SPG loved नाम that अच्छा है ना? won it yesterday, देख and it was पहला the मैच हास्य अंडा में होगा combination coming into this weekend. सेकंड Okay, मैच The फायरिंग search and रेंज में destroy does provide opportunities for godlike. They were 3-0 on slums in their थर्ड season मैप 4. They हमारे didn't से play दिख it नहीं all रहे हैं yesterday, हमारी जगह लेवा but they did play a lot of firing अच्छा वो range वो करे yesterday, वार्म अप and कर they रहे looked हैं really good on it. Oh. So for a team in China, India that you India expect to India be really India good India search, India godlike India did a really India good job India setting India them up for India success India in India map India India 5. And then Let's it go. doesn't really matter where you went because SPG hasn't been good at control, India. but godlike getting raid, super impressive. They were 4-0 in season 4 on it, and they looked really good on it yesterday, Go. Yeah, I was exactly surprised by that. Like you mentioned, control, not their best game mode, but to see raid particularly brings in a big question mark for me, if I'm being honest, in a way, but we'll see how that plays out. To begin with, that Hacienda, I definitely thought that Swasari Summit was actually Parvahi. going to be the first hard point, but this could potentially change a lot. I feel like on Summit, godlike could try to figure out a way, although SPG has been playing really clean. And then to move on to that search and destroy, you know, I want to see a bit of a dust-off, but at the same time, SPG has been so clean. As you mentioned, the map they lost wasn't even search and destroy against the Chinese team because let's go they godlike I think just really quickly, the one reason why that summit gets through is because Dosto, SPG looked so good on Arsenal they need our yesterday. powers, And even okay. though godlike had gotten a lot of मैं भी rehearsal तो on it, power I think थी। they were still kind of threatened by तू what negative SPG energy showed मत दे that they अभी। were able to do on Arsenal. I think this is going to be a really exciting second match of the कल day. कल तूने I mean, vitality को we're हराया moments साले away from figuring out. जब देखा इसने I गेम wanna तब ask you भागी your opinions. होगी You saw that pop up. Let us know in Twitch chat who you think's going to be taking home match number 2. Vote in those polls. Want to see how accurate you've been because Shift had an incredible day. ये क्या कर रहा yesterday. है I did. I had a great day yesterday, and so far, वो क्या कर just रहा kind of looking at what I thought the vetoes would go, I'm doing ऐसे pretty करा well on उसने। picking what the maps were Yeah. as well. अच्छा। I will say though, for this series, I am surprised देखा by तुमने the दिखाऊं maps that it नहीं, really भैया did यमुनानगर as आने well. का कोई प्लान एज क्या पल्स आओ Incredible day. ये देख Polls. वो वहाँ Want देख to रहा see है how accurate क्या you've कर रहा been है because Shift वो had an कोई वो है ये incredible day ड्रिल है मेरे ख्याल से yesterday. I did. I had a great आई day साइड yesterday, करने की and कुछ so far, देख क्योंकि उसने पहले सीधे करा In those ये देख polls. पहले सीधे किया Want to see how तुमने ऐसे accurate किया you've been because Shift had an incredible day. मेरे ख्याल से कोई आई साइड की वो I है did. ये I had a great day ये वो है, yesterday, वो अभी and देखना so उसका end far, कितना कर रहा just kind of लगेगा। looking at what I thought. पर the ऐसा vetoes awkward नहीं लग रहा है कि वो Later ऐसा than हेलो what I कर रहा है और thought, जैसे but जैसे it जाकर could कर still रहा है नहीं, आप ऐसे करो, because of that ऐसे करो, control. आप ऐसे करो। In a way, could be that godlike can take us to at least there. On the search and destroy and firing range, PSG है ना? I was honestly Bye, love you. surprised that they picked it over Tanisha. In भैया a way, OLX I पे भेज thought दो that could किसको be an इसको interaction, but well, with that in किसकी mind, बात है I agree with you. Godlike has an opportunity. तो यमुनानगर if not आने का to कोई win प्लान है it क्या यार अभी easily तो नहीं because है यार it's कोई प्लान not going to be easy. देखते हैं They could even be भाई लव taking यू like लव a यू टू 3-1. हरीश लव यू ब्रो I think that could bounce their way. प्रकाश It's एक्सी definitely थैंक यू सो possible. मच I think looking at this overall, godlike has to take the map 2, map 3. I don't. It's hard to say one way or the other in Hacienda because the results are from 2 months ago when Yes. these teams had last played it. True. Neither played it yesterday. So I like Well, love godlike from in the Indore. 2 and the Love 3. you, love If you. they were to beat SPG, they have to win map 2, map 3, and I think they have to go 2-3-5, and that requires, and I think the people at the spawn are saying, Shift just आज के said कोड्स godlike कब has to मिलेंगे try कभी भी to मिल do सकते हैं ब्रो SPGs. Not super plausible. कल की but तरह I ही think मिलेंगे based लेकिन on थोड़ा the लेट map नाइट pool, I thought the same. ताकि जो लोग काफी देर तक रुके उनको आएंगे ना कोड This is the beauty, though, of when we get to this stage of the competition, when we are doing now the best of fives, because we talked about that a lot in comparison when we were in the Swiss portion yesterday. The best of threes don't have
as much creativity, as much flexibility, right? So this is Come on, godlike, come so on. nice about moving to the next stage, getting more opportunities for this team to go head to head and work on the entire pick ban phase. It's so much more important now. Yeah, I absolutely agree. And it's really interesting from the conversation point of like when you're playing up against X opponent, in this instance standpoint, Godlike has to get this to 5 in my mind, obviously at worst, but the fact is they have to beat them at one of their best overall modes based on what we saw yesterday. So like we get that No game sound, tears of joy, tears of joy, tears of joy, throwing kisses, 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 throwing kisses. Thank you, bhai. Thank you. For the side of SPG, you know, I feel like Godlike could potentially bringing a surprise Thank you. there, and with that, you know, maybe easy off on the side of Search and Destroy that Chinese is so strong on. Yeah, and to be fair, it's gonna kind of keep going back and forth on both sides of the fence here. Devil's advocate, big Godlike in India, 100-point club 2 teams on Hacienda, but it's like, how highly do you put stock into that? Because really, it was only 2 teams in India all season long, and we obviously saw लगा दो पहला गेम, दिखा दो पहला गेम. So like, how lopsided are those results? I'm looking for a lifeline. Someone throw me a raft. By God कह रहा हूँ, जो 40 रुपए से जितने मजे ले जाते हो ना तुम कभी-कभी. To look, you found the lifelines. You found multiple scenarios where it can swing. Love you, Harish bhai. Yeah. Just feel like I'm pulling on the thread of a sweater. It's coming unraveled in front of my face. I don't know. That's what happens when you give Shift extra time. I go off the rails. They just start pulling more numbers, more stats from different seasons. कल तुम चले गए फिर भूख नहीं लगी मेरे को. Did you ever play Roller Coaster Tycoon? Yes, obviously. Did you ever get to a point where it's like the train gets off the rails, but you didn't finish the roller coaster? So it's like it just कुछ टाइम बाद डरने लग जाएगा. That's me when I get extra time to fill on map picks. It's like, yeah, it's going really nicely. But then we get Bhai, off the sorry, loop, but and once there's again nowhere say for love the you. car to go, so it just explodes everywhere. You started with a what if, and what if, and there's no stop. There's no stop from there. It just goes. It snowballs. It's all snowballing. Thank you Yeah, for hanging out अंदर with us, कैसे? guys. We're just having giving the players a few more moments to get themselves set up here for match number 2, making sure that everything is all good at their stations and that they're comfortable and ready to go while you're listening to us talk. And we talked about this a little bit yesterday too. This trophy, absolutely gorgeous. Very large. Have you picked it up? Do you know how heavy it is? I have not picked it up. I'm afraid to. You have? No, I'm terrified. Oh, okay. I don't want to break anything. No. I thought she did. I was like surprised because I'd be terrified as well if I'm being honest. Okay, you know what I'm gonna do then? While we let our players get set up, I'm gonna send it to a short break so I can go up on stage, pick the trophy. You want to go right now? Like we can see you try to pick it up. No, I don't want to embarrass myself. We're gonna send it to a short break, give our players a few more minutes, but don't worry, when we return, match number 2 coming at you. क्या हो गया? पानी पी रहा था यार मैं. ये खा रहा था यार मैं. यार क्या मैं यार तुम मेरे जेब चेक कर चोरी करने का क्यों लग रहा हूँ तुमको मैं? अरे हाँ भाई लग तो रहा है. देखो चैट में चोरी चोर चैट में चोर क्यों चल रहा है फिर? अरे मैंने कहा था प्रैंक करेंगे फ्लीट भाई के साथ. दिखाई दे रहा मेरे जेब में अरे क्या है यार दिखा रहा है. जेब में ये क्या है? ये देख रहे हो, इसलिए कहते हैं गाइस चोरी के लिए भी नॉलेज जरूरी है. सबसे सस्ता पैक उठाया इसने जो 550 रुपए. मेरा नाम लो नहीं तू मेढक का चेहरा, 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 मेढक का चेहरा. Shout out please ये चमकता दिल 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 चमकता दिल. बड़ा का प्राइस का पहले कितने का था? पहले $5 का एक था. ओह $5 मतलब कितना होता है? 500. बट ये देखना नीचे अरे $17 शिपिंग की.
अच्छा रिकैप चल रहा है उनका। मेरे पास कायदे सबसे महंगा जो वो है वो इवॉल्विंग स्काइज। ये सबसे महंगी चीज है मेरे पास। पापा GTR और पॉच 911 GT3 RS दिला दो। शहद का घड़ा 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 शहद का घड़ा। पूरे भयंकर GTR और GT3 RS दिला दो। भयंकर बंदे हैं 5 करोड़ की गाड़ी के हाथ पे पीछे चढ़ गए। मतलब सिंगल भी ना अगर कोई ऐसे बोलेगा कि एक चीज कोई, तो एक आर्टिकल में ये सबसे महंगा है मेरे हिसाब से। तो इवॉल्विंग स्काइज का ETB डब्बे वाला है ना, ये वाला है मेरे पास। $70-80 में मिल रहा है। बट खा तो ये जाती है ना ये चीज। अरे भाई उसमें $17 की, इसमें इतनी प्राइस के भारी हो गया ना। अच्छा हाँ, वो इतना ये था वो। अच्छा हाँ, अब ये और वो डब्बा पूरा जितना का है वो उतने का तो शिपिंग भी है। भाई यार मैच करा दो यार, गॉर्डन दिखा दो भाई। तब तो एक सिल्वर टेम्पल खोल देंगे। खोले तब तक स्टार्ट होने में टाइम है तो। गाइस क्या बोल रहे हो? तब तक कार्ड अनबॉक्सिंग करें। तो कहीं हम प्रीसीजन देखें। ये चल रहा है, हाइलाइट चल रही है। यस 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 यस, हाँ 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 हाँ। आ जाओ। चलो जब तक का गॉड लाइक का मैच स्टार्ट होता है तब तक हम एक कार्ड अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसमें की वो भी नहीं दिख रहा, माउस दिख रहा है। हाँ चलो आ जाओ। चलो तेरा वाला खोलूं? मेरा वाला खोलो यार, अच्छा ही निकलना है। पहले क्या खोलूं, यही ना? हाँ टेम्पस खोल लो। चलो मेरे को 90% श्योर है कि इसके सिल्वर टेम्पेस में कुछ नहीं निकलेगा। सबसे रेयर कार्ड निकलेगा। रुको, मेरे को 90% श्योर है नहीं निकलेगा कुछ भी। अच्छा सीन क्या है ना, सिल्वर टेम्पेस में पता चल जाता है इसको देख के। अच्छा तुम्हें अच्छा कार्ड, अगर इसमें ब्लैक आउटलाइन है तो कुछ तो अच्छा मिलेगा। ऐसा होता है। फिर इसमें रेयर कार्ड ही नहीं है बेसिकली। तो मैं चाहूँ तो लास्ट भी खोल सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, फिर भी तेरी इज्जत रखने के लिए खोल रहा हूँ मैं। अल्ट्रा रेयर निकलेगा, तुम देखो तो सही। वैसे कायदे से TG निकल सकता है, जैसे हर्षी का निकला था ना बट बॉक्स वाला। हाँ हाँ वो निकल सकता है। डार्क एनर्जी, क्लैंग, क्लेडॉल, वर्कर, मर्क्रो, स्वैब्लू, रोटम, पनेरी, ड्रीपी, वैनोनेट और नॉइवर। अरे यार मैंने बोला था ना ये थोड़ा तो है वैनोनेट, थोड़ा सा दिखने का। ना मेरा सारा लक इसके अंदर है, क्राउन जेरिथ में। मेरा सारा लक क्राउन जेरिथ में है ना यार, समझ। वो स्टार्ट हो गया। वो मैच स्टार्ट हो गया भाई। तेरा क्राउन जेरिथ हटाओ भाई। भाई मैच स्टार्ट हो गया भाई। गॉडेल लेट्स गो। गॉडेल 1 पॉइंट हो गया गॉडेल का। ओ भाई गॉडेल 2 पॉइंट्स, लेट्स गो। गॉडेल ने कर लिया।
Yet, how many questions it holds for both of these teams? Is it going to be SPG? 4-4 हो गया point. Oh my God, Trunks Godlike turns guy. around, goes for the fourth now in a row. Come Can on, he do Godlike, it, though? let's go. He's got the Fennec, he's got that shot, he got no clue that he's there. Manages to somehow miss that last shot. But it doesn't matter. भाई निकलेगा यार Control the hallways, get your SMGs forward, make life भाई ट्रंक्स बहुत खतरनाक मार रहा है भाई. AR's beast as soon as your front line starts to drop. Bird, ooh, a little shaky to start, but न्यूट्रिनो भी पहले है. lots of time here for Godlike. Keep your eye on the minimap though. Bottom left side is what we're looking for. Neutrino, who's already got himself an early cruise missile, will use that to get time away from P2. So hold on a second. Godlike gets the full scrap. They won't have full possession of spawns, and numbers will start to falter just as soon as that Pred missile was looking to be the X factor. अबे यार हम लोगों ने ले लिया. Neutrino and Trunks is insane, the amount of kills that they're getting so early on. But as you mentioned, the rotation was not necessarily the greatest. Let's see now the retake as Trunks is बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओ भाई नहीं यार रिलोड चले गया यार. ओ भाई लॉन्च क्या मार रहा है भाई. उसने इंस्टेंट 7 किल कर दिए भी वही खड़े खड़े. What? अरे भाई भैया love you और नहीं लेडो. Holy cow. I mean, are you kidding me? That is a perfect break from Godlike. SPG's trying to do the exact same thing. Throw smoke at the front doors. And Shuvers with Dave, Joe, Ronnie equals shout out them dude. Okay. Moment of recovery here from SPG, but I will tell you, how to play P1 off of a break off into how to break a P2, that is shout out to you gamers official. So you can definitely see the hacienda, even though neither Come on team यार has हटाओ played it भाई. yet this weekend. Godlike जाओ भाई जाओ करो अरे भाई ये तो बढ़िया गन है. Absolutely ripping standpoint apart, has already got an early claw before we even open up the third heart. भाई ट्रंक्स छीन रहा है भाई. उसका ऑलरेडी 16 किल हो चुके हैं, सामने वाली टीम के मिला के 16 नहीं है. भाई अब फ्लैग आने के हां फ्लैग इनको मिल गया. और देखो उसकी वो भी आ चुकी है, मिसाइल भी आ चुकी है. मार 2 बंदे मार दिए उसने. भाई क्या कर रहा है ट्रंक्स. और ये एनालिटर आ गई इनके पास. ले भाई goes for 2, gets taken down, doesn't matter too much because there's his allies to get rid of the remaining enemies in here. SPG is struggling like crazy. Godlike with the भाई अपने कीबोर्ड का नाम बातारो लैंगो. यार ये स्टील सीरीज TKL 17 कुछ है यार, मुझे याद नहीं आ रहा है. I almost wish we had a third cam to show our reactions right now because both of us are jaw dropped, eyebrows back into our foreheads. I mean, this is so clean from Godlike. Oh my goodness. SPG, to be fair, are still fighting. They're clawing their way to keep themselves in the game. It's not getting too out of hand yet. And with a lot of early operators being spent for Godlike, this is where the momentum can shift. You've got 4 operators at the ready here for SPG, rotating over. डबल पॉइंट पड़ रही है बट थोड़ा सा डर तो लग रहा है यार. नहीं यार उन लोगों को मिल गया पॉइंट. Come on brother. आ गया ब्लू का आ गया Godlike का आ गया. Will break the setup near perfectly. Come on Godlike, come on bro. मेरे को बस ना क्या हो रहा है पता है, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है just because अगर तो याद होगा वाइटैलिटी का भी ऐसे चल रहा था. फिर उन्होंने बहुत खतरनाक कमबैक किया था, तो मैं इस बार ओवर वो नहीं कर रहा हूँ. समझ रहे ना मतलब मैं वो फिंगर क्रॉस में हूँ इस बार. तो गॉडलाइक बहुत क्रेजी खेल रही है भाई. चीर रहे भाई लॉन्डे. तो देखना न्यूट्रिनो को देख 13 किल 24 किल बैठा ट्रंक्स यार. Oh my God. Because I'm gonna show you how it's done, and in here they are not only starting great, double से भी ज़्यादा. Come on brother. Oh, very much so. चलो come on Godlike, come on bro. He's now finding himself a little bit of a streak. 3 in a row for him, now getting to 12. भाई सोच Luminosity versus Godlike final. भाई bro. For well over 50 if he keeps this up. Come on. Steps into his way. SPG up to 50 points, still keeping themselves in it, and a good sense of control here around the Fountain Hardpoint. Typically pretty mixy, but SPG have taken away a lot of the map at the moment. भाई थोड़ा कमबैक कर रहे हैं. अब मुझे Godlike पे आ गया. चांस ही मत दो बैंकर. क्लोज कॉल होनी नहीं चाहिए यार. Godlike let's go. That's right. 5 in a row looking for the next victim, but receives a lot of damage. Tries to देख 17 किल तो इसके भी हो रखे हैं. Neutrino gonna say no to that. And SPG finally got a But second Trunks there heal to रहा है भाई. breathe, but that was just not enough. Godlike slowly but surely
getting more and more momentum, just no-balling onto the opponents, getting between 10 and 20 yes, seconds each ले kill. Godlike Floyd ले रहे, Huge let's for them that at go. this point they are over double the amount of SPG holds with 131 10 to only seconds 70 on the side of SPG. And the worst news here for SPG is once again Come on, the Godlike, operator come on, economy bro. has flipped back into favor of Godlike. उसने अपनी Trumps and trophy डाली Neutrino उधर. both have operators at the ready as we rotate to what Come we like on, to call Godlike, Money come Hill, on, where you expect to Godlike. be able to pull 45 plus of the 60 total seconds. And Godlike own rotation. SPG 131, 79, come on, bro. He's number 1 in blue, just finessing around that back. पापा पापा भूख लग रही खाना खिला दूँ Holy smokes! पापा भूख लग रही है खाना खिला दो बहुत बढ़िया इसमें छोटो Absolutely perfect to get out of my face. Swats him भाई away. वैलोरेंट स्ट्रीम Let's go Godlike बढ़ रही है आगे 100 points और 100 points और 100 points more 100 points more let's go come on Gets the clean. Barcelona मिल गया इसको. He hears that someone might be coming up the stairs. Not gonna find any more kills over there. But the side of Godlike पॉइंट तो बढ़ रहे हैं ना अपनी टीम के बस बढ़िया है भाई come on let's go Godlike let's go Godlike अरे भाई इसका क्लॉ आ गया चलो मार दिया with the kill, gets taken down with a nade. Come SPG on, with come on, another Godlike, break come on, bro. inside of this garage area, and they Guys, need game to में try to यार figure guns की something skill क्या out crazy because है if it continues to be ये this nice way, big I'm not too sure if they can recover. There is an opening here for Standpoint. चलो, Godlike कोई are नहीं, very position early on this rotation. बस over वही है वो defenses. लॉक्ड है ना So even though वो they're लॉक खुलते ही वैसे technically हमें first, मिलेगा there's still some हाँ time देखना for this 5th hardpoint नंबर का to बंदा launch. खड़ा है ना उधर Standpoint can try to play a bit of बस सही है recovery, but न्यूट्रिनो Prevail खड़ा goes भाई न्यूट्रिनो ने भी unchecked 23 top किल कर offense. दिए हाँ देखो सबके अरे सबके भाई No, now he's got सबके ही equalizers almost. to ट्रंक्स make sure 29 पे बाकी nobody does 23 the same 23 thing. 27 Oh my लर्न भी लगा पड़ा है भाई We kind of heard from a lot of the NA guys. सब they भाई screamed सब this फेल Godlike रहे team भाई before the ट्रंक्स event started 30 पे that आ गया Godlike ले was भाई looking तो ये राउंड तो nasty, जीत and गए we're चलो seeing exactly Godlike. why right here. And let me tell you, From we've day seen one बोल रहा हूँ moments यार मैं, from day Learn, one from जीत गई ये Trunks, देखो. from Avis, and also from Neutrino. Now Prevail joins the fun, joins the mix. And with 100 points lead, अभी इसके भी हो they're गए gonna देख be अभी इसके भी rolling 23 हुई over, है steaming over Not the bad. opponents. Prevail with another double kill there with the equalizer. Now with the Fennec. And a कौन huge कौन है distance न्यूट्रिनो finds प्रिवेल another ट्रंक्स double kill. लर्न और Unbelievable way वो of playing. You said it yourself. We've heard it from different Bye-bye. teams, different Abyss, players. They Abyss. all agreed that Godlike had a huge opportunity to bring something new into the table, and that's exactly what they're doing here today. Unfathomable. The amount Come of on just यार नहीं overall यार वो बढ़ रहे dominance यार across every 50 element पॉइंट of और the चाहिए game. यार चाहिए, कम ऑन गॉडलाइक यू कैन डू दिस ब्रो Fine. लेट्स गो गाइस कम ऑन सारे के सारे गॉडल 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 लेट्स गो गॉडल गॉडल पॉइंट मिलने लग गए. ओरे 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 मिलेगा मिलेगा भाई मिलेगी अगर ये 50 सेकंड इन्हें रोक दिया तो जीत गए It's not even just the fact that Godlike is dominating. Let's go, let's It's go, going to be the let's go. mental Shit, strength bro. बढ़ले that बढ़ले Godlike बढ़ले is doing ट्रंक्स this 36 because किल पे लर्न there 31 किल पे single भाई, great 40 moment मारेगा लग रहा है anywhere भाई. for Standpoint. शिट Squad's ब्रो gonna try to get things उनने going ले with लिया यार, Sparrow, अभी but उनने ले takes लिया, himself out of the recapture picture. करो. So again, heavy investment हाँ, here हुआ, for हुआ, हुआ, Standpoint, नहीं यार, and it नहीं doesn't आया really come with से. much conviction over the top of the hard point as Godlike is Come on, already come on, primed, Gordon, ready come for on. the break attempt. The setup SPG just अरे getting भाई, lightweight, क्या मारा है outgunned भाई. at this point, just ए, taken गॉडल out को मिल गया. of the picture. And with this जीत huge रहे lead, भाई the setup जीत रहे Godlike ये wants वाला to तो push जीत it रहे out यार as ये वाला soon तो जीत as रहे भाई possible. Only ये वाला तो 28 जीत रहे seconds भाई away ये from नहीं making it हार रहे their भाई own. This first map has been so far a surprise and a good one for the Come on team यार of भाई. Godlike, who now ये मैं कैसे रहा W A M M U W A M M U C H I L A U N G A आपका लैंड F A R K E in their way. The first point, as chaotic as he can be, can provide you 1, 2, 3 points at a time. But those, at this point in time, are just pure gold for the Indian team. Absolutely the case. There's so many ways that Godlike can close this map out. I think first and foremost, Godlike, let's go. Like मिल गया. मिल गया ना अरे जीत गए भाई जीत गए 230 पहला गेम तो जीत गए भाई Annihilator अबे here नहीं over the यार top of the windows. Does get surprised अबे हटा भी with the एसपीजी stairs, को भाई so फटाफट Standpoint will at least कम get ऑन Godlike out of the hard point, करो plus a भाई couple of करो extra kills to allow जल्दी. नहीं यार ये themselves क्या हो रहा है to jump भाई in वो and find 100 पॉइंट again पीछे है key खाली time. अब. Every नहीं second नहीं is going to be a नहीं big नहीं second नहीं here नहीं for नहीं अभी ये Standpoint. क्या हो रहा है भाई 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 यहाँ से कम बैक कॉकरोच करने को मत बना रहे दो. हैं Seconds still left. बढ़िया And बढ़िया more पेलो पेलो damage to the पेलो clock here. If Godlike can Come find on, their way in, SPG but नहीं SPG यार. starting to wake up a होगा, little bit, होगा, finding a होगा, couple of good kills back to भैया स्वीट भाई ये कल जैसा ही हो रहा है यार 21 पॉइंट चाहिए बस फायर फायर कर दो यार कर दो ऐसी हुआ था क्या. Control the opponents as best as he ओए यस यस मिला मिला मिला. favor Yes! of Godlike. हो रहा है ले गए यार हो रहा है Yes, it's हो रहा है only a few
seconds at a Come time. on. That's हो रहा है, that हो रहा है, team that हो रहा है. huge
हो रहा है अभी चेंज हो गया कम ऑन कम ऑन कम ऑन 22 बिलियन के क्लोज आए कहाँ गया अबे उनके पास आ गया भाई उनके सारे बंदे खड़े हैं इस पे यार कम ऑन गॉड लाइक कम ऑन गाइस सब लोग गॉड लाइक स्पैम करो चैट पे गॉड लाइक लेट्स गो गॉड लाइक कम ऑन डू इट यू कैन डू दिस ब्रो कम ऑन ब्रो मेक इंडिया प्राउड ब्रो लेट्स गो कम ऑन गॉड लाइक कम ऑन ब्रो डोंट डू दिस गाइस डोंट डू दिस प्लीज भाई नहीं होगा नेवर गिव अप 16 पॉइंट से नहीं भाई 16 पॉइंट से नहीं भगवान प्लीज भाई नहीं प्लीज नहीं क्या हो रहा है ये कल जैसा ही हो रहा है बिल्कुल नहीं भाई 16 पॉइंट भाई 16 पॉइंट Standpoint can at least guarantee another hard point just by staying in a couple extra seconds. यस मिला अबे नहीं 14 पॉइंट अभी नहीं शिट ऑलमोस्ट कैच अप कर लिया इन्होंने नहीं ट्रंक्स लर्न करो कुछ भाई नेक्स्ट पॉन को दो भगवान प्लीज नेक्स्ट पॉन प्लीज गॉडल के पास है नेक्स्ट पॉन प्लीज गॉडल के पास है उन पे आ रहा है स्पॉन करो भाई उसने वो मार दिया उसको वो एयर स्ट्राइक मार दिया किस पे 2-3 एयर स्ट्राइक भाई वो अपनी स्ट्राइक कितनी अच्छी यूज कर रहे देख रहा है हां ओ गॉडल पे गॉडल पे नहीं करो भाई करो 12 पॉइंट नहीं तो येलो वाले को मारना पड़ेगा नहीं ये गलत हो रहा है भाई फिर से मारो भाई वो एसपीजी क्या मार रही है भाई एंड में नहीं यार नहीं 11 पॉइंट भाई प्लीज नहीं मारो गॉडल क्या कर रहे हो नहीं यस आजा प्लीज और को मार दे आ गया 10 पॉइंट 7 6 5 4 कम ऑन 2 जीत गए भाई गॉडल लेट्स गो भाई What a game, what a game. भाई हार्ट अटैक आ जाता भाई आज हार्ट अटैक भाई इतना सा क्लोज हो गया भाई सोचो डबल से 220 और 100 से सीधे 220 और 250 भाई हार्ट अटैक आ जाता भाई थोड़ी देर पहले कम बैक कर दिया था भाई हार्ट अटैक आ जाता कम ऑन ब्रो बस 2 गेम और जीतने बस 2 गेम और 2 गेम और भाई 2 गेम और खत्म कम ऑन ब्रो भाई टर्न से 40 पॉइंट मारे भाई डैम ब्रो कम ऑन ब्रदर्स अपोनेंट्स आर प्रो चाइनीज वही मैं बोल रहा हूँ भाई चाइनीज लोगों को मोबाइल गेम में हराना इज लाइक बहुत बड़ी चीज भाई बहुत बड़ी बात भाई हार्ट अटैक आ जाता मेरा दिल रुक गया था भाई 2 सेकंड के लिए पता है तेरे को ऐसे हो गया अटक गया था मैंने कहा भाई क्या इंटेंस गया ये ऐसा क्लोज गेम नहीं देखा हमने कल नहीं देखा उसका वाइटैलिटी का ट्राइब का भयंकर यार इतना सा बच गया था मेरे को लगा जीत गई वाइटैलिटी यार And yeah, well, I mean, for the side of Hacienda, I mentioned how Godlike I felt like had a better fighting chance as in comparison to Summit, which in a way I feel like played off in their favor. Now, we're gonna be moving on to that search and destroy, in which, as you said and you were questioned, oh, spike plant wala hoga agla. Come on, yaar. But I'm not sure. I feel like भाई ट्रंक्स ने क्लॉ से तो क्या मारा था भाई क्लॉ ले आके फिर दिया था भाई बंदों को because we've seen it already. Godlike really outstanding. भाई देख रहा मैक्लेरन रोल्स रॉयस खड़ी है बाहर. It was not one, not two, but everybody that in multiple situations just step up to the plate and showed how to defend his allies with a huge way of playing. Now S&D. उसको देख रहा है गाली गलौज कर रहा है. There's definitely an even situation for SPG. Chinese player like क्या बोल रहा है exactly what ni hao don't. I said that there was a potential 3-1 opportunity for Godlike, but India will win bro. Let's go. This game,
भाई इंडियन विल नहीं, इंडिया को जिताएंगे हम भाई, लेट्स गो कम ऑन भाई। वो देख ट्रंक्स ने देख 46 भाई। तू वो छोड़ यार, पूरी गोडाइल की जितनी भी वो है लाइनअप है वो पूरे ने 40 मारे और टॉप फ्रैगर देखो। हाँ और वो छोड़ भाई, लेकिन इन लोगों ने एंड में बहुत संभाला है ब्रो। भाई कमबैक कर दिया था, एसपीजी वाले ने ऑलमोस्ट कर दिया था भाई, हार्ट अटैक दिलवा दिया था एसपीजी वाले ने। प्लेयर तो है भाई एसपीजी में, मानना तो पड़ेगा भाई। बहुत तगड़ा खेला, बहुत तगड़ा खेला भाई। वैलोरेंट स्ट्रीम करो प्लीज यार, थोड़ा हाथ सेट नहीं हो रहा यार वैलोरेंट में, पता है मैं असेंडेंट 3 था, अब मैं असेंडेंट 1 आ गया हूँ और ये 2 आ गया ना, तो सही है। कोई रेना इतना अच्छा खेलता है, क्या कर सकते हैं। खेलता हूँ भाई, मैं खेलता नहीं हूँ। मेरा असेंडेंट 2 का रैंक अब तक ना होगा उसमें, इतना ही बोलूंगा बस। मैंने नहीं हगा है, मैं था उसमें टीम एमवीपी भाई। क्यों था मैं? जब तू असेंडेंट 3 है तो मैं टीम एमवीपी कैसे हूँ? नहीं तुमने किसी को इनवाइट कर दिया, तुम्हारी गलती है, नॉट माय फॉल्ट। क्या मिरेकल है? ये दोस्त नहीं बॉट है दुश्मन भाई, लिटरली बॉटम फ्रैग करा कुत्ते ने भाई, उसके बाद ही किक कर देना चाहिए था। फिर 3 ने बोल के 4-0 defeating even one of his regional teams, that being Q9 yesterday. Come on bro, 2 और जीतने। जी पे बता दो, क्या मैं अपना गूगल पे बताऊं? मेरा गूगल पे लिखो GTR दिलाम दो प्लीज @UPI। मजाक कर रहा है भाई, कम ऑन यार। मतलब मेरे को ना सुपर चैट में मजा आता है बस कि तुम लोग करते हो वो सब है, बट तुम हमेशा से बताता हो कि मेरे को नीड नहीं है यार, मतलब सुपर चैट इन सब चीज़ों की। तुम लोग मेरे लिए जितना करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे लिए वो बहुत है यार, बहुत ज़्यादा। तुम लोग अभी बैठ के स्ट्रीम देख रहे हो मेरे साथ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा। जब मेरे को ज़रूरत थी तो मैं तुमसे सामने से बोलता था कि भाई सुपर चैटे मारो प्लीज़, आई नीड दिस, मेरे को ये खरीदना है, हेडसेट लेना है। पर अभी है भाई, तुम हो, भगवान जी है, मेरी मेहनत है, अभी बहुत है ब्रो। तो अभी तुम लोग मस्ती के लिए करते हो, जैसे ये मेंढक का चेहरा ये सब, तो मजा आता है। और जिस दिन जरूरत होगी उस दिन बोलूंगा भी, ठीक है? ऐसा नहीं कि वो होगा, जिस दिन जरूरत होगी तो खुद बोल दूंगा कि भाई करो यार, आई लव यू। भैया COD मोबाइल का गेम प्ले दो यार। अभी तो हम लोग ये वर्ल्ड चैंपियनशिप देख रहे हैं, बाद में पक्का। मेरी सुपर चैट नहीं जा रही है। होता है मेरे साथ। It is just a map that you have to know how to play in. That both of them were so unsure, maybe on that hard point there. They went with that selection for the map number 2 for the game. I think you're absolutely right. It felt like just looking at the videos that this was a map set that was mostly determined by we're videoing out our worst map, and kind of just again painting it out for all of you big time map selection nerds out there like myself. When you play a best of 3, you have the opportunity of videoing your मामू कभी कर्नाटका साउथ में आओ प्लीज भाई। मिस्टर संडी, तुम्हें प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है भाई, कर्नाटका ऑलरेडी मेरे उसमें है भाई, तुम समझ रहे हो, मेरे विश लिस्ट में है कि मुझे यहाँ जाना है भाई। तुम लोगों का कार सीन बहुत क्रेजी है भाई, मुझे तो आना ही है गाड़ियाँ देखने के लिए भाई। मैंने एक जने को देखा था, उसने अपनी होंडा सिविक ऐसी बना रखी थी ना, मजा आ गया था। होंडा सिविक भी छोड़ो भाई, उधर क्या क्या नहीं चलता है भाई कर्नाटका में, मतलब साउथ में middle there with a firing range that hopefully we'll be moving towards soon. I gotta say, I really love the KDAs being behind them. वामू कभी कर्नाटका साउथ में आओ PLZZ। Understanding on how the team as a whole has been doing, but of course individually over there. And लव यू टू भैया, एक पुल मेरे नाम का हो जाए नेक्स्ट। The game, the match. We also saw the overall kill death assistant ratio. लव यू भैया, एक पुल मेरे नाम का हो जाए नेक्स्ट। SPG had a considerable lead on the kill. जोहेब कमल भाई, तुमको 1000 की सुपर चैट करनी पड़ेगी। Capitalize on hard point. मजाक कर रहा है, मजाक। Think that could capitalize on control. And now with the firing range being this toss-up map, SPG अभी स्टार्ट नहीं हो रहा है, तब तक हम लोग वो कर लेते हैं। खोल दे, हो जाए देव का क्राउन जिनित खोलते। आ जाओ, चलो आ जाओ गाइस,
इट इज पोकेमॉन टाइम। अच्छा खुलना भाई, भाई इज्जत रख दे भाई। मेरा वाला सारा इसका लक ना जो टेम्पेस्ट का था, सिल्वर टेम्पेस्ट, इसमें गया उसमें जाएगा। इसमें गया, देखो तगड़ा कार्ड निकलने वाला है। अरे भाई ब्लैक आ गया, तुम कह रहे थे ना। नहीं, इसमें सारे ब्लैक होते हैं क्योंकि क्राउन जिनत में पुल रेट है ही तगड़ा ना। अच्छा 4 चलो। पीछे से तगड़ा कार्ड है, कुछ अच्छा है। स्टील एनर्जी, बिशार्प, लूनाटोन, रेस्क्यू कैरियर, स्टारली, स्विच। जिसको पता नहीं है, बाय द वे क्राउन जिनत है 1500 रुपए का डेक है ये। खाली जितने कार्ड हमने खोले ना ये 1500 रुपए के हैं। अब इसमें कुछ अच्छा निकल जाए तो तुम्हारे पैसे वापस होंगे, वरना फंस गए। लव डेज ग्लव्स। अरे भाई क्या चल रहा है भाई। ग्लेसियन और पीछे $5 इन द हैंड ब्रो। भाई ये $5 है भाई। तुम समझ रहे हो $5 मतलब कितना? 400 रुपए 500 रुपए तो ये हो गए भाई। ग्लेशियर लग रहा है ये भाई $500 का तो ये हो गया, मतलब 500 रुपए बोला था ना यार मैंने। भाई यार दोनों लग, देखो 2 कार्ड निकल गए यार, एक सिल्वर टेम्पेस्ट का, एक क्राउन जेनिथ का। भाई चेक करते हाँ, कितने का है। चेक करो इसका, चेक करो भाई क्या निकला है यार, क्या लग रहा हो भाई इसको चेक करते हैं कितने का। She'll find a way to get that thing. She might even squat rep it पहले or इनको something. ना I don't know. सामान दे दो थोड़ा सा। That'd be amazing. That would be amazing. And भाई मेरे को लग रहा है people तगड़ा है, that पता है are तेरे at को। home, hope you क्योंकि all पहले तो ये have फुल आर्ट enjoyed है what देख, we've seen इसमें so कोई far. कट वट That नहीं ना, जैसे इनमें देखिए देखिए कैसे कट है। तो ये भैया पहले तो फुल स्लीट आर्ट है। शर्ट हुडी भी निकल सकते हो। फायर फायर नितांडो दलाडो सांप सांप। Very inclined for God मैं like दिला that दो first. We saw SPG pick it up. भैया at the end, स्वेट शर्ट not हुडी भी quite निकाल enough to सकते हो। win it. अच्छा नन्नू भैया अच्छा शाउट आउट ददू भैया प्लीज प्लीज। And as we begin यार to मेरे see को बस डर players लग रहा है just अंदर से कि try to लोग scream लेंगे या at नहीं each लेंगे। other, then तेरे को I क्या don't लगता है? remember his name, the one in the middle here for पक्का God, like, बस just मुझे ना अपने try to cool things कैसे off, you बताऊं, know? मुझे बस अपने We won already. Of course we go 5000 but not too high. 5000 Not go एकदम overly डाई हार्ड crazy, फैंस 'cause I चाहिए can also play जो against खरीद your ले। team. फिर वो 5000 को देख के और लोग खरीदते हैं, वो चीज होती है। अब सीन क्या होता है कि जैसे मैं जो पहले 5000 को दूंगा ना, तुम मानो ना मानो, मैं इस टाइप का बंदा हूँ कि मैं लॉस में बेच दूंगा उसको, लेकिन तुम्हें महंगा नहीं बेचूंगा। Come on. SPG वर्सेस गॉडलाइक डिफेंडर है। ओके ओके डिफेंडर है। No ये देख, one वो वाली to स्किन कितनी say अच्छी लग रही है no ना, or इसमें। nothing about that. ये वाली भी There we अच्छी है, go. बुरी नहीं है, Everyone बट still pushing forward. Bombs being planted. Check Learn करेंगे तब तक side से। about to try to get that kill and does so with a double before getting chunked by Juan. A great interaction there for Learn and even prevents the bomb from success on that interaction. That is the biggest point of all that. It's फिर surprising. नॉर्मल में देख, नॉर्मल में Action though. तुम्हारे भाई की बात है यार, बोला था ना मैंने। $60 वो PSA 10 भाई मेरे कार्ड लोडर का है, ये तो कार्ड लोडर में जाने वाली चीज है यार। Fighting Tron for the first, then over the top of the bomb site time. No issue whatsoever as God like take the opening defense. Yeah, good answer on the दो side of डेक में Godlike अच्छे because पुल they निकल were गए। a little bit late to the party. दो डेक में अच्छे पुल निकल गए, अब आपके इसमें क्या निकलेगा? Bravo and SPG with a आप ही bit बोलते of ना पुल रेट खराब हो weird जाता है। play over there. दो में trying निकल to गए supply नारो। some work, but Bravo was just not there. यार अपनी किस्मत दिखाओ यार, तुम्हारी किस्मत Gonna कैसी try है? to step it back, you know, हाँ। make it calm, try to chill for a little bit. ओए भाई, सपनों में बाहर आती हुई भाई ये एनर्जी कार्ड अगर PSA 10 निकला तो ये $27 का है। तुम समझ रहे हो, मतलब 4500 का ये है, और ये तो सीधे $50 से ऊपर का है यार। That will be enough to provide first blood. किस्मत देख रहे हो by मेरी? means of the scope. Neutrino once again pulling over through mid sandbags. Gonna make sure there's no rotation through, but gets caught. भाई यार देख की किस्मत तो Zuan बहुत just kind of तगड़ी है pushes right into भाई। पहला गेम में गॉडलाइक भी जीत गई। ओ लेट्स गो भाई भाई चल रहा है भाई, आज दिन है हमारा। चलो दिन है भाई। गॉडलाइक पूरा गेम जीतेगी। taking their time to make sure फ्रॉम डे 1 बोल रहा हूँ यार मैं, गॉडलाइक जीतेगी। कब से कल से कह रहा हूँ मैं तो। बाबा Maybe a little too सुनो,
late in a sense पांच for पांच planning बंदों that के नाम bomb. बता दो Maybe if they फटाफट would Learn, have planned earlier, that Abhi's, clock would Trunks, be more Learn. detrimental on the side of और एक Godlike, but Learn, Abhi's, who knows right Trunks, now, 3v3, they gotta figure something चलो, out on the चलो, side of सोचो। Godlike. They Learn, got 30 अभी seconds ट्रंक्स left, और and to the thing यार गॉडल है यार, is दिल पे है going भाई, to दिल be से गॉडल है यार। Bird, if I'm not mistaken, क्या from था नाम? न्यूट्रेनो और वो है, Alert इसको बोल रहे जो प्रेवेल definitely को was ready for that interaction, turns around, does the heal, and immediately Day one pushes यार, for भूल जाते more. कभी भी ना। That's a double full learn. Oh, there's so डे वन many से birds फैन है बट alive. नाम भूल जाता प्लेयरों Can के he do it? No, डे वन से he फैन है भाई cannot. What a way to do it yet again. Godlike reaction speed is just wild, man. और अब का आज का वीडियो देखकर आंसू आ गया। थैंक यू सो मच मिस्टर सैंडी, लव यू यार। बहुत मेहनत लगी थी, यहाँ देव बैठा हुआ है ना, इसको पता है, हर्षी को पता है कितनी मेहनत लगी थी वो वीडियो बनाने में। That little snap-on closet is not easy to do, and he does it cleanly. मैं कभी ना तुम्हें उसका स्टोरी टाइम बताऊंगा। तू था मेरे साथ, रोनी था, रोनी था। जब हम लोग गए थे हमें गुंडों ने पकड़ लिया था। हम लोग क्या चैरिटी के लिए जा रहे थे, एक्चुअल में हमें गुंडों ने पकड़ लिया था। एक्चुअल में मजाक से हम लोग यूपी में था, हमें लिटरली गुंडों ने पकड़ लिया था। मैं कभी कहानी बताऊंगा तुम्हें, बहुत बढ़िया कहानी है। No one's looking for this at all. It could begin to be problematic for SPG as they have now got themselves pretty much surrounded on many different angles. Look here at Prevail, and it's actually Abyss with that sniper to take the first blood. Yes, they plant the bomb, but what comes next? That's the biggest question. That's where they've been failing a lot on the side of SPG, which is quite surprising in my opinion. They're completely isolated. SPG are getting picked apart one by one. What? Juan able to find himself a bit of an क्या exit. दो मारे भाई? Was Suwan, who was looking to play off of a flank. It does भाई निकाल है क्या बंदा? 1v2 हो गया। 1v2 है। Oh, let's go. Godlike भाई उसने 1v1 पे पहुंचा दिया था। Stuck for the defuse. So just enough of a bodyguard gets played, the defuse gets hopped immediately, and the split-second decision from Godlike, their tempo, their pace at making these critical moment decisions has From worked day one out बोलते now आ रहा हूँ मैं, 3 Godlike rounds in a जीतेगी row. भाई। Picking up, do I push for the kills as they did on the first two? Although I just distract and try to defuse. Oh भाई। ओ भाई ये क्या नेट है भाई, परफेक्ट एकदम। There's one. There's a double force. Hey, 2v2. ओके 1v1 अरे जीत गई भाई। ये क्या हुआ? 5v5 हुआ। ये तो क्लीन ऑफ था भाई, ये तो क्लीन ऑफ। रे क्या फास्ट में चल रहा है गेम में। 3 राउंड और जीतने गॉडलाइक ने बस 3 राउंड और। Here to stay, and ladies and gentlemen, SPG are continuously getting outplayed now, not only on यार मेरे को पैसे उड़ाने का मन कर रहा है। Godlike is having it their way. बाय द वे जिसको भी नहीं पता है आज हम लोग कोड देने वाले हैं जिसमें तुम लोगों को 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स मिलेंगे। समझ रहे हो? कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में तुम 5000 पॉइंट्स डाल सकते हो, वो वाला कोड दूंगा मैं तुम्हें। मेरे को कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ने खुद दिया हुआ है कि अपने सब्सक्राइबर्स को देना, तो जिन्हें सब्सक्राइब नहीं करा कर देना, अभी दूंगा थोड़ी देर में, कभी भी मैं दूंगा। Long flank sniping, trying to open up space around the back. Prevail just waiting for a little bit of assistance. Can he bounce this nade right into Guagua's face, right over the top? It doesn't quite hit. Here comes the chow though. अरे भाई क्या निकल के मारा है यार। But no, not enough. अरे पीछे से बैठा था। चलो कोई नहीं। Tried his best bro। कोई बात नहीं, बस कमबैक मत देना। बस कमबैक मत देना। Finally managed to do देख अभी इसको लग गया है भाई 7 किल। and get the first point going their way. I do got a question. What's up with Bird? What's up with that donut? Donuts are not good for birds, and that's something that needs to change ASAP. Because SPG has been suffering as a team, but having a weak link is not going to help whatsoever. Another round where SPG are going to kind of bide their time off of their break off. भैया शाउट आउट दे दो भावेश के Wow! नाम प्लीज Shot! लाइक। नेड मार दिया अभी इसको भी ने। Doesn't like the look of his position. Tries it back over towards trailer where Suwan was waiting. Now SPG with smoke covering. They can make their way over. Keep your eye on Trunks. Number 3 in blue. Gordon, come on, you can do this, bro. Does he want to try to contest this plant? No. Will instead hold his ground. भाई अभी इसने पहला किल तो बहुत तगड़ा निकाला है यार। Neutrino and Learn, the two that need to try to supply some reinforcement. And they're still waiting to see if anyone's lurking behind this play. But the post plant. ले भाई निकाल भी दिया न्यूट्रिनो ने पीछे से। बढ़िया। ओ भाई अगर ट्रंक्स खींच देता ना इसको मर जाता है ना? कम ऑन नाइस न्यूट्रिनो। 3v2 अबे यार ट्रंक्स को पेल दिया वहां। बढ़िया 2v1 1 2v1 टाइम। अरे ले भाई न्यूट्रिनो ने निकाला है ये।
ये वाला राउंड नीटूनो का है क्या भाई। प्लान किया पीछे से? नीटूनो ने प्लान करके सबको ले गया भाई पीछे से। बढ़िया जी भाई 2 राउंड और 2 राउंड और। Come on bro, you can do this godlike, come on. Nonetheless, and a 5-1 lead as we flip spawns in favor of a godlike who are so ready to take this advantage even deeper in their way. But देख लो नेट कितने परफेक्ट जा रहे हैं। वो देख भाई को साइड में घुस रहे हैं नेट। लाइन अप है उन पे। अब अटैकर है godlike। देख वो रोटेट कर रहा है देख। हाँ वो पीछे से जा रहा है। पेल दिया नाइस। 4v5 कम ऑन। अबे प्लांट करते ही मार। यार बढ़िया पीछे से बढ़िया। नाइस है 4v2 4v1 वो स्नाइपिंग कर रहा है वैसे भी। अब मुश्किल है, अब वो जाके वो थोड़ा करेगा, डिफ्यूज थोड़ा करेगा। मार भी लेगा तो डिफ्यूज नहीं कर सकता ना। ओ मार दिया भाई, पैर ही चीर दिया भाई ट्रंक्स ने। एक राउंड और। लेट्स गो गॉडलाइक। भाई हो रहा है भाई एक राउंड। कम ऑन ब्रदर्स। भाई मेरे को नहीं पता वाइटैलिटी अभी भी गेम में है कि नहीं है। हमने मैच तो नहीं देखा ना वाइटैलिटी का। वाइटैलिटी अभी भी गेम में है कि नहीं है पता नहीं, बट इंडिया से तो अभी गॉडलाइक ही है भाई इसमें। आई होप गॉडलाइक ले भाई। ट्रंक्स ने निकाल दिया पहला किल। क्या शॉट था वो। ये टाइम बहुत क्रेजी खेल रहा है भाई। शिट ब्रो, उसने इंस्टेंट 2 स्नाइप करे। 3v4 बट ठीक है अभी 3v4 ही है, डुएबल है। कम ऑन बस अभी से एक निकाल देना। बर्ड का पहला किल आ गया। स्नाइपर अभी खुली इसकी स्नाइपिंग। देख लर्न मार रहा है। अरे यार लर्न को 1v3 तो थोड़ा मुश्किल है। स्नाइपर है उल्टा। Tries to clear things out of अरे time. We'll get 3. कोई नहीं एक राउंड निकालना है बस। बस एक राउंड। उनको चाहिए 5 राउंड, हमें चाहिए 1 राउंड। कम ऑन ब्रो। होगा। फ्लीट भैया ये कार्ड रखने से होता क्या है ब्रो, ये बिग टाइम इनके पैसे बढ़ते हैं। सेकंडली तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम्हारे पास इतने प्यारे प्यारे कार्ड्स हैं, और दूसरी चीज कभी तुम्हें सेल करने का मन करे तो तुम सेल कर सकते हो। इंडिया में थोड़ा सा हार्ड सीन है, बट बाहर तो बहुत ज्यादा क्रेजी सीन है कि बाहर तो तुम ऐसे बेच सकते हो। ऐसे यूएसए में यूके में तुम ऐसे बेच सकते हो उनको। थोड़ा इंडिया में भी कल्चर नहीं है, इसलिए मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ। इफ यू हैव मनी टू बर्न तभी लो। जीत गई लेट्स गो बॉयज। एक और गेम बस। एक और गेम जीतना है। स्पॉन वाला जीत जाओ भाई बस। इसके बाद होगा स्पॉन वाला गेम, अगर वो जीत गए तो जीत गए। खत्म। सूरत आओ भैया। डन डन डन। Godlike again, kind of talking about them through. Lead boy, you are my inspiration. Thank you so much, dude. Like there's just not a lot keep working, keep hustling, bro. Because they ran through their region. रिडीम कहाँ करना है कोड भैया? गेम के अंदर ब्रो, गेम के अंदर कोड डालना होता है ना, वहाँ डालो। जहाँ पे तुम बाई करने जाते हो वहीं पे कोड डालने का भी ऑप्शन आता है कि यू हैव अ क्या कहते हैं रिडीम कोड। वो रिडीम कोड डाल दोगे तो तुम्हें 5000 पॉइंट मिल जाएंगे सीधे। बड़ा ठंडा हो गया, नहीं खाया जा रहा, मत खाओ। है? नहीं मत खाओ भाई, तबीयत खराब होने तक का मत खाओ ना। ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए ना, वो ठंडे is starting to come back and bite them really hard because that was domination from beginning to end, almost like we saw. भाई शाउट आउट दे दो भावेश के नाम से प्लीज। लम्मू भावेश, थैंक यू। Trying to get this down in 3. मामू आप मेरे सपनों में आते, बहुत आती हो, एक बार आओ। अबे भाई मैं आती हूँ। तू साले मैं तेरे को बता रहा हूँ बहुत मारूंगा। बहुत ज्यादा मस्ती हो रही है। जिसे 40 रुपए में तुम ज्यादा मस्ती कर रहे हो ना। भैया कल मैंने आपको बोला कि भैया मेरी भी तबीयत खराब है,
खांसी गला खराब है स्टिल आई एम वाचिंग स्ट्रीम। अरे आपने भाई बोल दिया, ब्रो बोल दिया। कैसे हो आई एम अ भैया? गर्ल, दिल से दुख हुआ। अरे सिस्सू सॉरी। अनन्या शेख थैंक यू फॉर द क्यूटी सा मैसेज। देख रहे हो, लड़कियों के मैं नॉर्मल चैट भी पढ़ रहा हूँ और लड़कों की सुपर चैट। देख रहे हो कितना गंदा आदमी है। significant enough to really show itself on the main stage, but they're showing that. And at the same rate, though, the other side of the sword. सीओ टीम का कोड दे दो ब्रो, कभी भी दे सकता हूँ, कभी भी। लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि लेट नाइट बडीज को दूं, मतलब जो थोड़ा लेट नाइट तक रुकते हैं ना हमारे साथ स्ट्रीम देखने के लिए, उन बडीज को दूं, क्योंकि दे डिजर्व मोर ना यार एक तरह से, क्योंकि वो लोग यार रात तक का रुके हुए अपने साथ, तो उनको देंगे यार अपना लक तो दिखाओ। आओ चलो हो जाए यार, फ्लीट भाई का लक, फ्लीट भाई का भी लक देखने को बनता है। चलो देखते हैं बाबा भाई ने, लेकिन अभी तक का सबसे क्रेजी पुल निकाले, हर्षी से भी ज्यादा तगड़े, ठीक है, हर्षी से भी ज्यादा खतरनाक पुल्स निकाले हैं भाई ने दो, ठीक है। भाई ने एक ये निकाला है क्या कहते हैं उसे, ग्रास एनर्जी, और एक ग्लेसियन ही निकाल दी भाई ने यार। भाई इसका वो निकालना पन्नी, ऐसे ऐसे करते रहो, इसमें निकलेंगे, घिसते रहना। तो मैं खोलने वाला हूँ सिल्वर टेम्पेस्ट गाइस, लेट्स गो, रेडी गाइस। अब देख बाबा, इसमें तो पलटने की भी जरूरत नहीं है मेरे को। ये लो भाई, व्हाट, ये क्या है? परसर्कर भी, और उसके बाद ये ले भाई रेडिएंट स्टीलिक्स, और देख भाई ये देख इनॉर्मस भी, अरे भाई ये देख भाई गलेडे भी, जिंक्स कुमाला, अरे भाई ये देख डेलफॉक्स भी, अरे देख परसर्कर भी, दो दो। ये नकली कार्ड है क्या? वही लगा यार मुझे, ये वाले इतने सारे मैंने विदाउट वो करके किया है। क्या चल रहा है? मैंने एक नकली रखे हुए थे अपने पास, यही करने के लिए लग ही रहा था यार। वो कुत्ते जैसी आवाज होगी। और मैच स्टार्ट हो गया, मैच स्टार्ट हो गया। मैं अभी खोलूंगा, मैं अपने वाले कार्ड बाद में खोलूंगा, बट अभी के लिए मैच स्टार्ट हो गया। हम लोगों को प्रे करना है सबको, ठीक है, सारे के सारे गाइस, सब लोग कम ऑन, लेट्स गो। Okay, well, so far, kill advantage in favor of SPG, who has just captured A. That's right, nothing to be done over there. Why, you may ask? Because Godlike was just taken, man. I don't care about it. Let me show you how to defend. देखो इस वाले में क्या होता है ना, जिसको भी कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं पता है, जो खेलता नहीं ज्यादा, तो इस वाले में तुम लोग टॉप पे देख रहे हो, 2 नंबर आ रहे हैं, गॉडलाइक के नीचे 23 आ रहा है और एसपीजी के नीचे 24 आ रहा है। तो वो है कितने रिस्पॉन है, जिसको पहले 0 देंगे वो हार जाएगा, समझ रहे हो? जैसे देखो गॉडलाइक कमबैक कर रहा है, 22-22 हो गए, कम ऑन, होगा जो भी पहले 3 बार जीतेगा वो जीत जाएगा। ऐसे ही 3 बार गेम होगा, जो भी पहले, मतलब 3 बार का अनलिमिटेड हो गया। जान लम्मू लम्मू टू लम्मू मिक जान वाले सुलेमान भाई, लव यू यार। यार एक सुलेमान सर भी थे हमारे स्कूल में, हमें वो पढ़ाते थे। निकला इसका, इसी से भी भाई गॉडलाइक ने लीड ले ली। अबे नहीं, हाँ नाइस नाइस। Finally, they take him down, but I still feel like it's too late. Already a minute and a half has passed. बढ़िया, We saw ले भाई करो भाई, कैंपिंग करो, कुछ भी करो भाई, कोई मतलब नहीं है भाई, ये चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, समझ रहे हो? यहाँ पर जीतना मैटर करता है। दिल टूटना, 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 दिल टूटना। चिचोरा भैया लड़की को रिप्लाई दे रहा हूँ और घुमा क्यों लेने चाहिए दे रहा हो। लव यू यार, लव यू एसएलएस, लव यू। ये कम ऑन गॉडलाइक, जीत रही है भाई, उनके पास खाली 7 स्पॉन और बचे हैं, बट ये वाला ना बहुत ट्रिकी गेम होता है, क्योंकि 3 की लीड बहुत बड़ी लीड दी है, कभी भी खत्म हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल के। लेट्स गो, 5 बंदे एक बार, 4 बंदे, अब थोड़ा टफ है, अब टफ है ना, जीत गई पहला अब टफ है ना। 3v8, लेट्स गो, हो रहा है, लेट्स गो, 2v7, 2v6,
just able to get on in the nick of time. अरे हो रहा है भाई 1v5 ले Let's go भाई 2 राउंड और ये पहला लेके गॉड लाइक लेट्स गो भाई एसपीजी का मोए मोए कर दो गॉड लाइक Great strategy. At यार the कुछ end, खाने के लिए man, बता दिया at हमने the end, SPG need to figure out a way to start Pizza strong खाओगे? and follow through या with कुछ it. और? You cannot always तुम बताओ। be playing to try to come back from an awful क्या खाने का मन situation. कर रहे There it almost happened. It almost happened on Hardpoint. Can they इनको do इससे it पूछने में डर to लगता है ना, begin हर बार with टैक्टिक बोल here देते on हैं the control so far? You lost 3 lives. कुछ भी They लगा लो answer back यार। with a kill from Time, who now finds a double. Time still alive, but Let's man, go. the nade with a war machine. भाई कहाँ है गॉड लाइक के लौंडे कहाँ है भाई पीले दिल कहाँ है चैट में पीले दिल Not too far behind as they continue to defend. लेट्स गो चीर रही है भाई चीर रही है भाई अबे Yeah, very clean from a भाई ट्रंक्स को देखना है यार दोबारा 11 किल पे आ गए ट्रंक्स ट्रंक्स तो पेल रहा है यार literally kicked the door down at B. टुमारो माइट बी लुमिनोसिटी वर्सेस गॉडल भाई मैं चाहता हूँ यार फाइनल लुमिनोसिटी और गॉडल लेकिन हो का रहा है क्या tears of मार joy रहा है by the यार way अबे love from Odisha throwing kisses मेढक का चेहरा भाई 7 किल की लीड में है अपनी गॉडल And SPG have to rotate back, try to get an A defense, but the problem here is you already have players that mid. बाबा देख रहे गॉडल के बहुत सारे फैन देख रहे हैं भाई Get real messy real quick. दिल से गॉडल Team here prevail with the push, with the equalizer. We'll try to spawn trap. ओ ले भाई वो कर क्या रहा था लेकिन बर्ड पता नहीं एक जगह 10 की लीड आ गई ले भाई ये जीत रही है गॉडल लाइक ले जा रही है भाई इसको गॉडल ले जा रही है दोस्तों Plenty of time to play with. Here's Trunks once again trying to aim for that spawn trap in here. Can he do it though? It's gonna be problematic. Oi, Not impossible at a distance. There's Sweet who once again shuts that down. A key player inside of the kitchen. होगा But the lives remain to be in favor of Godlike here. Come on. So much Oh, no, liberty हो here गई। for Godlike to play around. नौ हो गई वो You can continue to try to play for spawn traps. You can try to देखना force the अरे enemy बढ़िया defense अब to नहीं go अब with हो the गया safe अब push. जीत रही है They don't have a गॉडल lot of lives अब to use, कंफर्म है so जीत at रही है this क्योंकि point, एक बार everyone तुम for standpoint has 7 to वाली go एरिया में आ for जाते हो ना these 2 kills. तो जल्दी तुम्हारे देखो गिरेगा सीधी सी बात है 5 पे आओगे 5 पे आने के बाद तो फिर तुम्हारे दोबारा रिस्पॉन है ही नहीं जो मरा वो मर गया तो ये मरा उसको डैमेज नहीं कार लेगी पूरा उसका अच्छा कार ले 4 की लीड है खाली भाई मारो 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 ले भाई शॉट भाई शॉट है अभी शॉट है ब्रो Now the focus can start to ओके move 3 over. अब देख अब चिल है ना यार अब वो 3 ही है देखो अगर कोई भी मरता है तो वो मर गया मतलब वो रिस्पॉन नहीं हो रहा है तो सिंपल है थोड़ा जीत सकती है आराम से गॉड लाइक अबे ऐसा बोल They would have to do रहा some major damage that we've never seen 3v8 है before. Really basically reduce this life cap because there's still पर वही है so गॉड लाइक much हाइड करके block खेलेगी for मतलब सॉरी गॉड लाइक नहीं एसपीजी थोड़ा हाइड करके खेलेगी 2v8 है नहीं जीती है अब मुश्किल है अब मुश्किल है मुझे पता है ले बढ़िया 1v7 तो नहीं कर पाएगा One is the only hope alive in a 1v7. वहीं आ गया फिर से वो There's 1v7 थोड़ा कर लेगा भाई down in here. कितना ही अच्छा प्लेयर हो Pretty safely. 5 ही चिपक गया अरे क्या मारा इसने And a double. 2 बंदे ले गया हो हाँ उसने नहीं भाई पर क्या ही कर लिया अरे बढ़िया एक राउंड और बस एक राउंड और जीतना है भाई भाई और खत्म गॉड लाइक एसपीजी से जीत जाएगी भाई क्या डोमिनेशन एक राउंड और बस बस चौथे मैच नहीं जाना है भाई ये राउंड भाई तुम समझ रहे हो ना अनडिफिटेड हो गई गॉडल इस हिसाब से क्योंकि वो एक भी नहीं आ रही एक भी मैप नहीं आ रही है Gravity vortex gun into a 1v6. Don't love the idea of it, and that is a major tool out of the hands of Standpoint. Now having to kind of do what I call the Omega reverse sweep. They have to get the mini reverse sweep here in the control, plus the full reverse sweep in the series. देख इसमें अभी सा प्रिवेल चमक गए देख Still able to get footing on towards B. अभी इसका उसमें ज्यादा अच्छा नहीं चला ना हाथ जो कैप्चर वाला था इस वाले में प्रिवेल और अभी चल रहा है Even though SPG do put together a really strong break off, this should lead to a B capture. It definitely should be. And this time being over on Bravo, we had a different situation to what we saw in round number 1. Two potential different outcomes. Question mark in favor of SPG. Let's see how that goes. As this time around, they do not have 5 stack on the kill. They are like, all right, we're gonna continue to capture. Yes, but we're also gonna be thinking about what's next and how. मेरे को बस ये समझ में गाइस कोई अगर वो कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बहुत ज्यादा खेलता है मेरे को बताना वो कैप्चर करने से क्या हो रहा है ना मेरे ख्याल टाइम बढ़ रहा है सबसे अच्छा टाइम बढ़ता है कैप्चर करने से पता नहीं ले भाई क्लॉ मिल गया ट्रंक्स को बढ़िया बढ़िया और लीड आ गई इन पे बढ़िया भाई ट्रंक्स को जब क्लॉ मिल जा रहा है तो ट्रंक्स ठीक ले रहा है भाई Wow, they got him spawning in gym. Oh, spawn! Possible. It is. It happened last year. Shout out Zim. I know you're watching, brother. I know all the people that spawn have a cheeky smile.
But the thing about it is that strategy worked out अरे for ओले भाई वो भी एक Almost बचाया यार। all that change here भाई in ट्रंक्स खेल तो रहा है भाई। Godlike with the front line set up over towards A. They've dug into the life gap. ट्रंक्स को जैसे ही क्लॉ मिल रहा है फिर तो छीन ले रहा है ट्रंक्स भाई। 2 की लीड Couple है। of tools still available for them to try to crack the code. यार, Just 3 comes की down to lead हो can गई। they 3 की lead find हो गई, eliminations. Trunks ने Minute कर लिया। 15 on the clock. And Trunks is going to be an issue down here bottom bedroom. अरे भाई दूसरा भी ऑलमोस्ट कैसे यार सोच रहे हैं यार ये? वो स्ट्रेप कर गया वरना वो भी जाता था। Just have to kill off 9 क्या खेल lives रहा or a है minute 5 भाई। on the प्रिवेल clock. को देख 19 किल पे, ट्रंक्स भी आ गया 19 किल पे। हो रहा है भाई हो रहा है। न्यूटन न्यूट्रीना भी आ गया है। न्यूट्रीना आ गया है। अरे भाई सब बराबर खेल रहे यार। वो उनके 5 पे आ गए। अरे ले भाई 4 और भी 12 भाई। मजा आ गया भाई ये गेम देख के यार। जीजी गाइस जीजी कर दो गाइस। गॉड लाइक स्पैम कर दो चैट में गाइस। जीत गई गॉड लाइक। ये वाला मैच तो गॉड लाइक जीत गई। Also another one that was used on the Learn's ले hand, भाई। but it was not necessarily that effective for क्या बोला तू गॉड लाइक नहीं जीतेगी? गॉड लाइक फ्रॉम डे 1 भाई डे 1 मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा है यार। एक बार टीम के नाम बता दो। Ladies and gentlemen, the beginning of the end. बता तुझे पहले अभी बताना दोबारा। ले अब बता। Done it in such a huge Learn, fashion. learn. 3-0. और एक Dave in the HG। world did that happen, Shiv? तू है साल गॉड लाइक में। Holy cow. Literally. Let's go guys. मजा आ गया। गॉड लाइक फ्रॉम इंडिया क्लीन स्वीप 3 बेस्ट आउट ऑफ 5 था। 3 जीतने थे। गॉड लाइक तीनों लाइन से जीत गए। तीनों जीत गए भाई। जीती भाई। डोमिनेट किया भाई तीनों मैच में। डोमिनेशन मजा आ गया। वेल प्लेड भाई वेल प्लेड। बॉयज कितने खुश हैं मजा आ गया भाई। मजा तो आया ब्रो। Well played. Massive showing to a single elimination bracket, and Godlike continues. थोड़ा ज्यादा एनर्जी आ गई गला में दर्द हो be गया on its shoulders, pushing it an extra step. They've at least भाई शाउट आउट दे दो secured प्लीज। नेम उदित कपूर। उदित कपूर भाई शाउट आउट टू यू। for Godlike. नॉटी हो रहा है बाय द वे। लव फ्रॉम ओडिशा। लव यू ब्रो। It has to be recognized. हेलो भैया क्या हाल है आप दोनों के? Labs कैसा है have ब्रो? struggled like no बढ़िया है other. ब्रो। They bumped into so many obstacles last time. but हर बार here कैप्चर today, करने से although 1 मिनट Vitaly इंक्रीज होता है। could not step up to the same अच्छा level, ओके Godlike प्रतीश भाई हेलो डन भैया समझ गया। क्या हाल है एपी दोनों के? हर बार कैप्चर करने से 1 मिनट इंक्रीज होता है। made that loss. तो बेसिकली जो टीम लीड में है वो ट्राई करेगी कि कैप्चर ना हो, और जो टीम पीछे है वो टीम ट्राई करेगी कैप्चर हो, ताकि उनको ज्यादा टाइम मिले कमबैक करने के। ये देखना ट्रंक्स को जैसे ही भाई क्लॉ मिलता है क्या करता है। Sit there and say like, Godlike that performance would have done well versus anybody. भाई ये तो भाई पे VFX चढ़ा दिए ने। Really good hard point. बाय बाय बोल Until it रहा हूँ wasn't there at the end for a little bit, but we'll kind of हैं? forget that. For the first 80% भाई of the बहुत ही map, टॉक्सिक भाई यार सही में। वाह मुझे ऐसी लगा भाई। वो देखो बाय बाय नहीं कर रहे हो। नमस्ते कर रहे हो और बाय बाय कर रहे हो। हाँ भाई बहुत ही नंगे भाई। हर बार कैप्चर करने से नमस्कार 1 मिनट इंक्रीज होता है। बढ़िया भाई। वेल प्लेड भाई। मजा आ गया यार गेम देख के। उनको बाय बाय बोलने भाई। दिल 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 भैया शाउट आउट द प्लीज नेम उदित कपूर। एक कार्ड वाला नहीं चलेगा? नहीं। देख इस बार न्यूट्रिनो ले गया था MVP। ओ भाई लेकिन बहुत क्लोज कॉल था ब्रो। additional बहुत क्लोज analysis, you कॉल were था। pulling on that thread, you showed all of 3-0 the लेकिन ways जीते in 3-0 which है भाई। मजा आ Godlike गया। could जीते benefit 3-0 from से। the entire picks and bans phase, and सो जाओ कल न्यू वीडियो they बनानी है do भैया। that with कल even न्यू more वीडियो तो बनानी है ब्रो। dominant action than you had ever predicted. But, I mean, that was a performance. Did you see the Sleeping is zoom in? something I The cannot afford. intensity in the eyes at the end, the celebration coming out of Godlike. I love everything about it. Pure elation. भैया अनन्या नहीं आन्या, वही तो बोला मैंने। आन्या। The 2-3-5 looked like the best overall maps, but there was क्या था potential वो? for them to sneak out of Hosky into Hardpoint Family because they looked by at X it when they family. played it in their region. Anya Two different Chan. 100-point clubs. But the thing was, Anya. that was such a long time ago, and we didn't know what अब either किसका team was होगा? gonna bring Vitality to का the हो गया तो table मजा आ with Hosky. जाएंगे। And हाँ so यार for फिर तो Godlike बैक टू to दो come इंडियन out, टीम तो play देखने the मिल back जाते end, मजा आ मजा जाएगा देंगे यार। भाई। जो एड्रेनलिन आ जाता है ना इंडियन टीम आती है जब, जैसे अभी गॉड लाइक आई, अगर वाइटैलिटी आ गई तो भाई वो एड्रेनलिन आता है यार अंदर से होता ready है। to go to possibly chase out a championship. And I gotta say, I definitely gave Godlike a true chance of making it onto the next day.
and I was not expecting it to be that way. I said at the beginning I thought of 3-1, and even मेरे ख्याल से आज नॉकआउट हो रही है क्योंकि उसने यही बोला ना, मेरे को लग नहीं रहा था कि हम लोग गॉड लाइक को कल देखेंगे, बट देखेंगे when it came down to those different interactions in the 3 game modes. They had a plan. मारा को आप साई बात करने हैं, बट कर्नाटका आओ एलिमिनेट। डन सैंडी भाई, मिलते हैं कभी भी कर्नाटक आऊंगा तो इंस्टा पे स्टोरी डालूंगा, देख लेना, मिलते हैं। एक बंदा लिख रहा है BLT is already proper in the back as well. He also thought it was going to be a 3-1. Still अच्छा एलिमिनेटेड है वो। हाँ कल को हार गई थी ना वाइटैलिटी, बहुत ही बुरा है यार, वो जीत जाती वाइटैलिटी अलग है, तू नहीं देखता। securing their spot, मैं continuing this 11-12 पॉइंट्स आ रही थी, ये कुत्ता देख लिया था ना बीच में। Thank you so much. स्कोर देखना आया था यार। I mean, you heard it. How do you feel after doing that? I mean, I feel amazing after defeating such a strong team, and now we are in the top 4. We are finally टॉप 4 भाई, कल देखने मिलेगा फिर यूनिवर्सिटी वर्सेस गॉड लाइक। You guys, you didn't just win. You अच्छा अब मैं समझ गया, देख मैं बताता हूँ, 16 टीमें थी, 3 दिन है, कल को नॉकआउट ही था, अच्छा तो 8 टीमें बची, आज वो 8 टीमें मैच कर रही हैं आपस में, तो 4 टीमें बची, अब कल को वो 4 टीमें आपस में मैच करेंगे, 2 टीमें बचेंगे, 2 टीमों का फाइनल। ये है भाई, सब प्रे करेंगे, ठीक है, गॉड लाइक पहुंचे भाई, गॉड लाइक पहुंचे भाई, जीतेगी, जीते भाई, गॉड लाइक 7 हाला पर और हम अब ये ट्रॉफी उठा रहे हैं। Keep supporting us guys, keep supporting us. Hey, supporting you bro, let's go. Well, you knocked him out on the stage. You knock him out on the wall, my man. All you. Congrats. cross. भाई वो कह रहा चला दूं भाई, उसको डर लग रहा है। Let's go, let's go, let's go भाई, मजा आ गया। बात टाइम नहीं है, कुछ ऑर्डर करना है तो अभी करना पड़ेगा, रात को तो कुछ भी नहीं आएगा। हर्षी क्या खाना है? मुझे एक नहीं, मैं मेरे यहाँ ऑर्डर कर दूँ तो। Everyone should be on notice. The thing about it is you're gonna have to prep through what we just saw, and it's just like, how did that happen after a bunch of maps that they hadn't played yet this weekend? भाई वेजिटेरियन होने के भी ना थोड़े नुकसान तो हैं। Vulnerability to being in the Asia sub-region, which we didn't know how good that region was going to be in total because of years past, but for them to come out and kind of showing versus an SPG team that I was very wrong about yesterday. 199 से ज़्यादा का ऑर्डर करो तब फ्री हो। Contenders as China was really elevated with all 3 teams. I would have a hard time. वो खाते यार, फार्म हाउस अच्छा लगता है। अगर मैं VPN लगा के अमेरिका में कुछ ऑर्डर कर दूं कैश ऑन डिलीवरी पर तो जिसके वहाँ ऑर्डर करोगी तुम्हें गालियाँ बखेगा और क्या करेगा। नहीं कर सकते क्या, ऐसा मजा आएगा। शर्म कर लो यार थोड़ी, करना तो नहीं चाहिए। ये एक पेप्सी, अच्छा एक कप सिरप भी ऑर्डर कर देना फिर। ये पी रहा हूँ ना ये भाई, बहुत ही गाढ़ा कप सिरप है भाई ये। वो काढ़ा है एक तरह का, ये काढ़ा नहीं, ये गाढ़ा है, गाढ़ा काढ़ा है। rounding out our top 4, which means for us it's time for another short break. When we return, it will be एक फार्म हाउस, एक मार्गरीटा मंगा दूं for match number 3 on the day, so don't go anywhere. Call of Duty Mobile. थिन क्रश मंगा रहा हूँ एक, और एक नॉर्मल। क्या तुम दोनों का सही है यार, आराम से खाएंगे ना यार, कौन कह रहा आपस के खा ले, क्या हम दोनों का क्या सही है? मस्त खा सकते हो, है ना। मेरे को यही बात बेस्ट लगती है कि ये मेरे घर से 10 मिनट की दूरी में रहता है, अब जहाँ रहता है बस वही बेकार है। अरे देव, रात को तुम्हें कुछ मिला फिर भाई कुछ भी देखो वही लग रहा था भाई, मुझे तो होता है भाई क्योंकि दिमाग में बैठ गया ना। मैंने एक वाइट पोस्टर देखा, मैंने कहा ये मुझे घुर रहा, मैं भी घुर रहा हूँ, ये मुझे घुर रहा, मैं भी घुर रहा हूँ। भाई मेरे को दिल से ऐसा हो रहा है ना अजीब सा कि गॉड लाइक भाई फाइनल में पहुंच गई है, मतलब सेमीफाइनल, बट वही भाई गॉड लाइक जीतेगी, सपोर्टिंग फ्रॉम डे 1 भाई। कल आएगा मजा तो असली अब भाई, संडे की रात को, और बाई चांस अगर गॉड लाइक जीत गई ना भाई, वो वुल्फ का भी आज मैच क्रेजी हो जाएगी, लोअर ब्रैकेट से आ गए। इसका है बुल्स और उसका है, और ऊपर कौन सा है, ये वही है ना अपनी जिंग, हाँ जिंग वाली वही है।
वही पता नहीं है नाम तो। हाँ उसमें नाम दिख भी तो नहीं रहे, इतना छोटा सा तो है वो। चाइनीज में लिखा है वो। नहीं Q9 है वो, अलग टीम है। हाँ जिंदगी भाई बट लुमिनोसिटी ने क्या पेला है भाई। फोल्डर दिखाओ यार, तुम बात है यार फ्लीट भाई। ऑर्डर कर दो फिर खोल हाँ ले। ऑर्डर करो ऑर्डर। यार ड्रिंक्स में इनके पास वो नहीं है क्या, वो कॉफी वॉफी कुछ? कॉफी बीके से मंगाते हैं। तेरे को भी कॉफी पिएगा? ठंडा नहीं ना? भाई वैसे लग तो रहे थे यार नकली है ये वाला लग रहा था थोड़ा ओरिजिनल लेकर के। हाँ नहीं नकली होते हैं, दूर से बदल जाता है और ये बहुत ही हद्दी अरे सच में तुमने नकली वाले खोले थे? हाँ मजे कर रहा था वही मैं सोच रही थी। अरे इतने पुल तोड़ना आता है और पहला ही पुल तोड़ना होता है और उल्टे सीधे कार्ड होते हैं और देख हाथ में पकड़े कितने गंदे नहीं लग रहे। इसको पकड़ो उसको पकड़, देख तेरे को पता चल जाएगा इंस्टेंट। बहुत जमीन आसमान होता है भाई। अरे ऐसे ही पता लग जा रहा है तो रुक जा मैं फाड़ के भी दिखाता हूँ, रुक जा लोगों को कि असली नकली में फर्क क्या होता है। टच करने में पता लग जा रहा है। भाई चोकोलावा फ्री में मिल रहा है हमें। यार ऑर्डर कर रहे हो, चिढ़ा क्यों रहे हो? हमारे तो बंद हो जाता है जल्दी डोमिनोज। यार देखो शहर में रहने के कुछ फायदे तो होते हैं। ओह शहर क्या शहर है तुम्हारे? शहर का डिस्ट्रिक्ट क्या है? हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। अच्छा मैं तो नहीं सहता है। बढ़िया है गुड वन। तुम्हारे एयरपोर्ट पर तो ट्रैक्टर में सामान छोड़कर आते हैं यार चिच्ची। सही में यार ट्रैक्टर से जाता है। ट्रैक्टर से जाता है यार फ्लाइट का। ट्रैक्टर एक पीछे से बग्गी खींच के ले जाता है। नहीं यार इंडिगो में ट्रैक्टर चलते हैं भाई। हल्द्वानी डिफरेंट है यार। मैं भैया कल लीलीविला की स्ट्रीम होगी ना? बता हॉट चॉकलेट पिएगा या कैपेचिनो पिएगा? हॉट चॉकलेट। चलो यार मैं तो कोल्ड कॉफी पीऊंगा। हैं? मन नहीं हो रहा क्या तुम्हारा? मोका फ्रैप्पे। मोका कैपेचिनो एक्स्ट्रा शॉट लिखा है इसमें। वो खाएगा टाको वाको कुछ खाएगा? नहीं टाको नहीं। बाबा क्या लूट रहे हैं ये लोग यार, 2 कॉफी के 450 रुपए हैं। बाप तुम ध्यान देना बस, ठीक है? कॉल का कल चली गया था ना। हाँ बस नंबर लीक ना हो तो इधर को रखता हूँ थोड़ा, ताकि दिखे ना लोगों को, और ना ही एड्रेस लीक हो हमारा, तो थोड़ा बेटर रहेगा। एक स्ट्रीम में दोनों भाई पैदल चलो हो जाए। मोए कर रहे हैं। मोए चलो पुल कल दिखाएंगे LG vs GL होगा भैया। ये बिना बात लौंडा बोल रहा है कल LG वर्सेस GL होगा। वैसे हो सकता है, सही कह रहे हैं। हाँ। क्योंकि 4 बंदे फिर भाई देख हमारी 2 फेवरेट टीमें निकलेंगी, फिर तो एक ना एक तो जाएगा ही। और LG जिस हिसाब के फॉर्म में, मेरे को डर लग रहा है थोड़ा GL की। अरे गॉड लाइक फ्रॉम डे वन। गॉड लाइक तो भाई पूरा सपोर्ट है हमारा, बट वो डर होता है ना यार, फॉर्म जैसा चल रहा है। यार फाइनल में आ जाए ना दोनों। कल कंफर्म है क्या इनका ही होगा? देख कायदे से तो उन्होंने दिखाया था ना ऊपर वो देते। हाँ तो एक टाइम से क्या बोलते, गॉडल ने अगर यूनिवर्सिटी को हरा दिया तो गॉडल ही विनर है। जीतने वाली बात है। टॉप टीम को हरा दिया तो जीतने वाली बात है। देखो फाइनल में होना, सेमीफाइनल में मैच होना है। दिख रहा है क्या? इसको इसके ऊपर रख लेगा। ये नकली वाले असली वाले? नहीं नकली वाली है। दिखा दो। देखो गाइस नकली और असली में फर्क क्या होता है मैं दिखाता हूँ। जैसे ये कार्ड देखो, ये कार्ड दिखने में नहीं पता चलेगा, इवन तो मेरे को तो पकड़ते ही पता चल गया ये नकली है, बट ये वैसे दिखने में देखो तुम्हें नकली नहीं लगेगा, और जब तुम इसको फाड़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। ये देख लो, ये देखो, ये बस एक नॉर्मल से सफेद गत्ते पे बस चिपका दिए स्टिकर देख रहे हो। अब देखो ओरिजिनल कार्ड कैसा होता है। ये एक नॉर्मल कार्ड है, सोचो नॉर्मल कार्ड, ठीक है? इसमें ना रेयर है ना कुछ है, बट स्टिल अगर तुम इसको फाड़ते हो तो देखो क्या होता है। पूरा देख रहे हो? और ये देखो इसमें ना इंक दिख रही है, देख रहे हो? एक लाइन दिख रही है इंक की, इसमें भी दिखेगी। थोड़ा पास से दिखाने की ट्राई करता हूँ अगर दिखे तो। ये देख रहे हो? हाँ
ये देखो एक लाइन दिख रही है इंक की, इसका मतलब होता है ये 3-4 लेयर में बना हुआ होता है, ना कि एक लेयर में। और अगर तुम इसको देखोगे तो ये तो फिर तुम्हें साफ दिख रहा है कि ये गत्ता ही है बस। देख रहे हो, ऐसे इंक की लेयर दिखती है, वो सब चीज़ें होती है। Pokemon is equal to 7 thala for a reason. अबे यार चलो हो जाए, ठीक है करते हैं, चलो लेट्स डू दिस बॉयज। चलो फ्लीट भाई का पुल रेट देखेंगे। देखो मेरे हिसाब से, अरे भाई कुछ तो निकलेगा। ये देख रहे हो, ये जब ब्लैक आउटलाइन में मिलता है ये टेम्पेस्ट तो है? एटलीस्ट एक रेयर तो होता है, मतलब टेम्पेस्ट है, ये टेम्पेस्ट है। ओके पहले टेम्पेस्ट, क्योंकि हमें पता है क्राउन जेनी तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, हाँ चलो इसीलिए वो महंगा है इतना। 3-4 कुछ दिखा ना। हाँ पर कुछ क्रेजी नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ये नॉर्मल वी का साइन होता है जो दिखा था हमें। ठीक है, ग्रास एनर्जी, आर्केन, मेल पढ़ो भैया प्लीज फॉर योर Clan. मर्चेंडाइज। मेल पढ़ो भैया प्लीज फॉर योर मर्चेंडाइज। ओके ओके श्री राम, गारंटीड ब्रो, तुम्हारा नाम इतना अच्छा है यार, पढ़ना पड़ेगा तो। क्लेडॉल, ड्रीपी, वल्पिक्स, इमोल्गा, चिमेको, बनेरी, पैटलेल, और फाइनल कार्ड है वल्पिक्स भी। भाई लग लाइक अच्छा कार्ड है बट बहुत रेयर कार्ड नहीं है, मतलब मेरा पढ़े ऐसे कितना 2-3 सही तो लग पढ़े रहा है, वैसे क्यूट लग रहा है ना, क्यूट है ना बहुत। इसका ना वल्पिक्स वी का एक फुल आर्ट आता है, अगर वो मिल जाता ना, ये भी फुल आर्ट है वैसे, एक्चुअली ये फुल आर्ट है, माय बैड, पर एक वो आता है, कुछ तो होता है इसका उसको प्राइस बोलते हैं। कितना होगा? हाँ? $1 सेंट्स में? हाँ नहीं डॉलर में ही होगा, बट बहुत क्रेजी नहीं होगा, 1-2 डॉलर ही होगा। 033/195 नहीं यार, $5 का कार्ड है का यार। भाई। इसमें तो बिडिंग ही नहीं करी किसी ने, बेचारे को $1 में बेचना पड़ गया। $5 में भी निकला है, बट हाँ वही है, बट वो ये कब बिका है? 8 दिसंबर को। ये है $1-2, $5। नॉर्मल कार्ड है ओवरऑल, अच्छा पुल लेकिन नहीं ये है यार देख आपका। 9-10 महंगे है इसके। अरे और वो 9 था, सोच 10 भी नहीं था, वो परफेक्ट कार्ड नहीं 26 था। का, हाँ तो ठीक है है? मतलब है हाँ कार्ड कुछ तो बात अच्छा है। बहुत बहुत क्रेजी भी नहीं है, बट बहुत बेसिक भी नहीं है। अब आती है बात असली मालटाल की। क्राउन जेनिथ हैं? चलो हो जाएगा इस क्राउन जेनिथ। क्या हमें कुछ क्रेजी पुल देगा? मिस्टर माइम दिख गया सबसे पहले तो। मिस्टर माई 1 2 3 4 चलो भाई अब दिखेगा ना। चलो साइकिक एनर्जी, लक्सियो, डिगिंग डुओ, शेमिन, मिस्टर माइम, सनकन, बिडूफ, कॉफिंग, स्लैंडेड। ये कौन भाई? एनर्जी क्या फायर लग रही एनर्जी है? पूरी क्या लग रही है भाई, देखो मेरे पास नहीं भाई। थी ये फायर एनर्जी, और इसके लास्ट में ओ ब्लैक कुछ तो है। ज़ेरो और अभी Zero. ठीक कार्ड है, मतलब बहुत क्रेजी कार्ड नहीं है, इन दोनों के जैसा तो नहीं था जैसा इनका निकल गया था, बट अच्छा कार्ड है, मस्त है नॉट भाई। बैड भाई। यार पुल रेट तो यार तुमको पता है किसका अच्छा है यार। यार तेरा कुछ ज्यादा ही अच्छा निकल गया, और तेरे बाद फिर हर्षी है, मेरा तो कहीं पे नंबर ही नहीं आया। एक बार देखते हैं फायर एनर्जी कितने की बिकती है। फायर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी सेम ही तो लग रही है दोनों। ना ना ना, अच्छा वो ज्यादा वो है। हाँ इस पर नंबर भी नहीं डला हुआ है। ले बैंकर $80 की बेची है उसने, ये $1.5 में लगाई थी, बिडिंग कर करके $80 में गई है, बट ये सस्ती भी बिक रही है फिर। 3.5 $30, हाँ वही है। फायर लीव एनर्जी इतनी बिक रही है, तो इसका भी एक बनता है टॉप लोडर, क्योंकि क्या पता फ्यूचर में मैं इसको करवाऊँ ना। हाँ पर ये दिखने की बहुत कूल लगती है, सोचना सारे टाइप की एनर्जी हो तेरे पास, ये वाली भाई मैक्स लेवल की, कितनी कूल लगेगी भाई। अभी अपने पास देखो हैंड टू हैंड अभी में ही ग्रास और फायर है, लेकिन देख ग्रास क्या चमक रही है, हाँ ग्रास ज्यादा चमक रही है।
फायर एनर्जी का वो अलग है ना, देख शेड ही नहीं है कोई, इसमें एक शेड है। अच्छा ओके। अभी बस ज़रा और अभी देख लेते हैं। हाँ ये देखो ना, 053/159। बट भाई तेरे और हर्षी का तो क्या ही निकला भाई। ये भी बेसिक ही कार्ड है, $2। इससे किसी ने ग्रेड भी नहीं कराया होगा ये कार्ड तो, अरे करवाया भाई। फिर $15 कुछ खास कार्ड नहीं। यार क्लियर विनर इज हियर। जीत तो गया ये वाला, तो जीत गया भाई। वन पीस में अच्छे नहीं निकले यार मेरे, पोकेमॉन में निकल गए। हाँ ये मानना तो पड़ेगा, वन पीस में इसने आ गया है बट इसने पोकेमॉन में कवर कर लिया। कवर कर लिया हाँ भाई। तो अपने आज अच्छे कार्ड निकल गए, बट बहुत अच्छे टच करना, बहुत क्रेजी कार्ड्स। और एक्चुअल में सबसे फनी बात ये है कि उसमें निकल गए तुम्हारे हैं ये क्या हो रहा है। एक और था ना, इसका नहीं निकला लगा नहीं। तभी सोच चिपक क्यों रहे कार्ड। बट 3 अच्छे कार्ड यार, और दो भी अच्छे कार्ड है। शीश। और हर्षी ने तो रैशरैम भी निकाल दिया भाई। यार लेजेंडरी पे हाथ मारा हर्षी ने, और ऊपर से लूना टून अलग। बट ये देखो यार, ये कार्ड क्या लगता है भाई। ओ भाई नहीं लुकारियो भाई, शीश। ये कार्ड जो लगता है ना भाई दिखने का, क्रेजी कूल भाई। ग्रे निंजा भी पड़ा है क्या आप पे? ग्रे निंजा शायद हो, दूसरे वाले उसमें होगा कलेक्शन में। इस वाले में मैंने पहले ट्राई करता, खाली क्राउन जीवित रखो, फिर मेरे को लगा कि क्या ही करना है, सारे रख लो, क्योंकि मेरे बाकी के भर रखे हैं टीवी। मैं मजाक नहीं कर रहा था इससे। 2 डब्बे दिख रहे हैं भाई, इतने फुले हैं। पुल्स देखने तेरे को, ये देख। ओ इसमें इसके पुल्स है सारे, और ज्यादातर जितने भी मेरे पुल्स थे ना क्रेजी वाले एकदम, वो तो सारे मैंने वो कर दिए। अच्छा जो बॉक्स दिखाया था, हाँ वो मैंने सारे ग्रेडिंग के लिए भेजे थे, तो ग्रेड हो गए। ओ ग्रेड होके आ गए। कितना टाइम लगा? 1 महीना ही लगा ऑलमोस्ट। इसमें कुछ पुल्स हैं देख, कुछ क्रेजी दिखाओ ना एक कार्ड। अरे भाई ये, अरे कुछ कार्ड मेरे को बाद में भी मिले थे ना। प्रकाश सिंह बिष्ट भैया, क्या मुझे प्राइवेट डिस्कॉर्ड मिलेगा? आई हैव GTR का लिए चंदा। पक्का ऋत्विक भाई, डन। हर्षी यहाँ हो तुम? हर्षी हेलो। हर्षी नहीं है शायद यहाँ। ब्रो मैं करवाता हूँ आपका, ठीक है? आपको प्राइवेट डिस्कॉर्ड का लिंक देता हूँ मैं, टेंशन ना लो। चलो भाई अगला गेम स्टार्ट होने वाला है, बस 2 मैच और बचे हैं ऐसी। नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आज ही हो जाएंगे वो भी, नहीं ना? चलो ये वाले गेम के बाद मैं वो दूंगा, कोड दूंगा जब ये वाला गेम I feel proud to represent my country in stage 5 because we will be going up against everyone in the world. I'm representing Singapore, but my team consists of almost every country in the region. We have Singapore, Malaysia, Philippines, and BHYA कार्ड लिफ्ट अप करो, स्लाइड से स्प्रेड आता है। Southeast Asia in the team. This year,
every team नहीं will be लेकिन ready for it. वो है ना ब्रो. I अच्छा decided ओके to join Powerhouse because I saw opportunity in this team, championship mindset. This year we are more prepared for the West team compared to the last year. The West team will be more comfortable because they win for the 2 years in a row. I hope they don't let their guard down. Their play style is very different from the Southeast Asian भाई play क्या style. आदत लगड़ी कल It's से tough for कोपा us गा to रहो विंकिंग match फेस their विंकिंग play style फेस. as well because we can't scrim them when we are at home because it's on different servers. But I would say this year Southeast Asia would like to prove things different. Every team is ready for the weather, ready for the home ground difference, and we're set to win because we have more LAN tournament experience than the West. I know you love me. I know you can. Show it now. And I'll be there. Saying here on the desk proper. One, they play against each other in the East a lot, so they know that we don't get an opportunity to scrim against the West. So there's a little bit of an unknown factor there, but then also kind of the West, kind of calls the West side out. saying, मैं आज से मेंबर पर्क वाली चाट भेजी एच पढ़ लो. Again, when it comes down to these Eastern teams, they've been playing LANs since I don't even know, like a long time ago. Realistically, अंदर कैसा आ जा रही बार बार. particular between Q9 and Powerhouse, खोल के आ रहा है much क्या like इसकी how तरह मैंने अभी the भगाई entirety है. of NA don't have much playtime against them besides ना these हो, world कोई and उठा के ना ले international जाए. tournaments. There's a lot to be said about the playstyles that they have to offer for each other as we take a look at the stats, courtesy of course, I Hold Shift, just giving us all these different maps and breakdowns of what we were able to see just yesterday. Very stark differences as far as the game modes are concerned. 100% though, the 2 times that Powerhouse went to control. Can't bat an eyelash at that. Of course, that map number 3 could be quite integral for Powerhouse. And we talked a lot about how different scenarios could be a potential good outcome for Godlike here between Q9 and Powerhouse. I was looking to find a way to maybe beat those picks, go the way of the Garena team, but I'm just not that sure this time around. I feel like overall Q9 is not only a good team, but a super solid squad to go against in here tonight. I'm just not sure if I see a lack of opportunity for the side of Powerhouse. We saw just how influential and important the picks ban phase was in our last match. What type of an advantage it can give, especially now that we're in those best of 5 series, the difference that can make, and we'll be getting those picks bans through here in just a moment for these 2 teams as well. What are you anticipating out of some of these squads here proper? Well, the last time that these 2 teams did play off against each other on LAN, विकास भाई ऑप भाई गॉड ये देख रहे हो 2-2 ये 3000 रुपए उड़ा के ले यार तो मेरे भी यार चैट में बताते क्यों है यार ये चोर साला. And the way that they were able to win it was quite frankly, taking, I believe it was map 1, 2, and 5. They lost the control. They lost the map 4. The search and destroys did go down on Tunisia, did go down on Express. चोरी सीख रहा है और कह रहा मैं सीख रहा You're हूँ. looking from ये तो बहुत Powerhouse अच्छा काम कर रहा होगा. some time in between then and now. You better hope that all of that work has paid off, that you might end up seeing a few of these maps come back. I was not expecting for us to see a take भाई मेरा फर्स्ट सुपर चैट कल लीली विल्ली हो गए बंदर का चेहरा बंदर का चेहरा. onto search and destroy on meltdown. भैया मेरा फर्स्ट सुपर चैट कल लिलीविल होगी ब्रो. कल को लिलीविल का वीडियो आएगा 1 बजे इंस्टूबिस्ट में. would be control on raid. Proper just touched on earlier. Moving on to the मेन आईडी से मेंबर पर्क वाली चैट भेजी है पढ़ लो. on slums. I gotta say that I don't dislike this कल particularly. लिलीविल होगा ना वेट हो रहा है. और फ्लीट एसएमपी कब मेरा ना मैं तुम्हें जेन्युइन बताता हूँ एक चीज झूठ नहीं बोलूंगा तुमसे. तुम्हें लगेगा झूठ बोल रहा है मुझे. तुम्हें क्यों लग रहा है मैं ये सब पी रहा हूँ. मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई है. खांसी है ना खांसी कम लग रही है ना थोड़ी तो कम. हाँ तो खांसी थोड़ी कम हो गई है बट मेरे को पिछले 3 महीने से इतनी ज्यादा क्रेजी खांसी थी मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ. चलो तुम तो अपने ही और अभी कम लोग ही देख रहे हैं. मेरे को लेजिट खांसी में खून भी आया भाई. मेरा ना गला छिल गया है यहाँ से खांस खांस के. तो मेरी आवाज सुन लो जैसी आ रही है खरखरी सी गंदी सी वो उसी वजह से आ रही है. तो मैं जितनी बार मैं ये तुम्हें समझा भी रहा हूँ ना मेरे गले में अनबेरेबल पेन हो रहा है. मैं तुम्हें बता नहीं सकता. तो थोड़ी आदत होगी गर्म पानी पी ले रहा हूँ बीच बीच में बट मेरे गले में इतना गंदा दर्द हो रहा है मैं तुम्हें बता नहीं सकता भाई. बहुत ही गंदा थोड़ा भी नहीं. Who you think's going to be taking this one? Which team moves on to tomorrow to compete potentially in that World Championship, and which team's journey might end here? It's definitely going to be an exciting
back and forth because both of these teams want to be बात fighting तुम्हें जाना for पड़ेगा that लेकिन title, the trophy that we get to see 5 all मिनट the में time बीके वाला आ रहा here है on stage, and of और course ये तो आ that गया है $1 बाहर ही million खड़ा prize pool. The versus screen comes through. Our players are locked in and loaded. Match number 3. तुझे ले जाएगा बेटा रुक जा This one's going to be exciting. Thank you so much, Glitter. We'll get all of your thoughts after this best of 5. Has the potential to be an absolute doozy. If you अबे वही तो है ask me. किंग This क्यू takeoff क्लब hard तो है point is ये going to be interesting for a lot of different reasons, of course. Through all of stage 4 for this Q9 club roster, they went 1-5. But all throughout yesterday, it was reverse day for them, Gil. They did not. भाई एक मिनट ये जो Q9 क्लब है ये जीता था पिछली बार ये लोग कल जीते थे हारे थे ये तो कल GamerFleet is equals to 7th हाला for a reason अब कौन सा GamerFleet 7 है ये तो 10 है ये तो वेडिया for a reason हो गया We know that here specifically on takeoff, there's plenty of different angles that at a distance you try to cover your allies over on P1, and even on P2 you just try to spray your enemies out of that place. Don't need all the cover in the world. If you have a wall of bullets, you have to try to mosey your way through. Pretty convincing kill feed for Powerhouse as we're still doing the tango here on P1. About 5 seconds left to gain here if you are Powerhouse International, and they will be getting all of that 36-12 at the end of P1. They also have the rotation towards new, so you got to be मेरे तो careful. नाम में 10 नंबर है This is what they were able to do quite ये तो quickly ये वेडिया in best of 3s for a lot of these different hard points. They didn't always have all the setups in the world, but their break potential was definitely something that they could write home about. Shut up. भैया इट्स अनया अनाया अनाया अच्छा अनाया प्रकाश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या अंशु भाई It's only going to help out the affair for Q9 Club to break on in for some time. Now, I do gotta say it, I see quite a shocking stat on the side of Powerhouse, and is the fact that they're getting हेलो फ्लेम तुम आप मेरे को बहुत इन्फ्लुएंस करते हो और मोटिवेट करते हो जब भी साथ होती हूँ तो आपकी वीडियो से दिल गार्डन हो जाता है लव यू सर बस सही बता सही में नहीं ला फिर तेरी जैसी हरकतें चली तेरे को ना कुछ टाइम बाद तेरे को पता क्या होगा तू सब बन जाएगा कुछ टाइम बाद फायर चाहिए onto the next field. The first one is going to be Incendio, unfortunately enough, because they try to contest what was like 5 seconds on P2, they lose complete control आपको पता नहीं है because like I mentioned, Powerhouse क्या उन्होंने दिखा दिया ऐसा Get well soon भैया टेक केयर लामू मेरे को बस इतना पता है कि सोगे किंग रोता है जिस समय पैरी वो जलती है गोइंग मैरी ट्रू वन पीस वॉचर क्या आगे जाके बता दिया उन लोगों ने इट्स ऑब्वियस भाई अबे ऑब्वियस कहाँ है यार लूफी खाली लूफी को नहीं पता और सबको पता है आज फ्लीट भाई को भी नहीं पता है लूफी एंड फ्लीट भाई About 30 seconds of damn near uncontested time here at P3. तो फिर वो इतना गंदा एक्टिंग करता है बेवकूफ होने का सोगे किंग तो इतना शॉर्ट आउट बजाता है तो वो उसका वो है ना उसके साथ उस टाइम हुआ क्या था पता है अच्छा वो अनकॉन्शियस में मारता है ऐसा उस टाइम क्या हुआ था उस सबको लूबी ने अपने क्रू से निकाल दिया था लड़ाई हो गई तो अब उसको अपनी गोइंग मैरी को बचाना था उसको पता लगा रॉबिन का क्या सीन चल रहा है तो मास्क पहन के आया जैसा कैरेक्टर दिखाया यार तो बहुत ही गया गुजरा कैरेक्टर लगता है यार बस उसको ऐसे बनाया है ना बट जब कोई तो मूवी देखोगे तो मूवी में देखना कितना स्ट्रांग वो करता है मतलब ऐसा नहीं है उसको वो आएगा अच्छा टाइम आएगा टाइम आया मेरा गल बस दीना तेरी अल्लड़ा दे यारियां दे बीज कर दी प्रकाश इक्वल टू 7 थाला फॉर अ रीजन तुझे जो नहीं पढ़ना होता वो क्यों पढ़ता है तो हमेशा किसी को पता नहीं है तो यार तुम लोगों को मे भी देव के पापा का नाम भी नहीं पता होगा मैं बताता हूँ GamerFleet भैया क्या आदत लगा दी है कल से चौपा चौपा गा रहा हूँ To find 4 in a row. It's going to be
good enough for get themselves some scrap time, बहुत ज़्यादा but भाई not यार enough to completely combat it against the lead that Q9 have accrued for फनी themselves. तो ये है कि मम्मी ने जब टोपी पहनी थी मम्मी सही में टोपी चप्पल लग रही थी Nine, but I feel like, you know, way Powerhouse has been just falling through a Get few well soon mistakes भैया, that take they care, eventually लम्बू do लम्बू fix, टू and because of सैम। that they haven't fallen too far behind. But they क्या आप keep मुझे बहुत not allowing इन्फ्लुएंस themselves करते to हो, constantly मोटिवेट keep करते doing हो, जब भी mistake सैड after होती हूँ mistake. तो We आपकी saw it वीडियोस earlier से with the दिल side गार्डन गार्डन हो जाता है। लव यू सर, the side of SPG, where they were trying थैंक to यू constantly थैंक fix यू। their issues क्या instead करुणा of करुणा आर्या, beginning थैंक यू with सो a मच good लम्बू। start. Here, स्ट्रीम Powerhouse के बाद need मेल to को make पढ़ो sure भैया that प्लीज, they डन are डन on डन their ब्रो, A स्ट्रीम के game बाद from now पक्का, on, or else अगर they're मैं just बेहोश नहीं हो constantly गया going स्ट्रीम to के be बाद तो। close but not quite there in the lead, as we continue to see Q9 inside of that kill. क्योंकि हम लोग 2:30 बजे There's तक the तो स्ट्रीम opportunity for करने वाले हैं Incendies to दोस्तों। use that war machine on what I think would be on या point तो हम number सारे के 2. सारे मैच देख He के जाएंगे या फिर 2:30 बजे continues तक to स्ट्रीम win the होगी। kill. It helps a little bit more to the side of Powerhouse. I mean, realistically, you उसको do लगा feel वो like हेड है, मेरे that को this भी game लगा would probably वो still be in Powerhouse's favor. They'd probably have a bigger score margin. थोड़ा They just वो didn't मैं वो overextend and try to हाँ break इनके inside टक्कर of गए। P2 there in मेरे the ख्याल से first set. पावर हाउस We'll have to इंटरनेशनल see what और they can Q9 potentially do दोनों here. चाइनीज P2 is क्लैंस है gonna ना, pop just in about 5 seconds. Close इसलिए भी spawn होगा still वो यूज टू intact होंगे। here for Q9, but they only hold about an 11-second lead. भाई If भी you आ are गए। Powerhouse, you are nearby, but not exactly an open land to maybe try to get in here scot-free. You do have players nearby, however. Do you start dipping your toes into what resources are available? The answer is absolutely. Incendio pulls himself out the war machine, works his way in, is able to at least find a trade onto Yang, getting good damage markers, but still not enough. The last grenade to come out from the war machine now has to get the job done there with the growl. Unable to स्ट्रीम be के at बाद least मेल को पढ़ो भैया प्लीज। डन 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 जी पक्का ब्रो। कोड कोड ब्रो, जब ये गेम खत्म हो जाएगा ना Q9 वर्सेस पावर हाउस, जो भी जीतेगा मैं कोड दे ही दूंगा, स्क्रीन पे लिख दूंगा, तुम वो कोड डाल लेना। The side of Powerhouse can try to defend in there. There's the push towards the construction side. Now working out in favor of Q9. Great defense. Leave them to Brom Anyadeshia 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 Can they actually jump? भाई लिंक तो नहीं, डंडा जरूर मारूंगा मैं मुंह में। Well, let's figure out. लिंक करवाता हूँ मैं ब्रो, They're going to be a little bit late to that next हर्षी आ जाती ना तो Player लिंक number देता 5 हूँ। there for Powerhouse has an operator. It's Irfan. What's he trying to do from the situation? He's trying तो to मैं pick काम some करता हूँ, मैं हर्षी को ना teammates. It's व्हाट्सएप कर gunfights देता all हूँ। across the board, all over the place here for P3. ऋत्विक Shadow's को gonna open up लिंक with the दे Sparrow, देना, finds himself ऋत्विक too. को। That's the opening that you need. लेकिन हाँ, Have at least a purifier तुम in ये जो hand ऋत्विक here वाला for P2, चैनल है ना, जिससे तुमने वो कर रखा है, मेंबरशिप ले रखी है वो वाली GTR का जिंदा, वो अपनी डिस्कॉर्ड पे कनेक्ट कर लेना बस, कनेक्शंस में जाके, वरना हमें पता नहीं चलेगा कि तुमने लिए नहीं लिए, और कहीं हम गलत न बंदे को न दे दें। Keep them at bay in these very narrow choke points. It means that Irfan has to invest the equalizer to be able to find some semblance of trades, but still, it's back and forth. Q9 will do this all day. They'll continuously try to play operator for operator until you completely expunge everything. It's Malky to get the last laugh with the Sparrow, last operator that was available in the lobby, and it's again Q9 that walk away with the majority of time. भैया अपने हैरियर से अयोध्या घूमने आई प्लीज। To be playing this game in which they are constantly ahead of the opponent's wrist. Right now, the furthest ahead we've seen them so far. हैरियर से अयोध्या, सोल स्पोर्ट्स डन है ब्रो। Q9 from up above there, shut up, trying to push in, shut out with already 40 kills going his way, has been the most valuable player for the side of Powerhouse. Unfortunately enough, Isalas have not been भाई ये तो able कम बैक to करने keep लगे up to पावर that हाउस। same level. Right now, they do यार clean the Q9 kill. लेकिन कल The हारा नहीं Warriors था। for seconds, they're gonna get kicked out Q9 because of जीत that गया था, play from याद कर। Malky, who gets now a Q9 double with चाइनीज it. क्लैन है, हम बोल रहे थे बहुत अच्छा खेल ले, बट इन्हें पहले वाले में जीता और दो हार गए। हम बोले थे हाँ मेरे ख्याल से लोअर बैटरी से फिर ऊपर आ गए। हाँ तो इन्हें ये करा है। Anyone to even think or dare to walk by of a surprise. They were already behind you, my friend, and because of that lack of awareness, as Isalas got taken down, Powerhouse has 20 seconds to attempt बट अभी तो to जीत ही रही है defend वैसे, this लेकिन kill. उनके पास है अभी देखना। उनके बाद कैप्चर कर रखा हमने। देख Q9 अच्छी टीम है मेरे हिसाब से तो। हाँ कल अच्छा परफॉर्म करी थी, बस वो खाली फर्स्ट राउंड में करी थी, उसके बाद कहाँ कर पाएगी। Guarantee themselves a little bit of a bigger lead going in towards the third and final set comparatively to what they had किससे before हुआ the था? second. बुल्स Will से हुआ था? be नहीं 183 बुल्स का तो उनसे to हुआ था। 143. A 40-point differential. ट्राइब से हुआ था या Spawning all over the place. To be completely candid ट्राइब with से you, तो last उसका हुआ players था in the ना, middle of the map will be वेलोसिटी Malky, का, and it's a clean kill feed वाइटैलिटी का coming सॉरी। through for Powerhouse International. But it's P1, baby. It's going to be scrappy beyond belief, and that's going to be great for Q9 to be able to maintain their lead.
Let's see if they can. 50 seconds left, and they got skirted inside Powerhouse through the comeback smoke. कर रहा है He's bro. got the club, but I highly doubt that he's gonna be using it on a situation as complicated as that one is. That is gonna be 10 continuous seconds of control in the hands of Powerhouse to now bounce. देखना comeback हो गया भाई. 160 हो गया. Goes for that kill, gets it before his own death. Powerhouse doing a great job now at overcoming their demons, overcoming their trouble, but चीड़ दे रहे भाई वो आते ही. they need वो लोग लिटरली 1 सेकंड के लिए ले पा रहे. पावर 10-10 सेकंड होल्ड कर दे रहे हैं. 10-10 सेकंड भाई. actually take them out. Powerhouse for the first time I see some sort of right going their way. But what did it cost? I mean, you're able to at least cut down the lead. It is now 169 to 188, but you lost the spawns ahead of New. This has been the biggest issue for Powerhouse International the entire time here on map number 1. You have to try to get these spawns in play ahead of New. अबे तू किल तो दे एक बार दोनों टीमों के. आधा मैच भी नहीं हुआ. Machine up top, just being able to pepper them with an abundance of damage, taking down But Q9 वापस आ so many रहा है. different trophy systems as much as he can try. It's Yang 1 there with the gravity vortex. अगर ये होल्ड करते रहेंगे तो shutting down these very narrow नहीं choke हटा points. दिया It means that उन्होंने. Incendio has to invest his own war machine just to work वो their इधर way तेरी back काली in. जुबान भी तो है. तू जो बोलता है उल्टा हो जाता है. तूने जैसे बोला है. Close spawns is playing up top of P2. They can simply do no wrong as they rack up more time, over 200 points. I feel like this उनके भी 40-40 किल भाई. लेकिन वो क्या खेल रहा है bro. haven't been able to actually get inside. Finally do so for like half a second. Immediately we see the push there from Bingo, who gets executed by Yang. Q9 220, less than 30 seconds away from taking it home. Another kill for Yang. The controller's under the bell. They try to push on the side of Powerhouse, but they're क्या फायदा ना किल का भी. when they finally got a shot at closing that gap. It once again escapes from their hands. 26 seconds is all that Q9 needs, and the rotation is not going to be there, but the spawns are not quite bad there for Powerhouse. No, they're not, but again, this is finally them fixing the issue that were the past two sets of hard points. They finally have players in the rotation towards New, trying to find where some of these players are lurking around P4. 2-for-1 trade goes the kill feed, 187 to 229. It will be Q9 inside of the time first, trying to at least get themselves closer to 250, and they're finding all the kills to do. Split spawns are currently occurring. Incendio is still working over towards Courtyard, trying to pinch alongside of his teammates. पर देखना उनके पास ऑलरेडी है. Completely shutting them down at the front एकदम से आ रहा है, हटा दे, आ रहा है, हटा दे देखो. Operators, do you have any? The answer is बट अब क्लोज फाइट नहीं रही यार. 7 पॉइंट्स if you are Powerhouse International and the kills just aren't coming through. जी Powerhouse. नहीं सॉरी मतलब Q9. No one's there to touch. Q9 strike first. बट ये पहला गेम ही है. फायदे से 2 और है. बट हम लोगों ने एक चीज देख ली कि आज जो भी पहला जीत रहा है वो 2 और जीत जा रहा है. Instantly. Capitalizing on the mistakes of the opponents and making them खाएगा कुछ? always. I don't think we saw कौन सा लगा है बताओ? more than a single moment of the चलो control जो भी आ over रहा है हाथ में Powerhouse, निकाल. and that was on P1 at the ये very वैसे कायदे से वो है beginning of मार्गेरिटा the है. game. After that, they were just trying to constantly catch up onto the opponents, but that just never happened. No, it didn't. Again, Coffee it खोलो felt यार. like that. We were an orchestra that were playing the same verse over and over again for Powerhouse International. How many times were we watching them at least getting the spawns ahead of New? And then they just completely give it up. Through the first set of hard points, it was like 10-15 seconds left inside P2. Screw it. Play for P3. Try to get yourself that money rotation. And they just allowed Q9 to quite literally waltz into what was a small lead. We were like, okay, you know, first set jitters, whatever may have you. And then it happened again in the second set, and that's exactly what makes Q9 just so deadly. And what we saw yesterday, they remain flawless on hardpoint on the weekend thus far. You give this team any inch to breathe in a hardpoint, any setup to have for themselves, they'll turn it into a lead. And I mean, you said it perfectly, the way that the side of Powerhouse could have had the control, but कालिया लिंक अन्यदेशीय 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 कर लिया लिंक. अरे थैंक यू भाई. थैंक यू लिंक करने के लिए. अन्यदेशीय 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 सोमरी अन्यदेशीय 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 अन्यदेशीय. अबे साले सॉरी क्यों बोल रहा है फिर? अन्यदेशीय. Control. मेरे कान बजा के सॉरी भी बोल रहा है लास्ट में. It just has to. You would think so. For Q9, again, as far as a region is concerned, coming straight out from China, Search and Destroy has to be, well, I hate सॉरी भी बोल रहा, कान भी बजा रहा है. a powerhouse, isn't it? They have spent so much time just being मैं able to जैक हूँ. perfect their search and राव destroy. हसान गेमर्स बोल रहा है मैं जैक You हूँ. go back to the last time these two teams did face off against each other at CDFI, the way
that Q9 club were able to beat Powerhouse International, they took both the 2 and the 5. There's one thing that they know for certain is that their Search and Destroy will be relatively strong. We've seen that throughout many different tournaments from Q9's perspective. But we are going over towards Meltdown. And as for Powerhouse's perspective, they only played it once. That was yesterday. It was a 3-7 loss of all things versus Standpoint, another Chinese team. But clearly you left it through inside of this best of 5 because you did not want to face them on the Express or the Tunisia. That was the last 2 maps in Search and Destroy. मैं Forza Horizon की stream भी कर लो please. यार वीडियो नहीं perform नहीं करा यार, इतनी प्यारी वीडियो बनाई थी यार. Immediate turnover going into this meltdown if you are Powerhouse. Would you say that this map number 2 is a must-have? I'd say that they definitely play the cards right to prevent complete disaster on the Search and Destroy. You said it yourself with those both being Express and Tunisia. I feel like a lot of you guys have seen those clips on Twitter from Sun with a sniper killing 4 people nearly at a time. It was just insane how he plays with that sniper. And today, I feel like he was smart. He was smart, but it doesn't take away the fact that Q9 are just so dominant that it is just that difficult to attempt any sort of way. Maybe you prevent them from playing their best, but even their second to best or even third to best is quite difficult to play against. We'll have to see how it all pans out. Again, I can only imagine that we are probably just mere moments away from hopping in towards this map number 2. Going to be a big one as you see Q9 having themselves some conversations. Same for Powerhouse on how they could potentially take this map number 2 away from Q9, who also played this map a single time yesterday. It was a 7-4 win versus Vitality, which if there's anything we learned off of in our last series, you do not sleep on India. Those guys play. Got the graphic on the screen. Verticality as it may be, it is time to get into map number 2. You feel like that try to at least take this and try to increase their chances to stay alive in this tournament. And for all you Garena fans out there, you gotta be cheering on your team. Yes, they have fallen once. Yes, they have a really difficult situation, but doesn't mean that it's the end of the world. Gonna find the first blood, immediately push for more through the smoke. Gonna be spotted there by the side of Q9 dominate कर रही है इन लोगों को. देख रहे हैं? Again अन्यदेशीय 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 अन्यदेशीय. तो वही एलियन अन्यदेशीय. एक तो इन लोगों को पता चल गया ना कि ज्यादा बड़ी सुपर चैट करते हैं तो उसमें ज्यादा लिख सकते हैं, तो वो सारे स्पीकर उसमें चिपका दे रहे हैं. ऐसा है क्या? ओए ऐसा है क्या? मारूंगा ना यहीं से. First blood does get traded 4v4 across the map. There for Q9, they might try to wrap this over to B. Something mज़ेदार emoji बताओ यार. The side of Q9 to break through that defense, and could be the fact that Maoki is trying to go around them while they're actually flying the bomb over on Bravo. तो साले कापा तुझे मैं बताऊंगा The kill over there, going to get it over onto Incendio. A 1-for-1 trade to end up in a 3v3 now. Maoki 2 kills under his belt, going for the third one. Here with the grow at a distance, still 29 bullets left. Owling is the one taking the kill on Bingo at a distance. Their son with the deadly sniper shots. Maoki with the for the last player. That's a double. 4 shut up. 1v1 against Sun. And although that was, I gotta say, that was really well played by the last player alive over. Sun just shut down the party. Just bring in the 2-0 lead now in favor of There's one thing we knew for certain. I know just the breadstick isn't going to necessarily beckon this entire conversation. Sun is ridiculous when it comes down to Search and Destroy, really valuing his life. Realistically, just some really good centering. मैंने अच्छी देखी है. मार्गेरिटा पिज़्ज़ा हट का अच्छा होता है. As far as his offense is concerned, not a bloodbath over at A. और बाकी सारे पिज़्ज़ा डोमिनोज के अच्छे होते हैं. That is what they tried to offer in the previous one, but Q9 just completely rolling out, left bomb in spawn, so they can't really execute towards the site until that starts to get collected by Uling and then joins this effect. 2 players over by A, nobody pushed through.
a lot of bait play. There had to have been some utility that was thrown by Malky over by the B bomb side because there's a lot of Powerhouse members that are lurking nearby. You feel like that the execute over towards जगत भैया से चैट भर दो वामू मैं ना तेरे को बहुत मारूंगा जिस दिन honest with you. Fortunately enough for Q9, both have gone their way. Let's see what happens on the third interaction. So far, there could be the first blood. Incendio stops aiming. Love you भैया from Gujarat. Love you too. Just coming aiming. He does manage to survive. Best gaming OP. Sorry. क्यों बता सकते तू? Coffee दे दो. Sorry. Poop poop The first blood is going to be in favor of Incendio, who immediately finds the second. Onto Yang in the third. Onto Sad. Incendio on a spree. तेरे को पता है मेरे को सुनाई क्या दिया है वो? Completely going Coffee दे दो. Sorry. now lose howling, and all of a sudden Incendio will find the fourth one. And just like that, the first one पहला गेम आ गया. क्रिसमस का पेड़ 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 मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा खरगोश 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 मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा मेढक का चेहरा सॉरी पेंसिल फेस पेंसिल फेस Flashes out. Not going to be able to find a first pick. It is going to be a tussle and Love you bhaiya dil from Gujarat. All 10 players are here. 1-for-1 trade, at least so far. Not a whole lot of space provided, but it's all about Best the gaming OP तो मिल मेरे को Incendio, भाई. able to at least waver the numbers into Powerhouse's favor. Last alive for Q9 was Xenon. Swaps to the boxing gloves, slides forward, and somehow shuts it down. They allowed him to cook, and what a way to end that one up with a 3-piece. Wonderful attack play करी Q9. in favor of Q9. बहुत तुमने खा लिया ना? In another 2 rounds lead in their way. Great way to do it, I gotta be honest. It was slightly concerning in a sense that Powerhouse was not really being able to prevent a triple kill so easily going on against them. Now भाई ज़ीनान बंदा तो छील रहा है भाई. once again will brutally push towards A. इन्हें पिछली बार 50 बड़ी easily कर लिए थे. Another pace differential, this time over towards A. Quick plan is able to get them full coverage around this bomb site, and now they're actually setting players up. Powerhouse are lacking, thinking that they're just going to run back through the middle of the map. भाई प्लान का है बंदा खत्म वो सारे आगे देख रहे हैं. These pace swaps. कहाँ देख रहे थे वो लोग? Constantly throwing at Powerhouse is the reason why कौन दे दे I'm भाई seeing तू the दसिया ना मैं तेरे जाऊंगा. भैया पिज्जा खा रहे हो ये लोग Unpredictable. They have been on the brain for Powerhouse because भाई तुम लोग जाओ मैं मिड से आ रहा हूँ. for something बहुत ही गंदे as बंदे भाई. wildly unpredictable as Q9 has been so far. They think that they're pushing over on A, but look at that, a 5-player push goes over to Rabo. Just because I love you bhaiya dil 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 dil. For the side of Q9. Love you Zweb. They just know what they're doing. It's mental. It's all mental. But look at the call from Powerhouse. They thought that Close maybe they lock could just try close to run lock through the close offensive lock spot. close And to lock be candid close with you, lock it was close being lock blocked by close Q9. lock hammer It doesn't hammer work out. hammer What hammer. side is the bomb being planted for? That is the अच्छा biggest स्टार्टिंग वाले पढ़े ही नहीं उसने सीधे क्लोज लॉक और हैमर पढ़ा है. वो चिपका लिया और उसने नहीं पढ़ा. सही हुआ. There could be players यार ये तो क्या हो गया यार. all the way over on the defensive head glitch works out wonderfully for the sniper. It's a 5-1 split at the half. Shining bright as the sun can be, clutches yet another round in their यार कैसी हो रही है सब चीन ही नहीं है और नैने चीन दी है. are feeling comfortable here today. They have already won game 1 and are on their way to try to do exactly the same on game number 2 as they are now on defense. They यार कोई बोल रहा है HRSHII थाला for a reason. Not gonna work out. Kills going all over the place. That's gonna be the 3-for-2 trade going in favor actually of Powerhouse. Still have a lot to be battling over here across this B bomb side. भाई इसको देख तो सही वो Q9 को कैसे छील रहा है वो बंदा. मजा आ गया. Last time we were in a 1v3 and G9 was the last alive. He did find all 3 पर वही वाली दिक्कत है कि इनको 5 राउंड की उनको 2 राउंड चाहिए. Powerhouse to open up their offensive round. Great way to do so for Powerhouse. That's the second point now going their way. Can they do it again? They have to prevent being on a 6-2 scenario. That would be just awful for them to see. All of you Garena fans have to cheer them on, but on the opposite end, China have already lost one of the 3 members that advanced onto day number 2. So Q9 trying to show why China wants to be the strongest regions in here. As they push for that kill, there's Sinan. Going for that kill, nearly finds it, but not quite.
as that's a push there for Powerhouse. A lot of mid-map coverage for Q9, but we've seen this countless times from so many different teams, but Q9 specifically. Sorry, Anyadeshia, 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 Somli. Already been done. A 6-2 lead. Q9 on the brink of taking Love FRM West Bengal और किए रहे गुलाम मेढक का चेहरा 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 I certainly think they can, but let's see if they do. Love for Madhya Pradesh मेढक का चेहरा 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 ये जितने मेढक के चेहरे वाले हैं ना वो ये होते हैं। देखो लो PLS folded hands 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 loudly crying 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 folded hands loudly crying folded hands loudly crying folded hands loudly crying loudly crying loudly crying loudly crying 35 seconds until the bomb अब does मैं इसको hit. गाने की But तरह you have ट्रीट a करूंगा जो ये massive बोल रहे हैं। tussle that's going over by the B bomb site, completely surrounded by Q9. This pinch is so late, coming through the middle of the map. And Sun, it's such an easy read, isn't it? Earthman is at least able to take down Uling, but it's just not enough. The kills come through soon after in a post-plant situation. Q9 will get the defuse and a 2-0 lead to boot. Q9 जीत गई भाई, जीत गई। That's right, ladies and gentlemen. Q9 with dot mmm poop 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 aha ha 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 मेढक का चेहरा 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 lose those, and because of it, there's a big 5-round gap. That I in my opinion could have been closer, but because of mistakes, different ones than what we saw on game 1, but yet again because of mistakes is that they tend to fall behind. I just think it's the complexity that you have Q9 approaching the search and destroy just completely catches all of Powerhouse off guard. I mean, there's been so many different rounds on the offensive side for Q9 as you take a look at some of these replays on your screen, is that they didn't realistically offer the same round more than once, really. I mean, they've at least offered the same pace through a lot of these different rounds. सॉरी बट लव यू भाई चूहे का चेहरा गाय का चेहरा बाघ का चेहरा सुअर का चेहरा मेढक का चेहरा बिल्ली का चेहरा खरगोश का चेहरा ड्रैगन का चेहरा हैमस्टर का चेहरा भेड़िया का चेहरा कुत्ते का चेहरा भी डाल देता भाई इसमें वही रह गया था बस कुत्ते का चेहरा भी डाल देता Yeah, some teams have like a 1-2 sort of scenario. They just have 2 different plans and they commit to them. I feel like Q9 had 4, and when your opponents have 4 different approaches to Link the to for same Ban map, Kruger Anyadeshia 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 अरे भाई हर्षी Anyadeshia 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 पांडा का चेहरा Anyadeshia अरे भाई इसको लिंक दे दो यार कोई ऋत्विक को भाई यार ये दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा पीला दिल 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 लव यू बया मेढक का चेहरा 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 Raid control is good for a multitude of reasons, and that's not just for one side of the stage. This is Q9's most played control map. They definitely prefer to see Dave XD is equals to not Thala for a reason. However, the last time these 2 teams faced off against each other at CDFI, Powerhouse won this 4-0. Okay, yeah, that's something you touched on earlier. That's huge in a way for them. That is going to be really, really important for Powerhouse. My first super chat did here no evil 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 here no evil. There's gonna be a little bit in the back of your head. पहली सुपर चैट करी ना जो गाली खाने के लिए. We have But to, thank like you. you mentioned, reverse sweep, and this is the first step. We cannot tumble. We cannot even be
weak for a second, because if you are completely eliminated. You said a single elimination is having that impact on these teams. So now we're gonna go straight into the action as we begin this game on Control over on Raid. ये spawn वाला हो गया ना? Of course, as a note that you just brought up, Q9 ने आके for छीन लिया Q9 उनको. again, the only series that they lost yesterday was to Wolves. ये चल रहा है जो 1-2, of course, first वाला taking जीत रहा है hardpoint, flag है ना, मैं बोल रहा हूँ तेरे को 3 लाइन से जीत जा रहे win हो. this as dominant as possible would be a statement going in towards तो top भी वही वाली four. बात है कि जो better team है वही जीत रही है पहला. Control is a fickle monster when it comes down to so many opening breaks. Offense so far, पर इनको पावर हाउस को कितना गंदा लग रहा होगा ना कि वो लिटरली डोमिनेट कर रहे हैं इनको. हर एक में देखना 2-7 वो हरा दिया और पहला वाला वो 100 से हरा दिया और ये वाले को भी देख लो. भाई इतने क्यूट हो देखकर कुछ कुछ होता है स्मर्क. भाई इतने क्यूट हो देख के कुछ कुछ होता है. That I don't necessarily like how it works per se, but it's always fun to see it, right? When you begin to spray and pray with it through the walls is amazing. Now Q9, they just go no futures fire. Look at him go with a chopper. Guys 10,000 लाइक होने वाले 400 बच्चे कर देना यार. अब सोचो ये 10,000 लोग हमारे साथ बैठ के इज्जत से कॉल ऑफ ड्यूटी देखते कितना मजा आता है. जो ये 10,000 लोगों ने लाइक करा नहीं. बहुत ही नंगे लोग हैं. They are gonna spot him now. Sinan is dead. Don't worry about it. They caught him in that interaction. वही है यार. YouTube भी कभी-कभार खुद ही वो नहीं करता ना रिकमेंड जब लोग शेयर नहीं करते. पर मैं तो इतना ही मानता हूँ यार, जैसे हम लोग अभी ये मोबाइल गेम का वॉच पार्टी कर रहे हैं, ऐसी फीचर में फिर और ज्यादा मोबाइल गेम्स चलेंगे, फिर और ज्यादा. तो मोबाइल गेम्स का बेसिकली इन द एंड ऑफ द डे सिक्का चलेगा वो वाली चीज. भैया 1 साल हो गए मेंबरशिप लामू कोलकाता एना गुलाब. डन 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 डन. आमी कोलकाता आवो तुम्हार के चुम्मी देबो. आमी तुम्हार के भालो बाच्ची. हाँ माची बात खाबो के ना. That's right. That's really, really important for the side of Powerhouse as they continue to attempt to defend here through the smoke skirt. We'll find yet another kill this time. Sinan finds the double now. Onto rolling in. Nearly the triple onto Maoki. It's only going to be an assistance. There's the triple. Goes for the quadra now. At a distance onto Yang. Can he get it? Let's see so far hiding one way or another. Tries to distract the bench. Falls as 12-12. The war machine in the hands of Incendio will begin to get a triple. ले भाई भाई के हाथ में नेट लॉन्चर क्या है, भाई ने छीन लिया उनको. भाई टाइम भी आने वाला है. And now look at the time. That will begin to be an issue for Q9. Sure will be. 20 seconds remain. Is that enough time realistically to be able to find 10 kills? No. भैया एमपी कब आ रहे हो? लॉट्स ऑफ लोवी रिबन के साथ दिल. भैया एमपी कब आ रहे हो ब्रो? एक्चुअली मेरे एक दोस्त के भाई की शादी थी एमपी में भी. मैं जेन्युइनली आना चाहता था बट यार मैं थोड़ा सा अंशु भाई आपको पता है कि अंशु अंडरस्को का अंडरस्को चेहरा, 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 अंशु अंडरस्को का अंडरस्को चेहरा. ले भाई अब पावर आप Q9 को बेसिकली बस सेंटर से हटना है, वो बेस छूट जाएगा और टाइम हट जाएगा. जी जी यार हाँ दोनों वही है, मरी जाने. भाई क्या क्लोज सारे क्लोज कर दिया भाई Q9 ने. बहुत तगड़ा किया. Not only war machine, RON9IE Ronnie Suar for a reason. They utilize a lot of resources over there. Luckily enough, it goes their way, because if it didn't, that would have been just disastrous for the Chinese team who अरे भाई तू क्या बोल रहा है भाई ये? Immediately we see Powerhouse trying to go for the same place, immediately pushes towards Alpha. No one there yet, but look at Bingo already going to the sniper nest. There's going to be push over the side of basketball court from the side of Q9. Find the first blood. And immediately try to push for more. Skirt is there at a distance, has the claw available. Let's see if he decides to take it out for a ride. थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो रहा है पर यार वही वाली बात है कि जो वो है ना किंग जी क्लब वो बेटर है बस बेसिकली. उनको बस एक ही तो मैच जीतना है. उनको भाई जीतने के 3 मैच जीतने बस हो गया. उनको 2 मैप यहाँ पे जीतने हैं, गेम वो जीती है.
27 points up against 22. It's a great opening break once again by Q9. But again, you start to talk about all of these different resources that were utilized towards the end of ऐसे expression dot TB bad में empty बोलना 18 जोड़ हो गया. Claude now invested by Uling. Where's the response from Powerhouse? Over by the B control zone they will go, try to solve the clock. They do have some utility they can use to really try to add some तू नहीं वो सोला प्रत्युष से मैं necessary to have that oomph, as you mentioned, in लम्बू लिंक दे दो. अरे यार ये हर्षी कहाँ चले गई है भाई? Bravo, and at the same time they're trying to push towards Alpha. There's Incendio who finds one. Incendio tries to find two, not unfortunate enough as he gets killed through that wall. 21-16 when he comes down to kills in favor of Q9. That's a great way to see it, but it's not necessarily going to be easy. Look at Skirt over here. There's plenty of utility available in favor of Powerhouse. Why is that? Because Q9 used two of the operators in a questionable moment, if you were to ask me, actually. So able to convert the offense, and they have a 5-life lead here. Just have to hold off 2 segments over by A. This is a really good position here for Lambu link do Anyadeshia 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 Anyadeshia. Make sure that their flank is secured, and it's going to work out on 2 different sides of this A control zone. Underscore GFOG face palm. Underscore GFOG this. Underscore GFOG frick. Underscore GFOG angry. भाई तुमने वो किया जो मैंने बताया और तुम डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो नॉर्मल वाला. उसमें ना एक जगह है जिसका नाम है पायरेट लॉन्च. उसके अंदर दिया हुआ है वो 7 लोग ऑनलाइन भी बैठे हैं उसमें. When it comes down to this quarterfinal matchup against the Garena team of Powerhouse International. Bingo has fallen. Incendio attempts to go for a miracle 1v13. Ladies and gentlemen, here Owling tries to go get it. Not gonna be possible. 10 seconds left. Continues to push. Backs down out of sniper nest, but now it is actually going to be either the time or the kill. It's actually the kill. Sinan gets it. Proper. That's a 2-0 जीत रही है भाई. चीर रही है भाई, वो जीत भी नहीं रही है. At this moment, it's like domination. Domination. Interesting development. I mean, you have resources that are still available. भाई तो move क्यों सूंघ रहा था? You feel like that you have to win an offense eventually, and now you have to somehow reverse sweep a control to start a reverse sweep in the best of 5. Why not? Q9. Again, opening break off, different from the last. Going to be going over towards B, but Sun opens up with you. I mean, this guy is just ridiculous through these opening break-offs. Doesn't have the भाई तू वहाँ तो देखो चीर रहे हैं भाई जाके. बस जा रहे हैं मार रहे हैं. Impressive as far as these opening breaks are concerned. First segment has already been locked in. Sun has the purifier out. Back kitchen, trying to cause a little bit more distress. Second segment Bro, legit में झूठ नहीं बोलूँगा, पता नहीं क्यों कभी कभार ना कंपटीशन ही नहीं लग रहा है. अगर देखोगे तो ठीक है. अभी तक हमने जितने भी देखे, जैसे गॉडल का भी देखा था जब उनके साथ, तो एक बार को वो भी अच्छा खेल रहे थे. स्टार्टिंग वाला तो भाई डर लग रहा था, मतलब पूरे टाइम कि भाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, डर लग रहा था पूरे टाइम. इसमें लिटरली ऐसा लगता है वॉक इन द पार्क खेल रहा है. केला ले लो, 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 केला ले लो. थोड़ी तबीयत खराब है. लिलीविले की स्ट्रीम कब होगी? शॉट आउट नेम लेके दिल. लिलीविले की स्ट्रीम कब होगी? शाउट आउट लेके दिल. ब्रदर एक्सिट भाई कल को वो आएगी, कल को लिलीविले की वीडियो आएगी और शाम को हम लोग स्ट्रीम करेंगे. यही कल को फाइनल्स है भाई. गॉडल फाइनल्स में जाएगा, समझ रहे हो? And Q9, I know that you're just not worrying about the objective. All they care अरे about दो is को finishing off with 8 की लीड है इन पे. 18 plays up मुश्किल against है. 10. 7 की लीड. Resources not exactly bountiful. Nobody has an operator available on both sides. It is the old-fashioned tango here on raid with the gunnies. 8 plays up against 15. Minute 10 left on the board. Can Powerhouse hold on?
चौधू प्राइवेट में बात करेंगे फिर स्मर्क। Stay alive in the tournament. This is your tournament life on the line. Players inside a kitchen. मतलब Predator एक missile मिनट, has been क्या infested by टंडन Earthman, भाई, is able to find at least 2. क्या बात करनी है? Maybe try to stay alive. यहाँ बात होगी जो भी होगी। Lives remaining. 5 plays up against 10. Players not able to get closer towards this control zone to try to stop the clock. They're just trying to hold on inside the kitchen, but it's easy reads coming through from Q9. 3 plays up against 9. Trying to push the advantage even more so through the full side. Last player that's down over there would be shut up, and he has to go massive for his team. Bingo, perfect. We'll be seeing you later. Last player's alive is shut up inside the kitchen. He cannot exit for free. It is a clean sweep. In the control for Q9 Club, a clean sweep. फर्स्ट सुपर चैट अंशु भाई कैसे हो? लामू बाघ का चेहरा, बिल्ली का चेहरा, कुत्ते का चेहरा, भेड़िया का चेहरा, भालू का चेहरा, गाय का चेहरा। थैंक यू। पहली सुपर चैट में तुमने किसी से मनी मन गाली गाई है, तुम्हें पता है ये बात? The best. They mentioned how they want to go to the very end, defeat the best players out there, and so far. कार्ड्स अनबॉक्स करो भैया। Q9 तो जीती गई, अब लास्ट मैच होगा इसके बाद जहाँ तक है नहीं, क्योंकि 8 टीमें थी, 3 मैच हमने देख लिए, एक ही बचा ना। उन लोगों ने टाइम इस हिसाब से रखा था 7 घंटे का कि ऐसे होगा, फर्स्ट टू 3 जीतेंगी, उनको लगा 2 ये जीतेगी, फिर 2 वो जीतेगी, फिर 1 जीतेगा, तब जाके होगा। भयंकर सारी टीमें आ रही हैं, वो 3-0 कोई टाइम ही नहीं हो रहा है। एक लास्ट मैच बचा है बस। That's quite literally what happened to them on the opposite side when they faced off against each other in CDFI. चलो मर्च की वेट है, बस आप दे दो लम्मू। भाई तुम लोग अगर बोलोगे तो मैं कम मर्च बना दूंगा, बट फिर वही वाली बात होती है कि वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी मेरे को, फिर वो मेरे को एक्सपेंसिव पड़ेगी तो तुम्हें भी एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा ट्राई करूंगा कि कॉस्ट टू कॉस्ट भेज दूँ, मतलब मैं लॉस भी ना लूँ और ना ही बहुत ज्यादा महंगी भी हो जाए, कि मतलब मैं अपना प्रॉफिट निकाल लूँ तो तुम्हें महंगी पड़ेगी। When you're coming away from best of 3s yesterday during the Swiss stage, and you're coming in towards the, I'd say, the truer portions of the tournament, now and towards the single elimination bracket. मैं ट्राई करूँगा, मुझे जितने के पड़ रहे हैं उतने में तुम्हें तुम्हारे तक पहुँच जाए। Feel like that teams are really going to play at their best. Yeah, it absolutely has to be, and well, I mean, I feel like Leader said it perfectly. कोड, अरे हाँ कोड डालना भूल गए, तुम लोग कोड डाल देते हैं। By a little bit. It's not by a single decisive play, but across the board how dominant they are being against other top 8 players. Top 8 teams. Day 2 का कोड है guys, let me show you. Day 2 का कोड है। How this day has gone by. I was not expecting to see 3 O's so far today, if I'm being honest with you. Boom. Look at that hype. That is the hype we love to see, celebrating the win. Q9 now moving on. First super chat. Ollie Jord Bob equals Tala Anyadeshia Rakshas 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 Anyadeshia 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 Rakshas Anyadeshia Anyadeshia Rakshas Anyadeshia। ये है कोड गाइस, ये कोड आप डालोगे आपको 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स मिलेंगे, जाके इसको वो कर लो, अवेल कर लो, कोई और कर लेगा, पहले मेरे से मत बोलना। अन्यदेशीय राक्षस, अन्यदेशीय राक्षस। ठीक है, स्क्रीन को रोक लो यहाँ पे और डाल लो इसको। 3-0. You guys were extremely dominant. How'd you do it? 你们今天比赛表现非常的好，一直占领了主导地位，取得了3-0的成绩，你们是怎么做到的？ चलो गाइस, it is time for some One Piece. One Piece is real. जिसको भी ये कोड मिला उसको 5000 कॉल ऑफ ड्यूटी पॉइंट्स मिलेंगे, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू to Call of Duty Mobile for providing us with these codes of Call of Duty points. Thank you so much Call of Duty Mobile, love you. Thank you so much. Love you. Shoo. पहले कार्ड तो डिवाइड करो किस किस के हैं। लीड भाई अपना निकाल लो है पहले यार। हर्षिता आई नहीं तो मेरे 2 हो गए। अच्छा दी है मैं हूँ। अब आ गई? हाँ तब से बोल रहा हूँ, कॉल चिल्ला रहा हूँ तब से, तब तक नहीं है और अब एकदम से। मेरे भाई का बर्थडे था तो मैं तब गई थी। ओह सॉरी यार, सॉरी यार। अरे मोहक भाई को सब लोग हैप्पी बर्थडे लिख दो चैट में सारे मोहक हैप्पी बर्थडे लिख दो। मोहक हैप्पी बर्थडे, मोहक हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे भगवान जी ब्लेस यू।
खराब होगी बस। गाइस सभी लोग एक बार मोहक हैप्पी बर्थडे लिख दो चैट पे। मोहक हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहक, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मोहक को। ऐसे बचाते देख रहे जान, ये होगा मैंने वैसे बचा लिए थे। चलो मतलब कुछ नहीं मिल है। चलो बताओ कौन सा वाला तुम्हारा देव, तेरा कौन सा है? वन पीस इज रियल, आई एम लेफ्टी। अच्छा लेफ्टी लिया तूने, बताओ हर्षी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। आई एम ऑलवेज राइट, तो लेफ्ट। लेफ्ट, अच्छा ये क्या हुआ? स्प्लिट भाई आप खोलो यार पहले। चलो आज पहला मैं खोल रहा हूँ, आज पहला मैं अपना खोलने वाला हूँ गाइस। लेट्स गो, चलो लेट्स सी। लूफी गियर 5 निकलने वाला है। स्प्लिट भाई ब्लैक बियर्ड पुल कर रहे हैं जी। अरे ना लूफी गियर 5, वो भी रेनबो एडिशन में। मैं जोरो सबसे महंगा, और मैं तुम्हें बताऊं कितने का है? मैं बताऊं तुम्हें, मजाक से हट के भाई, कोई पोकेमॉन कार्ड इसके आसपास नहीं है। अगर मिल गया तो तुम समझ रहे हो, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लूफी गियर 5 बहुत महंगा कार्ड है। ये था क्या? कुत्ते का चेहरा, 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 कुत्ते का चेहरा। वाओ लवली। मेढक का चेहरा, 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 मेढक का चेहरा। और ये तो नॉर्मल है, ये वो नहीं है रेनबो। रेनबो आ गया ना, अभी दिखा दूंगा तेरे को। नॉर्मल कार्ड जा रहा है उतने का, नॉर्मल कार्ड जा रहा है $3,500 का। $3,500 मतलब 8/24, 24,000 रुपए का, 25,000 रुपए का ऑलमोस्ट, ज्यादा ही। कौन सा वाला? रेनबो एडिशन किसी का निकल गया तो वन पीस, मतलब मैंने आपको बताया था इंस्टा पर कि क्या मेडिकेशन के आरएनई से जल्दी ठीक हो जाएंगे आप, बट आपने सीन नहीं किया। डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड। एंड आप दोनों कैसे हैं? हाँ इनमें से किसी में भी निकल गया मेरा यार, दिन है मेरा आज। हैप्पी बर्थडे अंशु भाई। सुअर का चेहरा भाई $3,500 का निकला है वो। निकल गया तो यार, निकल गया तो मजाक से हट के भाई। निकल तुम्हारा, अरे तुम्हारा क्या आ गया? अच्छा वो आ गया स्प्रिंग वाला। चलो आ इसकी भी स्टोरी अच्छी है। रेडी, हट जाओ। अरे यार कोबी नहीं, कोबी नहीं, कोबी है, कोबी था। मैं थोड़ा भूल गया इसको, बहुत टाइम से देखा मैंने। ये स्काइपी आइलैंड की। ओ ये लूफी तो नहीं है कहीं? सच्ची में कुछ रेनबो है, सच्ची में कुछ रेनबो है गाइस। इट इज एक्चुअली रेनबो। भाई भगवान बोल दो भाई, 25,000 का कार्ड है, बोल दो लूफी गियर 5। अरे नहीं यार, ऊपर से यार हट यार। बट अभी कुछ अच्छा कार्ड निकल सकता है, कुछ भी निकल सकता है अभी। बकवा डॉक्टर, ओ पीका निकल गया। इसकी आवाज ऐसी है, मैं तुझे मार दूंगा, ऐसी आवाज। इतना बड़ा है? हाँ पीका है ये, इतना बड़ा होके ये ऐसे बोलता है। बट ये कार्ड अच्छा लग रहा है। अच्छा है नहीं बट लग रहा है। इसको जोरो पिल। इसका प्राइस देखियो एक बार, लिखियो। चलो मैं लिख देता हूँ, कीबोर्ड भी तो मेरे मुंह के आगे रख रखा है ना मैंने। क्या है ये? 032, बट सीक्रेट रेयर है। ओ नहीं, ये तो है नहीं, ये वाला ये नहीं है, ये है $3। नॉट बैड। लास्ट वाले से अच्छा ही आपका, लास्ट वाले बोल से। बड़े इतना मारूंगा ना किसी दिन तेरे को मैं, तू साले तो पिट जाएगा मेरे हाथ से, तेरे को बता रहा हूं। लास्ट वाले बोल से बेटर है यार। कोई बात नहीं ब्लीड भाई, होता है ब्लीड भाई, होता है। अब बताओ हर्षी वाला या देव वाला? मेरा। चलो दी की बारी है, चलो। वन पीस इज रियल। कूड़ा वाला तेरे पास है? कितने भी डाल सकते हो कूड़ा तो। अरे हाँ इस पर डाल लेते हैं। बोकुवा डॉक्टर टोनी। अरे वो लाना यार, वो लेके आना टोपी भाई, तभी तो लग नहीं आ रहा है हमारा। अच्छा वन पीस अनबॉक्सिंग में लग कैसा आएगा? चॉपर यार ऑलवेज। हेडसेट कैसे डालूंगा मैं? तुमने कितने डॉलर्स बोला था? टोनी चॉपा ओमाशीरो तो नाकाई गिव मी सम पार्टी। चलो हर्षी वाला खोलते हैं।
वो बताओ ना कितने डॉलर्स बोला था? मेरा वाला नहीं नहीं, वो जो पहले हमने कार्ड नहीं देखा था गेयर अच्छा वो 3500 तो 1000 3500 into इंटू 82 80, तो ये 2,80,000 हुआ ना? ओ शिट, हाँ मैं 25,000 बोल रहा हूँ। अबे भाई 2.5 लाख का कार्ड है वो। ओह वो 2.5 लाख का कार्ड है, मैं 25,000 बोल रहा हूँ, पागल आदमी भाई। छी मैं वाह उसको यार, $300 सोच रहा हूँ। भाई निकल गया तो व्हाट भाई। मेरा निकल मेरे रहा में है। निकलेगा, मेरा निकलेगा, लेट्स दिखाओ। सी हर्षी केस में क्या निकल रहा है। चलो चलो चलो। भाई मुझे कुछ क्रेजी दिख गया है बट मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मुझे ऐसे ही लगा था। कुछ गोल्डन है, दिखाऊं? अब ओ तो भाई दिख रहा है? crazy हाँ निकलेगा। कुछ गोल्डन है। कुछ गोल्डन है, देखो हल्का सा दिख रहा है। चलो देखते हैं, लेट्स गो। आ जाओ। वन पीस दो फ्लामिंगो हो दोंकी दो हो दो हो दो ओ फ्लामिंगो ये कोई वुड है हाँ, ब्लैक मरीन। का हमें गार, यार गार क्यूट गार पे है तो क्यूटी गार पे क्यूटी। ओके जोरो बट तो ये नहीं वो है। क्रेजी वाला नहीं लग रहा है मेरे को। एनएल आ गया है फिर से। साला ये ये कल भी यही आया था ऐसे एनएल आया था। हाँ, पर अलग था थोड़ा। चलो गाइस, अब हमें सिर्फ एक ही जने से उम्मीद है जिससे होनी नहीं चाहिए कायदे से। अगर अगर हमारी उम्मीद इस बंदे से है ना, तो हमारी उम्मीद पे मुद्दों को अबे सबसे बेस्ट मैं निकालूंगा यार। ओ ये एक तरफ से पिंक दिख रहा था ये वाला कार्ड। कौन सा वाला? वो जो एनएल वाला है। अच्छा हाँ चलो चलो निकल रहा है यार, अच्छा निकल रहा है यार। ओए दोंकी दो होते दो फ्लामिंग। जी हाँ। चलो चलो फिशमैन। ए ये देख यो आ गया सही हाँ, में। ब्रुक आ गया। ब्रुक आ गया, मजाक से हट के। ब्लड तो नहीं हो रहा ना किसी के लिए? एस आ गया। एस साबो है, सॉरी साबो है। वही मैं सोचू एस कहाँ है इसमें। अरे यार ये उसके पापा आ गए। अरे कोराजोन आ गया भाई। गो भाई मैंने बोला था ना, अगर लास्ट उम्मीद इस जैसे बंदे से है तो भाई उस उम्मीद पे फ्लीट कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल एंड वॉरजोन मेंबर्स ओनली पे खेलो प्लीज लम्बू। डन है शिवांश, मजाक से हटके डन है ब्रो। मेरा बहुत ज्यादा मन करता है बट मैं खेलता नहीं हूँ, बट मैं मेंबर्स ओनली में खेलूंगा पक्का। ब्रो आप दोनों ने जुजुत्सु कैसे देखा है? क्या ऐसे किसी फेस छोटू बड़ा किसी फेस रीजन किसी फेस? भाई वो भाई की अलग ले रखी है। तो मशीरो तो ना कहीं गिव मी समबॉडी। कार्ड काफी कैजुअल है। जी यार। और भाई ये बहुत महंगा वाला केस है, पता है तेरे को? ये उसका स्पेशल एडिशन आता है, जैसे ईटीबी होता है ना क्राउन जिनित का, ये हाँ। उसका भी Fleet CODM और पोकेमॉन Warzone member only जो पे वो खेलो होता है यार, PLS पोकेमॉन Lambo। सेंटर एडिशन है। ये खुद पोकेमॉन सेंटर ने बनाए थे इसे। ओह इनमें इनमें थोड़े से एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं और एक्स्ट्रा पुल्स होते हैं, तभी तो मेरी वो वीडियो में इतने खतरनाक खतरनाक पुल निकालते मैंने। एक बार देख लेते हैं, मैच तो स्टार्ट नहीं हुआ ना अभी तक। नहीं हुआ। नको। चलो भाई क्या अनबॉक्स करें फिर, अब बताओ। अरे क्राउन जिनित यार जेब में रखा है। हैं? नहीं है। दिखाइए साले चोर। तुमको क्या पता मेरी पैंट में कितनी जेबें हैं? तेरी पैंट में बहुत जेब है। बस जेबें ही है। चलो कुछ नहीं। समझ जाओ। चलो अब अपने पास है क्राउन जिनित। मेरे को और मंगाने पड़ेंगे यार, ये वन पीस वाले नहीं मंगाने चाहिए और। ये जो मजेदार था। रिसेंट आया था यही थे जो हाँ? रिसेंट मंगाए थे? नहीं ये वो है जो अच्छा, सब्सक्राइबर ने दिए थे। ड्रीम हैक में। हाँ ओटाकू संस के दिन। तो अपना कुछ क्रेजी तो नहीं निकला, बट एक्चुअली हमारे पास एक और पैक बचा है, बट मैं वो खोलना नहीं चाहता। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इनको बाहर से मंगाते हो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियल केस। मैं दिखा तो नहीं सकता, बट देव को दिखाता हूँ बगल में ही। देख जैसे देख मैं दिखाऊं, ये जो बॉक्स था, जो बॉक्स हम लोगों ने खोला अभी, ठीक है? तो भैया पॉम्पी को हल्द्वानी में क्या लाना होता है ना, रूम मतलब लीच इंडिया ही में हो क्या होता है ना, जाएंगे, बंदों को फिर लगता है अन्य कि देशीय और अन्य देशीय अन्य देशीय अन्य देशीय अन्य देशीय। अब क्या अन्य देशी हो गया मैं? भैया पॉम्पी को लाना रूम में 3 हो जाएंगे फिर, मतलब पॉम्पी को लाऊंगा तो 3 कैसे होंगे? 2 एक हो होगा ना, जाएंगे 2 होंगे ना ज्यादा से ज्यादा। हो जाएंगे वैसे। 2 कुत्ते हो जाएंगे ना रूम में फिर। हाँ
अरे मैं और पंपी यार, तू अपने ऊपर की जा रहा है। बाकी तो सबको पता ही है। तुमको कैसे पता था मैं अपने ऊपर जा रहा हूँ? वो तेरी शक्ल देख के पता नहीं था मेरे को। ऑलमोस्ट हो गया था भाई। ऑलमोस्ट। देखो जैसे 05 का यार वो वाला बूस्टर बॉक्स नहीं दिख रहा है मेरे को, पर मैं कॉल करता हूँ अपने बंदे को, क्या पता उसके पास पड़ा हो तो हम लोग मंगवा लेंगे उससे। पर वो उठाओगा इस समय? भाई इसने ब्लॉक कर रखा है मुझे, मजाक कर रहा है। अरे जो हमारे इतने अच्छे से कार्ड निकले थे उन सबके प्राइस देख लिया आपने? नहीं सबके नहीं देखे वैसे, क्योंकि देखो ना, ये ऐसा नॉर्मल सा कार्ड निकला है अपना, मतलब तो रेनबो है। ये देखो रेनल जैसा, ये भी रेनबो है। अरे वो रेनबो से बहुत फर्क पड़ जाता है, वो बहुत रेयर हो जाते हैं ना रेनबो से। देखो ये एक वाला। हाँ भाई इसका नंबर लीक कर दिया था मैंने, ऐसे रख दिया था ऑलमोस्ट। दोबारा क्यों दिखा अरे देखिए नंबर लिखा हुआ है। अरे नंबर लिखा हुआ आ रहा है भाई। लोग इसको कॉल कर रहे हैं, भैया कार्ड दे दो कार्ड। भाई लिंक दे दो यार, अच्छे से समझा रो कैसे अरे करना यार है। हर्षी यार, ऋत्विक भाई को लिंक दे दो यार, तुम इनने मेरा खून पी दिया यार। अरे यार वहाँ डाल रखी है मैंने पायरेट अरे लॉर्ड की यार ऋत्विक चैट भाई में। सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा। डिस्कॉर्ड में जाओ, सेटिंग में जाके कनेक्शंस में जाओ, वहां पर ये ऋत्विक वाला अकाउंट डाल लो। तो तुम्हें पहले तो गेमर फ्लीट वाले डिस्कॉर्ड में ही डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, अभी नहीं दूसरी कोई स्ट्रीम में जाके देखना माइनक्राफ्ट वाली, तो उसमें डिस्कॉर्ड का लिंक होगा, उसमें जाओगे तो वो वाले डिस्कॉर्ड में तुम्हें दिख जाएगा एक पायरेट लॉर्ड्स करके लिखा होगा। वो पायरेट लॉर्ड के अंदर जाओगे तो तुम्हें प्राइवेट डिस्कॉर्ड का सर्वर मिलेगा। अब सीन क्या है कि हम लोग किसी भी रैंडम बंदे को नहीं दे सकते, क्या पता तुम्हारी जगह किसी और को दे दे, फिर तुम्हें मिलेगा ही नहीं कभी आने को, तो वो तुम्हारे लिए बुरा हो जाएगा। इसलिए वो ऑटोमेटेड सीन है भाई। भाभी एक और भाभी दो, ऑलवेज देव। अरे यार अरे बाबा इसका नंबर लीक हो गया था कहीं मैं करके तो नहीं कर रहा। रुको अनबॉक्स करने की जगह मैं तुम्हें एक मस्त चीज दिखाऊं तो बताओ कैसा लगेगा। अपना डेक दिखा रहे हो क्या कार्ड्स का? एक क्रेजी चीज दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा सबको। क्योंकि इसके ऊपर मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है, और इससे मेरा एड्रेस लीक हो जाता है अगर ये गंदा कैमरा नहीं होता तो। और बता के आपने भाई बंदे एआई में डालने हैं। अबे तू और क्यों बता रहा है फिर किस में डालना है? तू पागल है क्या थोड़ा सा भाई? ओ भाई अच्छा ये ग्रेड हो क्या है? ये ग्रेडेड कार्ड्स है और इनके प्राइस दिखाऊंगा ना तेरे को, तू नंगा हो जाएगा रोड पे। ओ भाई तू रोड पे नंगा होकर नाचेगा तेरे को जब इनके प्राइस बताऊंगा। मतलब सबसे महंगा कार्ड बता देना मुझे। मतलब कुछ नहीं बस हाँ। थोड़ा नंबर तो मिल ही गया। देखो ये सुईकून वी है, ठीक है, ये ग्रेडेड 10 है। पहली बात तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी, मैंने इन कार्ड्स को, तुम लोगों ने देखा है मेरी वीडियोस में, मैं कितनी इज्जत से रखता हूँ इनको, ठीक है। गेम स्टार्ट तो नहीं हुआ कहीं? नहीं हुआ अभी भी। अबे नहीं, ये लाइव नहीं है बाबा, नहीं हुआ फिर भी पता चला वहाँ गेम चल रहा है, हम यहाँ मस्ती कर रहे हैं। हाँ तो पहली बात तो मेरी किस्मत अच्छी, किस्मत क्या मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। कहने का मतलब है कि तुम लोगों ने देखा है जब भी मैंने कार्ड्स खोले तब तक मैं उनको इज्जत से खोलता हूँ पूरी, और इज्जत से उनको डेक के अंदर डालना, टॉप लोडर के अंदर डालना, ढंग से करता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से मेरे को काफ़ी अच्छे नंबर्स मिले हैं। जैसे इसमें 9 है, इसमें 10 है, ज़्यादातर में 10 है, वरना 9 हो ही जाता है। तो मैं सबसे पहले ना 10 से अलग रख देता हूँ, ठीक है। और इसमें अगर 10 होता ना भाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना फ़र्क पड़ता। और ये तो खैर मेरा PSA ग्रेडेड कार्ड है, चारिज़ार्ड और वो नाम ही भूल गया मैं भाई का यार, चारिज़ार्ड और वो स्वॉर्ड एंड शील्ड में मेन लियोन। ये पीएसए से ग्रेडेड है? ये PSA ग्रेडेड है, और ये मेरा सबसे ज़्यादा विंटेज कार्ड है। इवन दो ये बहुत ज़्यादा रेयर, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर और बहुत महंगा कार्ड नहीं है, बट ये मेरा पहला और अभी तक का सबसे ज़्यादा रेयर वो है विंटेज कार्ड है। ये 2000 का नियो जेनेसिस वाला कार्ड है। मेरा मन है, मेरा एक गोल है, मेरे को बस एक बार
चारिज़ार्ड चाहिए 1997 वाला, ठीक है, जो प्रॉपर चारिज़ार्ड, सॉरी 2001 वाला, 2001 है 1997, मेरे को याद नहीं आ रहा अच्छे से, जो चारिज़ार्ड है, चाहे वो PSS 6 ही क्यों ना हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे को परफेक्ट 10 नहीं चाहिए, परफेक्ट 10 बहुत महंगा है। चाहे मेरे को PSS 6 ही क्यों ना मिले, बट एक बार वो मिल जाए मुझे, हॉलो, मज़ा आ जाए। अब दिक्कत क्या है, वो मैं ऑनलाइन नहीं मंगा सकता क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर सकता मैं उस पर, वो बहुत महंगा है, तो वो ट्रस्टेबल नहीं है कि मैं किसी से ऑनलाइन मंगा लूँ। वो या तो वो मेरा बंदा ला के दे मुझे, और या तो फिर कुछ क्रेजी हो। भाई क्या कूल लग रहे हैं यार, है ना, आपको परफ्यूम्स ग्रेडेड में पसंद ज़्यादा मज़ा नहीं आ आपके रहा, पास? और इसको होल्ड करके देख कितना फ़र्क पड़ता है भाई, ऐसा लगता है मेरे को कितने प्रीमियम कार्ड है प्रॉपर। बहुत ज़्यादा भाई। सबसे महंगा कार्ड कौन सा है इसमें से? अभी करते ना, अभी देख लेंगे ना ऑनलाइन। देखो ये सारे 10s हैं, ये 8s हैं, और ये 9s हैं, चोरी मत करिए सारे, ये सारे 10 है, ये 8 है और ये 9 है। एक बार देख लेते हैं, मैच तो स्टार्ट नहीं हुआ ना, बस जब तक मैच स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक हम ये मस्ती कर सकते हैं, उसके बाद हम मैच देखने जाएंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है, गैरेटीना भी, अच्छा ये लिखने की जरूरत है, 185/196 PSA 8। अरे ये गलत जगह सर्च कर दिया क्या? नहीं, ये है ही नहीं सेल में, दो ही ब्रो लिस्टिंग है। आप दोनों को गोजो एंड सुकना मीज कौन अच्छा लगा है? किसी फेस किसी फेस किसी फेस किसी फेस किसी फेस किसी फेस किसी टू, किसी U2, और मेरे उसका आ गया भाई, नंबर तो नहीं दिख रहा ना कहीं। हेलो ब्रो, डू यू हैव दिस वन पीस 05? OP05, OP05 तो नहीं, OP0 मतलब पैक्स होगा अभी सिर्फ, मेरे को बॉक्सेस चलेगा, OP02 और 3 का बॉक्स हो सकता है। 02 और 03 का बॉक्स होगा और 05 का पैक होगा। नहीं नहीं नहीं, 02 और 03 बजे अभी दोनों बॉक्सेस और पैक्स में होगा। बॉक्सेस है? बॉक्स अभी श्योर नो, हाँ एक दो तो सील लगा था मेरे पर, श्योर नहीं हूँ मैं, सुबह चेक कर दूंगा मैं। डन 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 डन, मेरे को बॉक्सेस का बता देना अगर पड़े होंगे ना दोनों के, और अगर 05 मंगाना होगा तो पॉसिबल है क्या मंगाना? अब जापान का शिपमेंट कल परसों निकल रहा है, अब लेट हो जाएगा। हाँ है ना, वरना वाले शिपमेंट में आ जाता तो बेस्ट हो जाता है। हाँ मैं नेक्स्ट वाला जापान शिपमेंट जल्दी हो जाएगा, मैं उस टाइम मंगा दूंगा। डन, मेरे को बस एक कॉल लगा देना, ठीक है, जब भी जापान वाला शिपमेंट आएगा अगला। ओके ओके ठीक है, बाकी मेरे को कल सुबह बता देना वो उसका जो भी सीन है ना, वन पीस का क्या क्या पड़ा हुआ है। ओके 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 ब्रो, गुड नाइट। ओके ब्रो, गुड नाइट। ओके ब्रो। अरे बहुत सही बंदा है भाई, सॉर्टेड बंदा है ये भाई से। मैं ऐसे बल्क में लेता हूँ ना, मैंने अगर तुम्हें बताया तो तुम क्रेजी हो जाओगे, बहुत ही खतरनाक भाई। मैं से ऐसे बल्क में लेता हूँ ना, बिल्कुल एकदम ऐसे, ये भी दे दे साले, ऐसे कर देता हूँ मैं अभी भी पैराडॉक्स रिफ्ट और सब कुछ इसी से मंगा रखा है मैंने, बहुत सही बंदा है, सॉर्टेड है, प्राइस भी सही लगाता है वैसे, क्रेजी नहीं। तो ये तो खाली ये बहुत सस्ता हो गया है, $18-19 का ही है एक्चुअली, 8 है ना यार, 8 से बहुत फर्क पड़ जाता था, बहुत ज्यादा। अभी लाइव स्ट्रीम काट दी मैंने, लाइव स्ट्रीम नहीं काटी बट क्या काट दिया? देव आंखें बंद कर, ऐसे कर, ला 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 ला, अब खोल ले, बस सही है। ब्रो आप दोनों को गोजो एंड सुकुना में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है? भाई यार वेरी इजी भाई, बताओ, वेरी इजी। मैं बताऊंगा नहीं ना, पर उसने ये थोड़ा पूछा कि बताओ, उसने बोला कौन अच्छा लगता है, तो मैंने अपने मन में बता दिया, गोजो सादरू गंबरे गंबरे गोजो सादारा रोही की तन्हाई। अरे यार पुननो फिजोसी। अरे यार
मारो मुझे मारो। ये खाली देव को पता रहेगा हमने क्या करा है। ओ भाई, ओ भाई। भाई जो ये जिसने सुपर चैट दी उसको एक अच्छी बात बता दूं। बताएगा तो तेरे नहीं, पिछवाड़े में लात मारूंगा मैं। ये नहीं बस सुकुना कौन सा वाला बोल रहे हो, इटादोरी वाला मेगुमी वाला? ये भी है। कौन सा बोल लो भाई? देखो मेरा तो सिंपल है भाई, तुम पूछोगे कि मेरे से सुकुना या फिर गोजो तो मैं इतादोरी बोलूंगा भाई। देख रहे हो मैं यहाँ का गौतम गंभीर हूँ भाई मैं। रोनाल्डो या मेसी, वो कौन से प्लेयर का नाम लेता हूँ, भूल गया यार मैं। भाई यार गंदे लोग भाई, गंदे अगर लोग। भाई ने मांगा नहीं पड़ेगी, भाई बोले ये क्या बोल रहा है, ये क्या हो रहा है भाई? भाई मेरा तो चलो अब कौन सा है? ये अब ये वाला, ये तो हो गया ना। खैर ये 8 भी, ये वाला भी कुछ क्रेजी नहीं जाएगा फिर। 188 189 188/189 ये तो बिका ही नहीं आज तक। 8 में 10 कर देते एक बार। 10 में भी कुछ क्रेजी नहीं है नहीं। मतलब कमी का जाएगा ये भी, वही है सेम क्राइटेरिया के जैसा। मैंने क्यों करवाया होगा ये? इससे ज्यादा तो पैसे लगे मेरे करवाने में। हाँ ना, ग्रेड में ज्यादा लगते हैं ना। क्योंकि वही होता है ना, 10 निकल गया तो तुम्हारा क्रेजी पैसा आता है। 9 TG06 गेंगार। देखना 9 यार कुछ क्रेजी नहीं है। इसी को अगर 10 कर दूंगा तो 10 में कितना गया होगा? 930 है, 1050 है, वही है, कुछ क्रेजी नहीं है। वही है, 9 और 10 वाले गिनेंगे ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हमें जाना पड़ेगा सीधे यहाँ 10 वाले में डायरेक्ट। पर अगर इसका प्राइस देखें एक बार। ही जगत भैया तू साले तेरे को बताता रुके, जगत भैया वाली अलग से कान में आवाज आ रही है भाई। यहाँ कुछ चल रहा है, वो एकदम से आवाज आती है, हे जगत भैया। कुत्ते का चेहरा, 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 कुत्ते का चेहरा। मतलब समझा नहीं मैं। तेरे को पता नहीं चलेगा ना क्या हो रहा है। तेरे को आवाज नहीं आ रही होगी ना उसकी। अच्छा सीओडी मोबाइल में नाम ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, देव ऐसे बोल रहे हो लोग। थैंक यू। हाँ थैंक यू बोल दे बस इनको। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू बोल रहा है स्वप्निल तेरे को ये, ठीक है? स्वप्निल कुत्ते का चेहरा, कुत्ते का चेहरा, कुत्ते का चेहरा। अबे भाई थैंक यू बोल दिया भाई ने, लेकिन यार भाई बोला थैंक यू। 9 वाले साइड ही कर दो। अब आएगा 10 10 पे आते, 10 पे। चलो भाई अब आएंगे मजे। पास हो गया है? अच्छा पास 10 सबसे पहले देखते हैं। भाई पहले हम कितना भाई कोई भी हम मैच देखना था फुटबॉल का, इनाजुमा है भाई अलग ही चल रहा है भाई। वहाँ फायर फिस्ट पड़ रही है, क्या पड़ रहा है भाई पता नहीं। ये $50 का है भाई। हाँ अब आई ना बड़ी बातचीत अब आई ना। और ये होगा महंगा, लिख के ले चल। ये लेडी वाला, हाँ ये बहुत सही कार्ड है। ओह नहीं यार सॉरी यार, देना $65 में बिका तो है, बिडिंग हो गई। अरे बाबा अब आया देखो रेनबो का। रेनबो पहला रेनबो ये लग रहा है तगड़ा। और ये सीक्रेट रेयर भी है देख, 120 आउट ऑफ 100। मैं टक्का चेहरा में $60 भाई। ये क्यों ग्रेड करवाया मैंने? इससे बढ़िया तो मैं यार अब वन पीस के कार्ड खोलना शुरू करता हूँ। अरे ब्लीड भाई आपके पास पढ़ा है ना पोकेमोन गो में? हाँ अच्छा यार, फ्रीड भाई पे तो वो पढ़ा है। मेरे पास म्यूटू पड़ा है। अब म्यूटू तो मेरे को पता है नहीं। ये आपके पास वो पढ़ा है ना, उसको क्या कहते हैं, रेयर कहते हैं, क्या कहते हैं यार उसको? लेजेंडरी, अलग कलर का शाइनी यार। फ्लीड भाई क्या किस्मत है यार। किस्मत तो है मेरी। ये भी $60 का है वैसे। ओ ये अच्छा है, $60। शाइनी होता मजा आते हैं। मतलब ऐसे कार्ड में भी शाइनी होता है क्या?
ये बेटा ये लिख के ले चल। अभी तक का मैंने जितना फेंका भाई, लेकिन ये तगड़ा है भाई। हैं? हाँ अननोन। अबे यार ये भाई इनके कार्ड के पैसे गिर गए भाई, मुझसे लिख के ले ले यार तू। ये बहुत बहुत महंगा था भैया यार ये एक कार्ड एक बार टाइम लम्बू पे। आयशा तो बोल मैंने रही निकाल दिया 4000 अभी। रुपए का, 4000 रुपए का बिक रहा है अभी ये। पहले भाई, महंगे थे। पहले महंगा अच्छा था यार प्राइस ये। ऊपर नीचे आता होगा। हाँ ये मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली फिर इनने सिल्वर टेम्पेस्ट वो करा है, मेरा ध्यान बीच में हटा ना अभी, तो इनने मे भी रीप्रिंट करा है। रीप्रिंट करेंगे तो सीधी सी बात है फिर वो ओ सस्ता हो प्राइस गिर जाएगा। जाएगा। हाँ मल्टीपल क्योंकि कॉपीज ज्यादा बन लोगों जाएंगे। पे आ गया ना। ओके 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 तुम सालों ओके। पोकेमॉन वालों, तुम मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो ना। हैं 40,000 इतने का? भाई $45 जा रहा है। ये है भाई गाइस, ये कार्ड जिसको पता है उसको पता है भाई। ये हमारा पहला कार्ड है, राजा कुआ मैक्स। राजा कुआ वी मैक्स। तो ये जा रहा है $100 से ऊपर। भगवान जाने, लेकिन जाना तो चाहिए। जाएगा 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 जाएगा। इन साल ने रीप्रिंट कर दिया यार सिल्वर टेम्पेस्ट, बताया भी नहीं। बोले बताया नहीं क्या, मतलब पता ही नहीं ओ चला। ये सबसे महंगा है। हाँ महंगा है सबसे बड़ा। $70 का बिक रहा है। सबसे महंगा ये ये कितना होता है 7 8 जा कितना होता है गाइस? 8 5 40 48 56 56 होता है, 63 62 होता है, 60 64 होता है। राउंड फिगर 7,000 मान लो यार। 8 7 जा 64 नहीं होता, नहीं 8 8 जा होता है 64। हाँ सही तो बोला था मैं 56। मैं दिमाग खराब कर दो ना तुम लोग। ओह ये भी कूल लग रहा है। 237 आउट ऑफ 170। ये $30 देखा भाई तू तो बड़ा ही जादूगर आदमी यार, अपना यार। मुंह बंद रखा कर। ओके मैच स्टार्ट हो गया। वो मैच स्टार्ट हो गया। Across the hallway, smoke comes through from the भाई हम middle. कैसे ना कैसे करके टाइम काट रहे हैं, वहाँ गेम शुरू हो जा रहा है। Contest over the jump spot for Tribe, not उसका going to है result in और too ट्राइब much का of दोनों ले की टीम भाई, है। दोनों अच्छी टीम है, दोनों भाई top ये की मजा टीम है आएंगे भाई। ये मजा आएंगे। दोनों टॉप की टीमों का मैच हो गया। ले भाई ये लास्ट गेम आज का गाइस। ब्रो ये लेकिन लास्ट गेम आपको आज क्या का। लगता है सुकुना को डेथ पेनल्टी मिलेगी या नहीं? बाय द वे गोजो और यूजी वाला सुकुना दोनों हाई हॉट है। ये गोजो और यूरी वाला सुकुना दोनों ही हॉट है यार। ले बेटे हॉट पता कौन है? भैया Itadori. on this rotation is a good one. They didn't have more than just a single player inside of the Lambo for the new hill. भैया लम्बू लम्बू टू गेम Their way मैक्स। through the mansion and have players पापा पापा GTR दिला दो भैया, शाउट आउट प्लीज। शाउट आउट टू यू मयूक भाई, दिलाता हूँ आपको ठीक है। मैं पहुँचा रहा हूँ घर तक। कल ले लेना डिलीवरी निशान जाके। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? पापा GTR डेल डू यहाँ 10 शाउट रुपए आउट नहीं है जेब में, सुअर का चेहरा, सुअर 2.5 का करोड़ की चेहरा, गाड़ी सुअर का खरीदनी है चेहरा। मेरे से। लेनी है। यार कोई ना कल ऐसे बोल रहा था कि यार ये पोकेमोन कार्ड्स तो सिर्फ तभी लेना जब तुम्हारे पास पैसा हो। पॉइंट है है ना? हाँ अरे भाई यार सुनो मेरी बात, सुनो 13,500 का एक वो लेना बूस्टर बॉक्स और 2.5 करोड़ की गाड़ी लेना अलग अलग चीज है। एक तो नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, मतलब पैसा है 2-3 लाख के लेना और 2.5 करोड़ की गाड़ी लेना बहुत फर्क होता है। 2-3 लाख के कार्ड और 2.5 करोड़ की हेलो गाड़ी में फ्लीट फर्क भैया होता है। एक ले प्रकाश भैया उसका इतने में इंश्योरेंस होगा, मजाक से। जब जाओगे ना इनकी 2.5 करोड़ की गाड़ी की वारंटी रिन्यू करने, तब पता लगेगा 4.5 लाख रुपए लगते हैं। मेरे को कैसे पता, मत पूछना मेरे से। कैसे पता? क्यों बताऊं? Slug has been that player now, going over towards P2 as well as P3. Is always trying to be the tip of the spear for Tribe, or the tip of the axe as it may end up being, to try to get themselves the rotation over towards New. But there's a lot of focus across this north lane for Wolves. Yeah, Tribe able to shut down the claw though. That leads to an opportunity to neutralize the hard point. Space trying to find some work in areas. पापा ओली से शादी करवा लो। अबे यार। Just trying to see if you can freeze some toes. There we go. नहीं बेटा, ओली इज नॉट योर टाइप। Range though. War Machine also being assisted and ले भाई उसने एक नेट से 2 बंदे फेल दिया। बराबर चल रहा है गेम पूरा, देखना नेक टू नेक है। इतने पॉइंट तो ऐसी मजाक में आ जाते हैं, मतलब अगर सही से होल्ड हो तो। ले देख होल्ड कर दिया उन्होंने। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे ब्रो। भाई वुल्फर ट्राइब देख तो लिया हमने कल उनका गेम। दोनों की तो तगड़ा खेल रहे हैं, दोनों अच्छे प्लेयर। और ट्राइब ये यूनिवर्सिटी से हारी और वापस आ गई ऊपर। ट्राइब कायदे से पिछले साल की विनर है यार। Trying to get players through the rotation, just sprinting through the middle of the map. Wolves trying to get themselves their numbers so that way they can win the rotation. Looking pretty good for it.
Peg was in a little bit of trouble though, so Tribe not going to be in the hard point 67, first, but do have the opportunity to get themselves set up. No offers being popped as of yet. Here's the X Factor, Zai in the corner. Able to take down one. Tribe also shutting down the Sparrow. A couple of clean kills come through, and it's Rapallo again. How big has he been for this team? He's on 18 kills. देखना वो क्या कहते हैं ट्राइब वाले कैसे हाइड कर रहे हैं वहाँ पे उनकी कैप्चर पॉइंट है ना Wolves now immediately trying to get themselves back in. Peg, Zai working together, and they will be enough because why not have been. है नींद आ रही है सो जाऊँ क्या सो जाओ इसको नींद आ रही है इंस्टेंट सोने जाओ वेट मत करो Honestly, you can fight over it because it'll give you immediate top halls control, which can set yourself up for P1. These close P2 spawns coming from Tribe to try to get at least the last few seconds over inside of P4. Might just be and it will be the case. 87 to 80 will be the score going in towards the second set, and Wolves are absolutely slaying the hell out. 17 kills for Zai, 16 for G, for Peg. Your usual suspects just showing up here for Wolves. Trying to catch timing over towards Spiral Staircase, only catches ये जाएगा मुझे लग रहा है 5 राउंड प्रकाश 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 आप इस भाई कुछ कह रहे थे ये था ना ये भाई था 90 plays 86. Try looking to take their lead for the first time in a while now. स्वप्निल बेटे सुअर का चेहरा बना दूंगा सचिन ये नहीं पता लगा यार इन सब लोग को कैसे पता है आपका रियल नेम यार देव के पापा का रियल नेम बताता हूँ आज pretty much 50-50 all the way through Fountain. You look at it, Delisa of all the kills, Rapallo was up to 24. Hunter Killer Drone will be invested, has the operator should you want to use it. Claw now invested. तेरे रियल पापा का नाम भी तो अंशु बिष्टी है इसमें अलग क्या है भाई यार मेरा नाम पंकज सिंह देव है यार कैसे हाँ तो अंशु सिंह बिष्टी है अरे कुछ नहीं यार मेरे बेटे ने इनहेरिट नहीं करा बस मेरा नाम थोड़ा मॉडर्न एडवांस हो गया ना लड़का चलो ठीक है यार ये कार्ड सारे मेरे अबे ओए चल बे ओए कुछ नहीं मिल रहा तेरे को जेन्युइन है ना चलो यार मीट भाई कौन सा कार्ड यार चैनल के पासवर्ड लो यार मैं इनकी अम्मा वेट आ जाऊंगा मैं स्प्लिट भाई सोए हैं पूरे कार्ड गए मैं और स्टोरी डाल रहा हूं देख रहे हो ये मेरा लड़का नहीं है क्योंकि अगर ये मेरा लड़का होता तो ये कार्ड के पीछे नहीं जाता ये बोलता चैनल के पासवर्ड दो देख रहे हो शाउट आउट बीएलएसएम भावेश 24 मारूंगा ना भाई तुम मुझे मार भी नहीं सकता मैं तो बिल लिख के गया हूं मेरे बेटे को कुछ मत Wolves were still spawning close there. Both teams were, in fact. So if you are Tribe specifically space, you felt that you needed to invest that Purifier just to be able to swing the back 20 seconds. It's a big one to have for yourself, but you still have close ones coming through from Wolves. 10 seconds left here on P2, and the rotation also needs to be required. Wolves have the easier opportunity. Tribe investing their last bit of numbers to try to get in towards this old hill. Mewtwo है तेरे पास themselves this 10-point lead, but it's looking like Wolves are going to set up once again here at 3. वाह वहाँ इवेंट हो रहा था तू आता कैसे दिल्ली यार पोकेमॉन गो के लिए कहीं भी पहुंच जाता तुमको पता नहीं क्या बस लेके आया था मैं ये भी कम हो गया यार $50 हो गया अभी 4000 का हो गया बट सही है यार मैंने पता इसको कितने में किया है मैंने इसको 1300 में अपग्रेड करवाया था और नॉर्मल कितने का है Wolves from the front have tried to find a way to break this. Rehan trying to keep them at bay with the Annihilator. Slid on, but doesn't matter. Rehan hits the first. Now a chance to either establish control or take this into the spawn of Wolves, which has been flipped over to the backside at fences, but it looks like for Wolves, they're going to be late on this break attempt. And Tribe are going to be getting a lot of time because of it. Keep in mind, this is supposed to be a recontest of all things for Wolves. The offers for the operators that were being invested for Tribe is going to be the spearhead, the catalyst, if you will, for the majority of time here at P3. 15 seconds left, and Wolves might just send a couple more members just to try to battle for the last 10 seconds, getting inside the hard point, which is perfectly fine. Now it's Tribe with a 30-point lead, and the Hellfire's rotating over towards New. Bhavesh 24 shout out to you, bro. Also building. 34 kills for Rapallo. Mushroom suar vamu Really having it their way right now. Zai up top. Found himself a garage. He's going to use this to lock down rotation. Here comes the hit for Tribe. War Machine shut down in the corner. Peg able to follow up on this. Opportunity for Wolves to get some numbers, but as Thug keep double मतलब यार देख हमने अभी तक का जितना गेम देखा है भाई 25 कुछ नहीं होता है ना 25 कब बराबर कर देते पता भी नहीं चलता बट अभी कैप्चर नहीं किया ये Tribe all over the hard point and growing their lead. तो फिर थोड़ा वीडियो को कितना अच्छा होल्ड कर रहा है spawns coming through from the Lambo side. One player does spawn out. It's going to be Zai there for the pin. बेस्ट है बस तुम्हारे बंदे के पास स्मोक होना चाहिए जहां पर तुम होल्ड
तेरे पास hardpoint, स्मोक the डाल hunter दो killer drone will at least take down one और more. घूमते रहो। But you feel like the damage मतलब मैं was ये नहीं कह रहा done. कि There वो was a second अनडिफिटेड set हो of गया, hardpoints for Tribe. बट तब भी Not only मुश्किल have हो they जाएगा got the अगले lead, they बंदे have made it about 40 points. Wolves have to find a way to claw themselves back into this game. This scrap time could be massive to try to assist in that effort. 3 operators at the ready. How much do we see spent as we rotate over to Fountain? That's the true question. As Tribe continue to make things punishing, and not really any seconds were earned there at the end of the scrap time for तुम Wolves. तो भाई यार कुछ नहीं जा रही हो तुम entirety of it, and the final 5 तुम्हारी actually ऐसी go की and भाई तुम अलग लगी पड़ी हो game. Wolves will be बाबा hitting यार from the पिज्जा ला opposite गया side. खुशबू आ रही Tribe on the है opposite through art. Back and forth battles all वो over वाला the बचा high है ना ground. फार्म Neon trying to change things up, and he's got Aslan who goes to the drop shot. Oh, it's filthy. And Tribe Gaming have the numbers in the hard point. Big old tango up top in the hallways. This is a big difference maker. Equalizer pulled out by Solo, shut down. Just getting as many resources out before we rotate over towards P2, but Wolves need the time. This could be the desperation moment that Tribe can catch them lacking. देख मेरे को जहाँ तक याद है कल मैंने जब गेम देखा था तो बुल्स उसमें बहुत अच्छी थी स्पाइक प्लांट बहुत तगड़ा गेम मेरे को लग रहा है ना पहला मैच होगा जिसमें चौथे पांच ये पहला मैच दोनों टीम अच्छी है बराबरी की टीम Zai finds himself on 4, big triple for him. Has the operator at the ready. Looking to spam down more, but Rehan will take him out of the hard point. Peg forced to still contest. Again, every second is a bad second that Tribe earns if you're a Wolves fan. Over towards rotation. Keep your eye on the minimap. जितने पहले खाया अब थोड़ी दिक्कत आ गई अब दोनों भूखे रहेंगे मुंह से पानी निकल रहा है अरे आप लीजिए अरे आप लीजिए बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम हम स्टार्ट करो लेके अंशु भैया का नाम वाह 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 ये है भाई कौन सा नाम बताओ AKB गेमर Sparrow will assist in the break. Now the claw to reinforce the hold. अरे बाबा वापस कर रहे थे वो हो गया कमबैक हो गया Oh my goodness, Rapallo spawns in. चलो यार I'll break the stereotype आज बाप पे the Sparrow out, and that changes things dramatically. Slug from one side, the rest of Tribe from the other. They cannot win here, but again, they're able to put this thing at least at 240 if they can find every final second. It's looking pretty good for it too. Rapallo spawning in, being the benefactor from that spawn occurrence. Pulls out the War Machine, layering in more damage. It's causing Wolves distress that they have to pull out operators of their own just to try to answer back for this time. We're fighting for all of 5 seconds, plus you have to get the rotation over towards New as well. Wolves will have it once again, but Tribe are trying to battle for the old time. It's going to leave them a little lacking as far as rotation towards New. That could be a costly decision. Remember that final hit from Tribe. If Wolves are able to hold things down, they've got operator advantage. The gravity vortex comes back first. Slug sucked into it. No problems there as the vacuum continues to find kills. Space hit in the face with a hunter killer drone. 190, 228. Tribe not really putting together any semblance of a setup here for a break attempt. Bro, seriously भाई 200 आ गए हो ये तो वही वाला हो गया गॉर्डन वाला साहब मैं पट गई थी उसमें This is how a breakdown can happen. 30 seconds to let the fight over. Tribe can close out if they can find the break, but there's no point of interest to be able to work their way in. One player does spawn out. Rapallo needs to find a way in this spawn once again, but still kills. Going back and forth, Predator missile also being used by Neon. They're keeping them at bay. Tribe is losing complete composure. Everyone's trying to solo chow this. No break comes through. भाई ने एक मिसाइल मार के दे दिया भाई वो तो है कितना क्लोज हो गया हो नो वे भाई टॉप की टीम लड़ती है ना वापस में The major lead starts to all वो of a लीड ले ली sudden battle against them. We rotate to भाई new. इसीलिए कहते गाइस नेवर गिव अप Never give up. Going to be there first, but he gets gunned Never give up. and now Wolves will have Never. numbers and a chance to fight. Spawns for the boathouse. 2 players strong. Rapallo अरे and बाप Space ने are ले going to be ली setting up मुझे। for the pinch. At least some trades to speak of. Tribe have found themselves in, and Solo pulls out the equalizer. Lifeline from Solo. The equalizer gives him a double. What can be used for Wolves to try to break this? They're hitting from 2 sides at once. Kills start to come through. Solo, the last one standing. अरे भाई Solo able to find अरे another भाई 2 ब्लू kills. ने ले लिया Time and space for Tribe to get back वुल्फ in ने ले the लिया game. चल रहा है प्राइम ने ले लिया वुल्फ ने ले लिया ये कितना क्लोज गेम जा रहा है भाई 9 पॉइंट ले भाई ओ भाई अगर वुल्फ ने निकाल दिया ना भाई सल्यूट मारेंगे दोनों भाई 49 नो वे भाई सल्यूट भाई क्या खेल भाई कमबैक
steal away their bread and butter hard point. They had themselves somewhere near about a 50-point lead going in towards that set of hard points. Alan, that is Hello bro, watching you since you have 200k in shout. सही बात है यार, सही बात है. Hello bro, watching you since you हर्षित तुम तो नहीं बोलो तो अच्छा. मैं 100 के एक shout out. Numan Codmore भाई, thank you so much, love you यार. Shout out to you bro. भाई कितना close गया भाई, उन्होंने फिर भी जीत गए भाई ऊपर से. Yeah, good night baby, good night bro. Operators, it came down to the last ditch effort from the team captain of Solo with the equalizer there at the end. Bro, Bulls ने क्या खींचा है गेम भाई, मजा आ गया. Pull out there and keep them at bay there at P4. And I will say, not only is the decision for trying to hit that scrap time super costly, Gamerton show, but thank at the you. same rate, you gotta hit the regain button. You can't just keep going in 2v5 and expecting that things are going to go your way. And then I think the final thing, and maybe the more impressive part, we weren't really sure what Wolves are going to be able to give to us in the hard point. We knew that they're going to be a great search and destroy team, but their ability to manipulate spawns here, perfect. Yeah, I mean, they're anchoring the left side of the map. They know for a fact that Tribe have to be hitting them from both sides, and then at that point, the operators of a War Machine and a Purifier aren't going to get beat. And Q9, I'm sure, just got injected with a huge life force, stealing that map. भाई seriously यार, Tribe जीत चुकी थी भाई. Back in the chair, just getting the job done there at the end. हमको तो लगा खत्म भाई, Tribe जीत गई. हमने बोला कि ठीक है स्पाइक वाले में जीतेंगे अब. Was the tip of the spear more often than not पर for these Wolves ने क्या rotations, comeback कर दिया भाई. but just simply was not enough for the combined 104 kills between Jing and Zai. Typically, it's both मीसुए का चेहरा टू ऐप पांडा का चेहरा 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 पांडा का चेहरा. Favorably towards Wolves. Yes. I mean, again, it is a bit bizarre. Like, to get talking through the hardpoint vetoes, Tribe had to make a decision. Do we take out Takeoff or do we take out Summit? Those were the two maps that Wolves really ran through China on. So दो लड़की एक ग्लास देखा है. Somehow Summit still doesn't get कोई hit. इंटरेस्ट नहीं है भाई. So it is a bit bizarre, and it kind of feels like, I think, when Tribe are looking at the maps and saying, we kind of got away with one here. All we got to do is win our opening hardpoint, and we've got extra lifelines built into the भैया series. आपने दो लड़की एक गिलास देखा है, मगरमच्छ ड्रैगन का चेहरा घोड़े का चेहरा. मेरे को बताया एक दोस्त मेरी सेट मत करना. दो लड़के पॉटी का दी होती है. Yes, they sure do, because we were setting ourselves up for that map number 2. It's going to go down on Meltdown. This is a map combination that we did see yesterday versus for this Wolves roster, where they completely blew Kajendra out of the water. 7-2 was that final scoreline in recency. भैया मुझे वामू गैंग की टी-शर्ट चाहिए, दिला दो. Let's just call Buck here. It is S&D. This is Wolves' wheelhouse. Yeah, absolutely the case. And that was the one thing we for sure knew coming into all this, was that the Chinese teams were going to be a major threat in search and destroy. They value it a lot higher just in their format and play style than what we see out west normally. And then that said, you know, there's a mixed bag of results here for Tribe. I'm just kind of going through the canals of my brain here, really thinking back to Tribe in particular on this map, and it's either hot or cold. It's not just by instance of them playing it. Sometimes they have a super hot first half and a super cold second half. So it's not a convincing map for Tribe in any form. It's their most played, sure, but there's nothing out there that has me going and saying, this is how Tribe for sure win this map. पूरा दिन पहले है देव में, धूप में really solid on it as well. Well, take it as what happened yesterday. Even this was the map number 2 when they were facing off against Luminosity in the Swiss stage. Yeah, and LG's always had their number on this map. Absolutely, but it was still tied 3-3 at the half. But then once sides had swapped, Tribe were nowhere to be found. It's again almost feels very similar to what we just witnessed there on the Hacienda map number 1. They had themselves at least an even game, a little bit of a lead, and they couldn't close things out, let alone find some semblance of consistency to be able to win that map. Yeah. Here's the thing. Here's the John Madden comment. They have to play 2 good halves of Search and Destroy here. Wamu gang. Have to have it. Fist bumps are out. 5 million. Wamu gang. Wolves, huge advantage in the mode. But does Tribe find something over all of the reps they've had on this map to merit the selection, the pick, and a chance to even up this series? Because I'll tell you flat out, if this thing ends up getting to 5,
and you have to play up against Wolves on Tunisia. अब तुम सोचो कहीं मीटअप हो रहा है और तुम ये पहन के आ रहे हो भाई मैं तुम्हें दूर से उछाल के गले लगा Very quick offensive attempt coming through from Wolves over towards A. Might as well feel everything out, but a nice nade from Neon for first blood and King for the second. Numbers advantage very quickly for Wolves. And this is the problem. This is where Wolves really, you know, kind of cashes their checks. Is as soon as there's opening first blood, Zaya is going to be already in your face. He's so aggressive. He is like the Chinese shark of EU, if you want to call it that. Stretch, I know. That's fair though. Yeah. Tag with the plant. Wait, that's Doug. Will find the kill. Unfortunate, he wasn't able to find the timing to stop that from being planted because now, even in the 2v2, clock favors Wolves. Space, awkward battle, and says, all right, you go down to the tunnel. I'm going to go help my teammate over here. Oh, and Neon able to find the kill. Just down to one. That's Doug. Re-wrapping back. Not a lot of time to make this happen. मैं तो बोल रहा था बुल्स अच्छा ही खेलती है इसमें Gonna have Neon right on the corner, and that will be where he beats his banker. Wolves, quick offense. मस्त लग रहा था ना Blank. Snipe coming through for Neon, who's आज मेरा बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू शिवम absolutely been electric this entire week. भैया मुझे Realistically, his GamerFleet entire चाहिए मिल career सकते हैं finds क्या within that previous round. The sniper is nothing too bad in सालों eyelash. मुझे Tribe खरीद लो do need तुम to be aware of these opening nades that Wolves are going to have for them in this opening offense. Second take here for Wolves. Kind of slowing down the pace. Not all 5 players rushing in towards A. Yeah, Tribe's trying to beat them with that same aggression, though. Hipfire not going to land solo to the pistol. Lots of damage, but no kills. मूवमेंट देख रहा है तो Pick बुल्स up the वाले damage की dealt, though. बट Now ये the ट्राइब focus तक तो goes back पेल over है towards भाई mid-map. छीन लिया हमने Peg सबको has snuck his way through, and even though है we're in a 2v4, Peg may find time to catch a handful for free. Just decides to get the one and get out. Recovery still required, though, here for Wolves as the bomb was dropped over towards A. And look at the coverage just around A as a whole. You also have an understanding from Meslug that somebody should be around the flank. Peg is just expecting someone to drop down the ladder. Are they going to pass each other like 2 ships in a night? Really, there shouldn't be a reason that Estug has to move. His only responsibility is to बुल्स watch को this पता है ना वो cross. अटैक कर रहे हैं Peg trying to find things. जाके in the एंगल होल्ड backside कर रहे हो of साइड the में Tribe spawn. स्पाइक ड्रॉप कर दिया Nothing yet. He's going to try to re-approach this from mid. Oh, but King sees Whoa! Damn, 2v2. Tribe is completely isolated. 2v2 Here comes Peg. देखो ट्राइब वाला कैसे खड़ा है देख Has to hit this 2v2 आ गया भाई if he decides to commit. Meanwhile, other पर side of the क्यों map, 40 सेकंड है तुम्हारे पास स्पाइक गिरा है ना it's a sniper battle. तभी Who's कह hit रहा हूँ first? अटैकर को Pistol जाके out लेना for चाहिए ना King, and at the अबे जीत same गया वो moment, Peg does cross with that thug and still finds the kill. बंदों को हंट कर देने का स्पाइक जाए Wolves बाहर में 2-1. हंट करेंगे हम Very interesting to be able to ये तो find stupid yourself in बना a था भाई। 2v2, and the answer is, well, let's just completely separate from each other and just find ourselves clearing different sides of the map rather than trying to conjoin over at A. It works out for Wolves. They have a 2-0 lead now. Going back to their first round strategy, this time 4 players strong inside of A, while 1 watches perfect for lead both भाई teams. This time Tribe kind of paying back a little bit of respect. But that told, Snug still drops. Wolves Bring full big control fan of A. support World And I of will say, Cars thinking back to season 4, this is 2674 how LG beat him too. Hit him with aggression, and if there's no answer defensively, just keep doing it until they figure it out. And with Neon collecting another elimination and the bomb being planted, it's looking good for Wolves again in their post point. Realistically, all going to have to either come through mid or through the front of the defensive side of A. You don't have the numbers to try to do it. What throwables do you possibly have in your arsenal to try to work your way back in? आ गया Wolves पे round आ गया अभी Rehan looking for jump peaks. 30 He's been seconds tagged. King also gets a read in the player mid-map. क्या That's good snipe मार रहा है information for बड़ी the post बंदा point यार defenders inside the site. In देखो particular, पिछले it's गेम में Peg. कैसे निकाल दिया Meets it head on. More play from Rabalo. Jake now looking for a bit of a cross up, and easy kills come through. And this is just rinse, wash, repeat for Wolves. Tribe have to give us an answer right here, right now in round 4, or the search may be out of hand. Crazy call for a strategy. I mean, if you can't figure out our aggression, what are you going to do? Just continue to be aggressive. Why not? It's been working out. Where are these nades going if you are trying off the rip to try to stop this? Yes. They've been trying to get stuff down over towards A, but it just has Snipes not are the landed. best in COD Spoke out game. towards mid. Different hit for Xing. Trying to get deep, and uh-oh. Honestly, bhai. In trouble is Rabalo. Down to half HP, trying to finesse his life, but there's nowhere to go. There's no help anywhere either. I mean, Tribe, they're all statues. They're planted in cement. No one's moving over to rotate to assist in any form, and now the B site's wide open. You've got players in your spawn. If you can't tell by the cadre of my voice, it's just embarrassing. Wolves are making an absolute face out of this Tribe defense. Just completely और catching Wolves वालों को देख के Tribe लग रहा है उनको मैप पता है वो होल्ड कर रहे हैं thinking that they're going to go over towards A. They just completely bulldoze them over through the middle of the map, take the player down on the B heady. Numbers favoring that for Wolves. Nobody was surprised, looking for round number 4 in a row.
And I'm lost on options in terms of what do you do to crack the code here. बाबा अगर 2v4 At the moment, it's just down to can you make an individual play. Solo gets some real estate, but it's not for sale. Now down to S-Thug. He's stuck. मुझे लग रहा है कि उनको मैप ही नहीं पता है ट्राई वालों को. Now floaties. मुझे लग रहा है पहली बार खेल रही है इस मैप पे. Nothing's keeping him afloat. 4-0 up our Wolves. And oh boy, this is getting real ugly real quick for Tribe. Cement shoes almost coming through for Tribe as far as this water joke is concerned. It almost has to come down to it that, look, you might as well 5-player stack something defensively, and if they're not at that bomb site, just try to flip out the map, because these nades at the beginning aren't stopping anything. Wolves are, again, switching their effect, not going over towards A, not hitting mid or B very quickly. They're waiting for the information and the nades to come through before they decide where they want to go. Thank you so much, Rose. Patience here for Wolves overall. Tribe, I'm sure, is going to be happy to see all 5 members last for more than 15 seconds in the round. Can they use that as an opportunity to get themselves on the board here? I'm sure it's starting to creep into the defensive minds. Tribe have not seen anything at all yet. You got Raballo, who snuck a little bit forward over towards A-side reactor. He's going to make sure no one enters. Space is the one trusted to watch this cross, but he gets smoked out. So now you look over to Solo and Raballo. Can they rotate in? This plan, or are Tribe just going to play full retake? Nades over the top will work. Okay, good discipline from Space to get the first blood. Seems that the full-on retake might just be the case. I mean, look, if you are Space, you are watching this with the sniper rifle, you know you have one-player trap, but the 1v1 down low goes in the way of Peg. And just where one domino falls, the soon after is another Raballo falls. 3v4. Dude, if Peg is feeling confident to slide shell into one-dimensional angles like that and still come out on top. Dirty. Yeah. So Space still playing Sniper's Nest. Just trying to see if anyone crosses over towards middle, but it doesn't make much of a difference. You've got a double stack of post-plant offensive players inside reactor and the generator building. Jing can get forward, just play a 1-for-1 angle. Peg on the flank. I mean, no, it's just all turning up aces for Wolves. This is the fall-in-your-face moment if you are Tribe, trying to play this reactionary to what Wolves are constantly throwing at you. They're trying to play this. No, it's get forward, just play a 1-for-1 angle. Peg on the flank. It's just all turning up ace. Sniper चला रहा था क्या? Peg on the flank. I mean, no. Jing can get forward, just play a 1-for-1 angle. Peg on the flank. I mean, Jing can get forward, just play a 1-for-1 angle. Peg on the flank. Utility, but not finding much with it. They're going to do this the old-fashioned way. Counter-offensive nades being tossed over towards middle. Keep your eye on number 4 yellow. He is deep in towards mid at the moment. Does he check this corner? No, not quite. So a bit of hesitancy here from Wolves have actually kind of given the lifeline back over to Tribe now 5v4. And they completely cleared the entirety of the site. However, being able to clear away that B lane meant that Rihan can hold that angle, take down Neon. 3v5 in a post-man situation, but you have to try to retake the site if you are Tribe. Crossfire for Wolves at the front doors at mid. It goes 2-for-1, make it 4-for-1. Are you kidding me? All it is an SMG crossfire. Tribe trying to hit it with numbers, and it comes up absolutely ineffective. 1v1. Rihan taking on Shing. And it's just Rihan's got no intel at all. Not a lot of time. And Shing is just going to sit here and say, defuse if you want to. I've got the sound fuse at my favor. That's the round that Tribe takes. That round shouldn't even been in a 1v1 in the first place. मेरे ख्याल से Even in a जितना post-plan डिफ्यूज करके छोड़ा situation, you had a 2-player advantage, and your decision was to one-dimensionally work your way through a narrow choke point into an SMG crossfire. Sure, why not? At least you got yourself on the board, still trailing by 4. अब पता चलेगा अटैकर मैप पे क्या डिफरेंस क्या पता ट्राइब जीतने लग जाएगी देख इसके बाद वही वाली नाइफ है जो I will say, just to kind of breed a little bit of confidence for the NA side of things in this conversation, we've said that Tribe sometimes plays one half of the map terribly, the other half great. Oh, good point. Not looking good here, though. Okay. First 3 kills quickly tallied by Wolves on this adjustment over towards the B defense, and the follow-up is perfect. It's just, you could tell there's just the coordinative level between these two teams is, there's a big gap between the two. Teams is, there's a big gap between the two.
So Atlanta on map point, and if there's one thing you have to always try to take away from this Wolves roster, we saw this yesterday in their Swiss matches. We've seen this periodically through the calendar year. Their retake potential is insane. They have no qualms giving you the bomb site for free and maneuvering through the map off of the slightest bit of information. Anyway, sure. Through all the hay bales. Wolves, this is the we're better than you strategy. We're just going to run. Zion and Peg will trade each other out, so that'll be now 4v4, but the map vastly in the hands of the Wolves defense. Tribe are pinned up and bunkered down in front of the B site. They will commit Raballo to get the plant. Wolves will allow this to happen, but there will be a lot of second guessing in terms of will this defense try to wrap around the back. Responsible for that is Space. Everyone else focused on mid or the front. King will make first contact. Sees the player still standing on top of the bomb site. King point hit this time as of yet. That will be enough for Zai to say, okay, I know where I need to go. Let me get there. Trying to find Raballo over the heady. Nasty shot from King. Good help as well from Zai. Here comes the full collapse. Any kills for Tribe to be found anywhere? I mean, at this point, they're completely broken down. Last player left is going to be number 4 in S-Thug, and he can only do so much. It is a literal beatdown. 7-1. Wolves through so many different rounds. All throughout map number 2. Wolves were throwing the same thing. Rush towards A, it wasn't stopped. Nades were not adjusted to try to counteract that A push from happening. And by the time that you almost felt like Wolves got bored with it, they started maneuvering their way through the middle of the map and down over towards B. They only lost a single round on their offensive half. It's hard to find the words for it. I mean, it is a stark difference. And the understanding around Wolf Search and Destroy we knew was going to be good. Yeah. But I will say, like, in terms of options for Tribe, this was probably the best Search and Destroy map they could have put in, considering that Slums was taken out from under them in the veto process. But this was the worry that we had in Seattle. This was the worry that we kind of had when Tribe was playing up against LG at the end of the group stage in Season 4. Their Search and Destroy was just not holding a candle to the teams that had done the work, done the research, and kind of diversified their map pool in a big way. So the weaknesses of Tribe really coming through. And now somehow, some way, you and I have to try to find a way to talk about a Tribe reverse sweep to beat a little bit of Hopium in towards the NA side. But after the breakdown of map 1 and then an absolute slaughter here in the second, I just don't know how even you get to 5. You can take down Wolves on map 1 Tunisia with that kind of gameplay. Even before I retap my tank of Hopium, which I'm currently hiding underneath this wonderful desk. You don't know me. But M5 legit लग्जरी कार है, तुम समझ रहे हो ना, जैसे GTR है वो प्रॉपर सुपर है, स्पोर्ट्स में और सुपर कार में, मतलब उसका डिजाइन नहीं है सुपर कार, और लेकिन सोचो एक लग्जरी कार ने, एक सलून कार ने उसको पेंट किया। M5 बहुत फास्ट कार है यार, बहुत ज़्यादा। M5 ने हरा दिया। Wolves are a bunch of slayers, and I think that's terrifying when you think about standoff, because standoff in COD Mobile, when it comes down to a control map, is overtime for a handful of spawn traps. Very much so the case. It is one of those things, like, again, after day 1, going into day 1, is talking a lot about how Wolves is a very one-dimensional team. Last match, they only played Summon and Takeoff coming into this event, and Hardpoint. Firing range Tunisia was by far their best Search and Destroys. And then in Crossroads, or not Crossroads, but in Control, you know that they're going to veto Raid because they hate it. So you're going to have to, prep yourself up for one or the other depending on pick or poison type situations. And it doesn't seem to make much of a difference. I don't think Tribe set themselves up for a tremendous amount of success in the map pool, but at the same rate, I just don't know how you pick between those two controls if you're Tribe, figuring that is a map pool or a map free rather than you have to win if you want to have a chance in the series. I will say this much, taking a look at the player cams and at least turning around, taking a look at all the time on the stage. Some smiles coming through. Okay, so vibes are clearly there. They're not truly down mentally. And I think that's a very important step in the right direction to start the reverse sweep, just as I completely tap on my Hopium tank that we were talking about earlier. Still some gas left in that? Just, it's a little bit, but it's starting to run on E very, very quickly. So I think that if you are Tribe, you do have to come out and you cannot relent off the gas whatsoever. Once you start to find a handful of eliminations, you cannot afford to overextend. You have to maintain map control to keep Wolves in the spawn trap. Just for referencing,
Tribe are in spawn combination of point? Season 4 3-0 on this map mode combo, but 2 of their wins were versus Dice and Devious in the group stage. The other was a 3-0 versus Mayhem yesterday. So that's where we have to try to find some confidence here from Tribe. And it doesn't start well. Already you've got both players inside Grandma's trying to set up a bit of a spawn trap. Solo provides an exit over towards the backside of the A-bomb site, so maybe a chance for him to at least put some pressure onto Wolves and maybe find a way to get onto B early, but Zai follows right back up and no Tribe member will touch his own. Had at least player over towards the statue tank and got themselves closer towards a hotel, but just as soon as you have any semblance of a map control offensively for Tribe, Wolves just step forward, shut it down. Tribe, however, able to work their way from their spawn. Have a couple players past Delhi trying to get back hotel once more. Good night भैया कल भी इस टाइम डाउन हो गया था 14.23 30 seconds on the clock. They have to find हम लोग भी ये वाला मैच देख के खत्म ही कर रहे हैं मोस्ट ओनली ट्राइब हार रहा है उसके बाद वुल्स जीत जाएंगे और खत्म है आज का सीन फिर कल को होगा सेमीफाइनल्स और फाइनल्स कॉर्डल वर्सेस लुमिनोसिटी और मोस्ट प्रोबब्ली वुल्स वर्सेस Q9 And you can see exactly what happens when you try to, you know, be the Persians in the Battle of Thermopylae reference. You don't want to go into a choke point. Deep reference. Yeah, very deep. Very historically fast. Good night भैया कल भी इस टाइम डाउन हो गया था. Bye bye इमेजिनर. तो Q9 वर्सेस वुल्स होगा और लुमिनोसिटी वर्सेस गॉर्डन तो कल आएगा मजा और उसके बाद फाइनल में होगा गॉर्डन वर्सेस वुल्स और फाइनल होगी अपनी जीतने वाली गॉर्डन ये मेरी प्रेडिक्शंस है ठीक है लेट्स सी कल क्या होगा 1v14 winnable? Well, no, not quite. Okay. And that's about as convincing as you'd expect. And here's the thing about it when it comes down to standoff. You start off on defense, a huge advantage in the operator costs if you do rounds like that. Yeah. If you're on your next offense, which Peg's already earned his, you would imagine with his 10 kills that Neon's not too far behind, and then Zai would be right after that. So you've got a lot of opportunity here if you're Wolves to get early operator usage. A chance to have an advantage over one of the two zones, and Tribe have just completely neglected the right side of the map here defensively. They're so focused on the A break-off that now Wolves have not one, not two, but 3 members deep over towards B. The only Wolves वाले तो पकड़ के मार रहे हैं इनको. आवाज कहाँ गई? And well, it's not where you want to be trying to reaggress from. Raballo shut down, and Wolves will get the first stick of progress on the B site. That is not exactly what you want to see whatsoever. If you are Tribe expecting for the push to come over towards A from the middle of the map, over by Delhi, not going to be happening. They try to push over towards the tractor. They're able to get that first segment over at B. But Control is just a fickle monster that always comes down to the opening breakoffs. And once you know it, Wolves, both defense and offensive like, have one set opening breakoff. Peg there for the equalizer. Just completely putting them in the dirt. 21 plays up against 13. And the clock has stopped the entire time that these kills keep coming through. So it makes matters worse here for Tribe's defense. They have called in a couple of operators, but you can kind of tell by Estug, he's not 100% sure where the hit's even coming from here for Wolves. I mean, that's just a bunch of Sparrow shots that get thrown into the abyss. While Wolves are, almost going to be able to lock down the A zone, just a fraction of a segment away, but regain comes through. Raballo making a little bit more punishment happen with the War Machine out, and a bit of regain here for Tribe defensively. All right, War Machine now invested for Raballo, trying to keep them at bay. Look, 9v14 with just under 50 seconds left. This round could be convertible. Able to at least find one on the Shing. The push is being stuck over by the tractor. One player has something inside an L. It's going to be Peg. Finds a kill, gets away with his life, but the trades are going to be good. Time becomes a bit of an issue now all of a sudden for Wolves. 30 seconds on the clock. 10 going up against 7, but the biggest MVP being the clock overall. Jing able to sneak through. Statue tank side. Zai trying to go isolation should come through here for Tribe. Progress also not going to be fully locked as of yet. There it is. भैया मेरे को आपके लिए freelance करनी है. I am a graphic designer. I will send you work samples. TLS give me it. Fully clearing him out. If you give Wolves an extra 60 seconds here, that may be all they need to just play this as a TDM, and the Purifier gets shut down in the same breath. 3v2 situation. Please give mail ID. So 27 on the clock with that capture at B. Shut down on Raballo, who tried to find the exit. पहले ना अपना आर्टवर्क में भेजो थोड़ा सा काम जो डिस्कॉर्ड का आर्टवर्क है उसमें हर्षी चेक करेगी और फिर देख के बताएगी तुम्हें कि are you like up to the mark. मेरे को तो हमेशा चाहिए होते हैं जितने ज़्यादा उतने Wolves will take the offense with the eliminations and be one round away from 3-0 and Tribe.
I mean, you feel like that if you are taking a look at it from Tribe's Team to Bhai, please shout out them to I am your biggest fan Uncle Yaar. considering that you're still down in lives, but the quickness that it did get shut down is a Oh, little wow. coming into this one. Two operators into the back pockets for Tribe. Nothing on the board. The Annihilator's already popped for Zai, starting things off as hot as he came in towards this series. It is a damn near flawless opening once again for Wolves. And now you've got lanes locked down. You can start to move forward into this potential spot trap, especially with the Annihilator out. Oh my God! Headshot through the hay bale. Space will eventually shut it down, but I wouldn't even call it a silver lining. Shane with the Gravity Vortex gun also trying to get forward. He also gets put back to respawn, but it's a 6 life advantage and only 50 seconds for Tribe to work out a spawn with. It's not looking likely. 17 points up against 25 operators. Not even around the corner, already being invested by Solo, trying to work his way closer towards some of these objectives. You do have some semblance of control around Hotel inside the courtyard, trying to keep these players at bay. I mean, Space is trying to wait for the push that's coming through over by Square, but they are at least stopping the clock progression at A. Yeah, the equalizers will make sure there is no immediate follow-up here for Wolves. 3 life gap, second tick lock, third on the way. Wolves likely to concede this and set themselves up around the B zone. Maybe one chance to kind of take a peek, see if you can find some kills and recontest it, but instead, with Tribe trying to find an exit, Wolves will hold their ground. 17 plays 15. Minute 40 on the clock. Tribe trying to find a transition to B, but the long flank from Wolves will kind of keep them in place a little while longer. Good kills come through, and that brings at least an opportunity for Tribe to get through mid-map. Minute 26, very doable with lives just being about even. Walking the floor, they're over by Statue, going 1-for-1 is Zai, who's having himself a hell of a control, up to 19 eliminations, 21 for Peg. You can almost hear a pin drop. Gotta try to work your way closer towards this B control zone if you are Tribe, but most importantly, you have to clear all of Bakery. It's where's the bait and switch right there? It's just the solo shell comes in. Jing says thank you very much. S-Thug does turn things at least marginally back towards Tribe's favor. Able to use the Sparrow to some success, but a pushback again comes through. 7 plays 6. Ravallo, desperate in nature, gets the War Machine over towards the B zone. No defenders are on it though. So it does actually start to needle find Jing. That's inside the doorway, actually. You may not know it, but it was an impressive shot over the top. 5 plays 4. Here comes the potential hit for Tribe. Still kind of meandering outside the zone. And off respawn, Wolves are just picking apart no man's land. You gotta commit. Find a way to get out into the zone. 30 seconds on the clock. 2v3 was S-Thug gets one, but King able to put things to touch for out of reach. Now just down to S-Thug. He will be shut down and Wolves will clean things up. 3-0 the control. 3-0 the series. They make it to top 4. Unbelievable scenes. It almost felt like this was guaranteed to go to 4 maps. I thought we were going to see at least the Apocalypse, Alan, but you kind of lag, you get a little complacent on a Husky and a hard point. You find yourself being 3-0 here by Wolves. Even throughout the entirety of that control, you felt like that there was at least 2 different rounds that were winnable for Tribe. Respectfully, in that last attempt on offense, when you were starting to pull on different operators, you were calling out wonderfully that there was some very impressive kills being found by the War Machine, by a couple nades, absolutely, but at the point where Tribe had themselves operators a distinct advantage for positioning, it kind of goes back to how that Hussey and Hardpoint did end, where Wolves were actually running their operators as soon after as Tribe was popping them, so it became resource management 101. They just had to pop theirs to be able to call game. It's very surprising. And here's the thing, and this is going to be a lesson learned, I think, to everybody on both sides, whether win or loss, make it top 8 or not. When you deal with a single elimination bracket, you better come prepared. Yeah. Flat out. There's just no other way about it. You don't have that extra lifeline to try to finesse the map pool after you kind of see what you're doing versus what your opponents are doing. You have to do the homework. I want to buy Pokemon cards from you. So how can I buy? Please tell me. Brother, मैंने सोचा हुआ है कि मैं करूँगा तो इसलिए द फ्लीट स्टोर को फॉलो कर लेना. मैंने सोचा हुआ है कि जब भी फ्लीट स्टोर स्टार्ट करूँगा ना तो वही करूँगा मैं. मैं एक्चुअली रखने वाला हूँ एक दो बंदे रखूँगा मैं अपने अंदर. So they definitely had something up their sleeves and they used it perfectly here to shut down Tribe. Looking at these replays here from that map number 3, it felt like it was inevitable looking at the standoff, but again, that is just the discrepancy that you have when you're taking a look at the abundance of map sets that Wolf have at their disposal comparatively to Tribe. We still have a lot of question marks ever since the change that they had from Seattle. Wolves came more prepared than Tribe, to your point there, Alan. And I feel like Wolves made a massive statement with this, though, because
we saw the interview with Tribe. They knew they had a lot to live up to. You guys are saying that they, you know, Welcome to considering Camera Seattle, Domes, Harry everything Boss. that happened in Seattle. Harry OG. This was another decisive $3 3-0. Wolves are like, sign, even if $3 Tribe wants to sign. come back, they want to try and renew the dynasty. $3 Right sign now, तुझे it's मालूम है our ना? time. Yep. We're going to own this entire stage. You can see reflected in the stats up here. All the best, all the best, season. करोगे भाई McIntyre तोड़ के आओगे problem. तुम. They were, and I will say, like, again, after yesterday's मैं matches, I member know only Wolves stream came out of their करो groups Value 3-0, Bro, क्योंकि but ना I was hectic हो not गया particularly थोड़ा impressed in schedule. any सही बताऊँ form तो, with how honestly. they played their थोड़ा hard point in schedule hectic हो particular. गया है. Like, they had their Live map थोड़ी active selection होगी, इसलिए versus नहीं कर पा Kingfield रहा to play Summit, and they करूँगा still भाई. had to put together some heroics to Tension beat मत them लो. there. They had to pull off a 250-249 comeback against Kagendra, who flat out threw the game. मेरे And चीजें then they ना got बहुत beat सारी हो down by गई. Q9 on Apocalypse. So Recording, it's, streaming, one of those things ये that सब the चीजें ना थोड़ी individual ज़्यादा skill होगी. helped Wolves get एक through बार the थोड़ा hard सा points. chill होगा ना And I तो मैं think you've got खेलूंगा भी और potential करूंगा MVP भी. candidates here between हम लोगों ने Peg, कब से Shing, नहीं and खेला Zai. यार. Just the three of them at moments throughout the entirety of the weekend, they've been unbelievable. And I'm glad you said that too, because I was one that was called out in the interview before we तबीयत even started the कैसी match है as a बताओ. potential बहुत MVP better. candidate to Big time. begin with. बहुत We better. see that now, why that was even an option, but it's not just Zai. Like Big you're ass saying, there's thug और multiple Peggy options. का- Wolves are going to be a Peggy का तो team game that they're almost going to be बराबर keeping their eyes on here Almost सबका game बराबर है, बस throughout the वहाँ rest यहाँ of तक, tomorrow. But match number 4 being done means that is our 4th and final team into tomorrow, and one more team knocked out, which means one more Oh, that's interview good, with yeah. F Dot ready to go. F Dot, how are they feeling? प्रेशर बन जाता है ना कभी भी. होता है यार. All right, मैं खुद fantastic मेरा stuff so खुद में far. प्रेशर में दिमाग And खराब हो the जाता है. end to our second day, the first day of the big bracket. F Dot here on the floor in front of the bomb wall. We've got our friend over here, King from Wolves, and our buddy Zion, who's been doing a lot of work here with our international squads for the East. So, King, North America might be a little surprised to see their Tribe Gaming 3-0'd. You guys were dominant. Are you, or do you think your fans surprised? 对于 Tribe 他们来说，这一次被3-0，可能他们还有一点惊讶。那对于你们来说，你们有感到 पर 任何的 यार 惊喜吗？ जो प्रॉपर प्रो प्लेयर होते हैं खास करके इसके ऐसे ऐसे ही है कि कितना इंट्रोवर्ट है देख रहा हूँ आँख नहीं मिला पा रहा है इंटरव्यू में वो देखो आँख ही नहीं मिला पा रहा है इससे बात करते हुए 2 सेकंड का We कांटेक्ट actually नहीं saw होल्ड this कर पा रहा है coming. उससे. We are super confident कैमरे because की we तरफ have मुड़ जा been रहा है working एकदम से. super hard for the whole year, and this time coming back around, we are going to win the championship. I mean, it certainly looks like it. The play has paid off. Is there something specific about their game that has made them so dominant? 完全看得出来你们的努 मैं 力 तो 现 चाहता 在 हूँ 有，我们都有目共 Q9 睹。 versus 你们 Gordon हो 的 जाए 战术上面 और 有 Luminosity 什么样 versus 特别的方案，让你 बेस्ट हो 们 जाएगा 如此 क्योंकि 的 मुझे पता है गॉर्डन 强大 Q9 को तो हरा देगी और उसके बाद गॉर्डन वर्सेस 并没有什 Luminosity 么 हो 特 जाएगा 别的战术，就是我们全部选手加上教练，我们心一起 और अच्छी बात यह है कि we don't actually have any कायदे से ट्राइब special जो है strategies वो or पिछले साल की game. विनर है We are just playing उसको all हरा के आ गए together, बुल्स वाले all तो our सोचो players and our coaches, and when we're all together, we're powerful, we're unstoppable. And King, one last question. If, or rather when you win, what will be the most meaningful part of that win? 最后一个问题，当你赢 मेरे 了 हिसाब 一 से 切 चार 的 में 时 से 候， weakest 对于 team 你 है 来 Q9 说意义最重的地方是在于什么 सबसे 呢？ टफ टीम है Luminosity 我认 फिर 为 Wolves 赢下 और 这场比赛没有什么特 Gordon 别 का 的意 पंगा 义嘛，因为这都是在我们的意料之内。 There is nothing that is super meaningful to us because this was all expected. You got it. Cool, calm, collected. Well, as भाई we've की done, ब्रैगिंग you चल knocked रही him भाई out कह there. रहा भाई इंट्रोवर्ट नहीं Knock him है out here. भाई इंट्रोवर्ट है बट भाई ब्रैगर भी है I am here for that level of confidence. That was just, I mean, diamonds under pressure? Like, dang. It's probably a good thing that Dot was holding the mic. Otherwise, I felt like that King was probably going to drop it on the floor. Expensive. Yeah. Oh, yeah, no, absolutely. But it will look cool. It's really hard to put into words what happened today, flat out. I think overall, the biggest thing about it is हो गया the क्या West आपका slept on the East this year. I think there was a हमारे lot हिसाब of से तो हो this. गया नहीं LG is going to be a super हो team. गया है They're not going to शायद sweat anybody. matches. LATAM still has Inco. They were going to be like the big hope for LATAM to elevate above third. None of that's really come true to this point. The only hope really मैं now कल rests with लिली LG, स्ट्रीम the only करूँगा Western team left कल को around. 1 बजे Flat वीडियो out, आएगी लिली the West की got handled by 1 the बजे East 12 बजे all tournament long, and that did not stop today. 3 O's. All day. All day.
That's how dominant the top four were. We'll take a look back at the brackets. You can visually see what happened if you're just joining us. At least see those results. For how today went, it doesn't tell the full story. Oh हाँ, Luminosity versus Godlike है देख. Heading into tomorrow. भाई टॉप Luminosity देखा. Gaming, Godlike, पहला मैच ही Luminosity versus Gaming वो होगा. Guys टाइम पे आ जाना 9:30 बजे स्ट्रीम पे करेंगे ठीक है? एकदम टाइम पे आना कल को. No one had this. And if you did, honestly, at me on Twitter and show me the date that you created that file, because there is just simply no way that you even had Godlike, let alone inside your top 8, making it out of Swiss, let alone for Q9 versus Wolves, that we're going to have that not once but twice on the entire weekend. Nobody had this coming. This is going to be a really fun day tomorrow too. I think that bottom matchup between Q9 and Wolves is a story as old as time now at this point. Yeah, it is. They've played each other a ton, and we're going to have a million storylines to run through in terms of Wolves have historically dominated that matchup, but you got to keep in mind that they beat them on the Swiss stage, but that's after Q9 had established themselves as being China's best from when they played in Masters. So there's a bit of drama there. As much as the Eastern teams have focused on the West, you can't keep it outside of China for that semifinal. And then I think for LG, I don't have this fear fully, but you can't overlook Godlike and prepare for one of the two Chinese teams for an anticipated Grand Final. Because that Godlike team was polished today. I know they beat up on SPG, but if you were to put any of those teams we saw today against them on the other side, they would have had similar results, I think. They looked really, really good. Yeah, I think every single one of these teams needs to be going home, back to the hotel for now, or wherever they are, and hardcore voting. They need to know every single in and out of the teams they're going up against, have every little bit of information they could use to their advantage, because if they don't, we saw how the smallest things, whether it is your map picks and bans, not taking a team seriously enough, how quickly that can lead to your downfall. Look, there was a small asterisk yesterday while you were playing through Swiss. You never really knew who your next opponent was going to be, that you could maybe have a small glimpse of not being prepared. Sure. That was thrown out the window coming into towards today. You knew who your opponent was going to be. You only had one series to prep for. There was no excuses. It gets furthermore less excusable that if you show up tomorrow in top 4 for $1 million prize pool at COD Mobile World Champs 2023 and you are not prepared, what are you doing here? Final thoughts. I think that all 4 teams have a chance to win a championship tomorrow. Final thoughts, Robert? I agree. I agree with Alan, which is very rare to happen, but I absolutely agree. He is spitting fire today. I'm not going to disagree with any of that. It's been a phenomenal day of competition, but day 2 of our Call of Duty Mobile World Championship has come to a close, and our top 4 teams have been decided. Tomorrow will be the epic India. Hi, बार LAMMU Aisha और LAMMU Yoshi Boldo PLS. It is going to be so much fun, so exciting. You are not going to want to miss a single second of it, so make sure you are tuning in back here tomorrow to see what happens. As always, a huge thank you to Snapdragon Gaming, Samsung Galaxy, Monster Energy, DHL, and the U.S. Air Force for making this whole thing possible. And of course, thank you to everyone both here and at home for joining us to watch the competition. It is going to be fantastic. We'll see you tomorrow. Crazy vast. मजा आ गया भाई. गॉडल का मैच देख के ना मजा. गॉडल वाला मैच तो बहुत क्रेजी था भाई. चलो कद्दू कद्दूस और मैं कद्दू कद्दूस. इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है आपका? यार ब्रो मेरे को पता नहीं है एक्चुअली. मैं पैसे देता हूँ, मतलब पैसे का वो नहीं है, बट मैं मतलब बेसिकली पूरे घर के टाइप दे देता हूँ. महीने का जो भी खर्चा होता है एक बारी में. मैंने कभी चेक नहीं करा इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आता है, बट आता तगड़ा होगा. मतलब बहुत तगड़ा भी नहीं, बट आता तो होगा अच्छा खासा. मुझे इतना पता है कि कहीं पे पता नहीं यार, मतलब लेकिन विंटर्स में तो कम ही आएगा. फैन ऑन नहीं है, पंखे एसी कुछ नहीं चलता ना विंटर्स में, तो विंटर्स में तो आना ही नहीं चाहिए बिल. मैं तो कहता हूँ सरकार को बिल ही नहीं भेजने चाहिए विंटर्स. पीसी साले दुश्मन है तू मेरा. गॉडल फॉर द विन भाई. आई होप सच्ची में गॉडल जीते भाई, जेन्युइनली मजा आ जाएगा भाई. हाँ कल सब टाइम पे आ जाना, कल को मस्ती करेंगे साथ में.
लास्ट डे है कल। मेरे पापा MBBG में है, MPEB में। MPEB क्या होता है मतलब? भाई कभी पाकिस्तान आओगे प्लीज बताओ यार, जेन्युइनली बताओ। तो अभी तो कोई भी प्लान नहीं है ऐसा, क्योंकि मेरे को ना, मैं कैसे बताऊं यार, थोड़ा सा अभी के लिए आई एम नॉट अ ट्रैवलिंग पर्सन। मेरे को ना ट्रैवल करना ही उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैंने यार इंडिया ही नहीं देखा अभी तक, जेन्युइनली बताओ तो। और मैं दुबई भी गया तो किस्मत भी ऐसी, दुबई भी बहुत दौड़ भाग में गया, तो मैं दुबई भी नहीं देख पाया कुछ भी, ना मज़े करे। दुबई तो यार मेरा जेन्युइनली बहुत शिट था भाई, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया यार। अगली बार जाऊँगा थोड़ा आराम से जाऊँगा, प्लान करके जाऊँगा। बहुत ज़्यादा शिट हुआ, मेरी जितनी तबीयत अभी ख़राब है ना दुबई की वजह से। मेरी तबीयत पूरी ख़राब थी, मैं फिर भी सोचो बिना सोए चल रहा था 3 दिन। जो वीडियो शूट हुई है ना बिना सोए हुई है, मैं सोया ही नहीं हूँ। मेरी आवाज़ ख़त्म हो गई थी भाई दुबई में, जेन्युइनली मैं नहीं बता सकता तुम्हें भाई क्या क्या सीन हुए दुबई में। वो तो भाई वो GTR दिख गई, फिर वो गोल्डन वाली GTR दिख गई, फिर बुगाटी, ला फरारी, क्या नहीं देखा मैंने। तुम देखना भाई, व्लॉग आएगा ना जिस दिन वो शोरूम का, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा भाई, वहाँ क्या क्या था। वीडियो में तो कुछ नहीं दिखा है। ला फरारी तुम देख दोगे ना अंदर से कैसी लगती है, कपड़े फाड़ भाई, मजा आता है। नींद आ रही ना, देखो आ रही नींद। आंखें लाल हो रही क्या? नहीं जैसा तो नहीं है। आंखें तो तेरी कब लाल नहीं होती भाई इसकी, नशेड़ी लगता है बिल्कुल। बात है भाई। भैया कल लिलीविल की स्ट्रीम प्लीज, मैं ट्राई करूंगा ब्रदर, हो पाया तो। तबीयत ने साथ दिया तो करूंगा, क्योंकि हम लोगों को 9:30 बजे ये वाली तो करनी है फिनाले भाई। भाई वरना गॉडल कैसे जीतेगी हमारे बिना भाई, सीधी सी बात। तो वो तो करना ही पड़ेगा भैया। गॉडल जिता दो डांस प्लीज। अगर गॉडल कर को पूरा टूर्नामेंट जीत जाती है तो मैं और देव दोनों नाचेंगे। हाँ ठीक है, अगर गॉडल कल को टूर्नामेंट जीत जाती है तो मैं और देव दोनों नाचेंगे, मैंने अभी बोल दिया तुम्हें। गुड नाइट भैया, गुड नाइट सभी लोगों को, गुड नाइट सभी लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस स्ट्रीम, आई होप यू गाइस एंजॉयड। आ जाना कल को शाम को 9:30 बजे, बाकी 1 बजे वीडियो आ जाएगी। एंड जिसने भी अभी तक का भाई अपने हर एक दोस्त के साथ, जेन्युइनली हर एक दोस्त के साथ शेयर नहीं करी है ना, आज वाली वीडियो जाके शेयर करना, ठीक है सर। चलो गुड नाइट, कल को मिलते हैं फिनाले में सीधा, मतलब सेमीफिनाले और उसके बाद फिनाले। गुड नाइट, गुड नाइट। सो जाओ सारे, बहुत लेट हो गए, बहुत रात हो गई, रात के 2:30 बजे क्या कर रहे हो तुम लोग, सो जाओ कह रहा हूँ। Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.